We can see the cracker of a match starting soon. It is going to be Gukesh D versus Vidit Gujrathi. What an insane match planned. मतलब ये तो ओहो विदित ने कुछ लगाया है यार. मतलब आई थिंक वो पूजा करके क्या कर रहे हो नितिन भाई? तिलक लगाया है. हाँ तिलक लगाया ना. वेरी इंटरेस्टिंग. यूजुअली आई थिंक मतलब आई हैव नॉट सीन विदित विद अ तिलक बिफोर. आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग हियर, बट आई हैव नॉट सीन हिम like have one before, but okay, anyway, so interesting लगता है. पूजा वूजा करके आए हैं फुल फोकस के साथ. बहुत इंपॉर्टेंट गेम है दोनों के लिए चैट. इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. बहुत मजा आने वाले चैट, because we'll have Vidit with his first black pieces in the game and Gukesh with the second white pieces. And Gukesh और Vidit दोनों roughly 2-7 4-7 के आसपास खेल रहे हैं. And जो भी ये गेम जीतेगा, again chat, I know this has become commonplace by now, but जो भी ये जीतेगा will be the new India number one. And India number one से याद आया, if we can have the board quickly एक बार with my face, Ranjan bhai. I just want to show you one moment before the game starts. That is Erigaisi Arjun is the new India number one, because उन्होंने Yu Zhangju को चाइना जाके उन्हीं के कंट्री में हराया है. And he is now the India number one for a few hours at least. So congrats to Arjun, because उनके लिए तो पहली बार की achievement थी. So congrats to Arjun, great achievement there. And Anish also won his first game, by the way. जो Anish के fans वो सारे हैं chat में. He also had a खतरनाक अटैक किया उन्होंने आज. मतलब क्या ही अटैक किया है बिशप h6 के साथ. And he also won the game. So congrats to Arjun bhai. And we go back to now the Prague Masters, the crazy match. And we are going to have two interesting pairings. One is Gukesh against Vidit. ये मैच मतलब एपिक होने वाला है चैट. एपिक मतलब एपिक जो फील आने वाली है मैं बोल नहीं सकता भाई चैट. एंड उसके अलावा we are also going to have Pragg against it is Rapport. So Pragg yesterday had a stunning, an insane blunder, to be honest. Not one which you expect, but time pressure tha. He lost in a slightly back and forth game. And today he plays Rapport with the white pieces. बहुत interesting जगह देखने के लिए क्या वो comeback कर पाते हैं. Maybe he's also fighting for India number one. Chat इस time पे literally 5 लोग fight कर रहे हैं उस spot के लिए. It's going to be amazing. But आज का star game, there is no doubt about it. Two Indians clashing. देखो प्लेयर खुद तालियां बजा रहे हैं उस मैच के लिए. It is with Gukesh जी against Vidit Gujrathi. And chat, honestly, इन दोनों का मैच कैंडिडेट्स में भी होना है. एंड यहां पे जो रिजल्ट आएगा ना चैट, ओके, आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग. ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक अ बोल्ड प्रेडिक्शन. जो रिजल्ट यहां पे आएगा ना वही रिजल्ट इनकी गेम का with white pieces से आने वाला है when Gukesh has the white pieces. I am going to make a bold prediction here. Ranjan bhai, what do you think? Is that just random guessing or is there some truth to it? मैं अभी एडिटर को फोन लगा रहा हूँ भाई ये क्लिप करके रखने के लिए, क्योंकि बाद में बेट मैं ही जीतूंगा आपसे. डन भाई, ये क्लिप कर दिया है. वैसे भी स्ट्रीम की स्टार्टिंग में ही है. दोनों प्लेयर्स देखो बिल्कुल फोकस. एंड चैट, हमने पता यही दोनों प्लेयर हमारे साथ बाद में साथ में मिलकर ओलंपियाड खेलेंगे. बट फिलहाल के लिए देयर आर प्योर राइवल्स. एंड मेरा भाई गला बैठा हुआ है तो मैं आज चिल्लाऊंगा नहीं. वीडी गुकेश, मैं धीरे धीरे बात करूंगा बट तभी एनर्जी कम नहीं होगी. एंड द गेम हैज बिगन. लेट्स सी विदित मेडिटेट. एंड आई एम गोइंग टू काउंट अगेन जस्ट टू कंफर्म कि 40 सेकंड्स है कि नहीं. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Oh, change हो गया. Maybe I was wrong. Maybe there is no fixed number. I was wrong, chat. There is no fixed number. या फिर उन्होंने गुकेश से एक्स्ट्रा 5 सेकंड किया है मेडिटेट. एंड ही इज रेडी. He is calm and we have the game starting. So Vidit has completed his ritual and now he looks extremely focused. Gukesh also extremely focused. क्या लग होता है चैट, गेस करो. चैट सवाल आपके लिए. What do you E5 E5 आएगा. Even I think E5 आएगा. I don't think so, but although सोच रहे हैं that's a sign कि maybe कुछ और खेलने वाले हैं वो. नहीं, E5 खेला उन्होंने. चैट क्या लग रहा है आज? एक तो तुमने पोल तो कर ही दिया है, बट पोल ने मुझे तुम्हारा इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं दिख रहा है. इंडिविजुअली बताओ चैट, हु डू यू थिंक विल विन दिस गेम? विल इट बी गुकेश with the white pieces, the guy who won yesterday?
Will it be VD, who was better in 2 games, couldn't convert, and he although has the black pieces? Will it be a dull draw? Who knows? Chat, what is your prediction? जल्दी से predict करके बताओ chat में. एक का नाम बताओ. Let's see कौन क्या बोलता है. Knight to F3 on the board. E5 pawn पे attack. Knight C6, no Petrov today from on the board here. Knight C6 normal. Let's see Italian खेलते हैं कि Spanish या Scotch. Who knows? निरंजन भाई सवाल आपके लिए एंड चैट तुम्हारे लिए भी. मुझे क्या लगता है Niranjan bhai, would you, let's say, play Italian here and then switch to, Rai Lopez in the candidates? I don't think so, right? I think you will play the same opening here and the same opening there. You might change the variation, but you will play the same opening in both tournaments. What do you think? No भाई, सेम का बिजनेस हमारे नहीं है. हमारा हर दिन नया कपड़ा पहनते हैं हम, तो हर दिन नया ओपनिंग. हर दिन नया कपड़ा पहनते हो? ओ माय गॉड, आलिया भट्ट की फैमिली को बिलोंग करते हो क्या आप भाई? पता नहीं था आलिया भट्ट आपकी रिश्तेदार है. भाई कभी मीटअप करा दो यार निरंजन भाई. ऐसे कभी मैंने कुछ ऐसे उल्टा सीधा आपको बोला हो तो भाई वो मजाक कर रहा था यार. प्लीज मिलवा दो यार आलिया भट्ट से. मिलाओगे क्या? हम सब एक ही परिवार के हैं भाई. आप भी हमारे परिवार पे हैं. हम सब मनुष्य हैं. भाई ये कौन सी साइफाई एलियन सीरीज देख के आ रहे हो भाई? ये आई डोंट नो कौन सी साइफाई एलियन सीरीज देख के आ रहे हैं निरंजन भाई. बट इन्होंने वो एल्मनैक वाली, वो स्कूल की डायरी वाली, वी आर ऑल ब्रदर्स सिस्टर्स वाला उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया. By the way, we have knight to f6 on the board. एको का देख लेना निरंजन भाई. अर्जुन अब इंडिया नंबर 1 है चैट. He won today and he has crossed Vishy Anand and Gukesh to be India number 1. बट उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के 3 प्लेयर 2750 प्लस हैं. वी हैव 3 प्लेयर्स अबव द रेटिंग ऑफ 2750. चैट स्ट्रीम लाइक करते चलो. वी आर ऑल सेट. D3 ऑन द बोर्ड. नो तो पता नो शर्लिन वर्लिन ओपनिंग्स भाई. मैं उसका नाम, द ओपनिंग विच मस्ट नॉट बी नेम्ड. Oh, bishop c5 on the board. I think we'll castle soon. No, no, there's no way they go for the draw. There is no way they go for the draw. अगर ये कैंडिडेट्स की तैयारी नहीं कर रहे होते, it could have happened, but otherwise no. Come on, come on, come on. And by the way, एक लुक नजर मारते हैं प्रग की ओपनिंग के ऊपर भी. वहां क्या चल रहा है? एंड वहां पे किंग्स इंग्लैंड खेला है रैपोर्ट ने. निरंजन भाई, how rare is playing Kings Indian at the top level nowadays? I don't remember seeing it. Yeah, it's I think a very ambitious approach. So this shows that very ambitious. We all know Pragg is ambitious, but we have really not, seen this at the top level. And यहाँ पे H3 खेला उन्होंने. H3 काफी interesting choice. एंड रैपोर्ट थोड़ा सोचते हुए रैपोर्ट जाने जाते हैं अपने इंटरेस्टिंग ओपनिंग के लिए. काफी आउट ऑफ द बीट ओपनिंग खेल के भी ओपोनेंट को हराते हैं. बट प्रग के सामने काम करेगा पता नहीं. यो करण भाई क्या हालचाल? बिल्कुल प्रणाली को भी कभी बुलाऊंगा. मंदर जी कैसे हैं? नथिंग विल हैपन टिक्कू भाई. अरे लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन टुडे. आज मुझे लग रहा है कि मतलब इंडिया नंबर 1 2 3 4 5 सब बदलने वाले हैं. बड़ा मजा आने वाला है. और वर्ल्ड के टॉप 10 का हम ऑर्डर आज हिलाने वाले हैं पूरा. एंड बिल्कुल सही कहा आई थिंक मिस्टर सॉइस ने कि लंदन सिस्टम वन येस्टरडे. प्रग हार गए कल लंदन सिस्टम के अगेंस्ट. जो भी लोग लंदन पे हेट करते हैं, कृपया करके शीशे में जाके शक्ल देखें और अपनी रेटिंग देखें और लंदन खेलना स्टार्ट करें भाई. आई रिकमेंड इट. एंड लेट्स गो टू द गेम ऑफ गुकेश अगेंस्ट विदित. ऑल्सो वैशाली गेम. आई थिंक एक हमारे से गलती हुई, हमने उतना फोकस नहीं किया. And Vaishali lost 2 games. So today we'll also have a look at her game. She's playing someone who's slightly weaker. So आज पूरी उम्मीद है कि Vaishali will also win her game today. We'll keep an eye on this. So far, so good. So going to the game of Gukesh. All set. Bishop C के castles खेला है. निरंजन भाई, मुझे लग रहा है कि आज ना मतलब it's going to be a very interesting game at least. गुकेश और विदित के बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जानता है. बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मतलब ना हमें देखने को मिलेगा कि इट्स नॉट ऑल गुडी गुडी. मतलब कहीं ना कहीं ये राइवलरीज जो है ना इंडियन प्लेयर्स के बीच हमें नहीं देखने को मिलती. दे हैंग आउट टुगेदर, इट्स ऑल गुड. बट समटाइम्स ना प्लेइंग अगेंस्ट अ फ्रेंड और somebody you know is tougher than playing against somebody you don't know. What do you think, Niranjan bhai? हाँ भाई, this is like a test before the main test. So I agree with you कि हमें थोड़ा इनका rivalry का flavor पता चलेगा कि whether they both are like really taking it solid or one player wants to be a little more ambitious than usual. So yes, with this game we will definitely get to see many things.
या कैन वी हैव द स्टैंडिंग्स एक बार रेंज भाई, वुड लव टू शो द स्टैंडिंग्स एंड एक बार, एंड अगर पेयरिंग भी आ जाए एक बार तो दोनों पेयरिंग तो ऐसे पता ही है, स्टैंडिंग्स अगर एक बार आ जाए तो बढ़िया रहेगा. वी कैन सी विदित देयर सिटिंग फुली फोकस्ड. मैन दिस इज गोइंग टू बी एन इंटेंस गेम चैट. आई डोंट नो, बहुत मजा आने वाला है आज. मैं बहुत, मेरी आवाज बहुत धीरे है, वो डीप आवाज आ रही है आज, मेरी टिपिकल मैनली वॉइस, यू नो. द पॉइंट इज कि मेरा गला खराब है. इट माइट लुक लाइक आई एम प्रेटेंडिंग टू बी, यू नो, सम अल्फा मेल, बट इट्स जस्ट माय थ्रोट बीइंग बैड. लेट्स गो भाई. तो फिलहाल के लिए गुकेश फुली फोकस्ड. कोई टाइम उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब बिल्कुल इंक्रीमेंट से टाइम गेन किया है. विदित इज द वन सो फार टेकिंग सम टाइम इन द फर्स्ट 5 मूव्स. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. मैग्नस क्यों नहीं खेल रहा? मैग्नस यार उसका कोई इंसेंटिव नहीं खेलने का. एंड दोस आर द स्टैंडिंग्स चैट. यू कैन सी परहम देयर विद 2 wins by the way, playing some spectacular chess. Gukesh in tied second place. So today if he wins against Vidit, he might be in first place. Vidit लेकिन उनके बिल्कुल ही पीछे 4th place पे on 1 point, and Pragg also on 1 point. So it will be very very interesting to see कि अब कौन leaderboard पे रहता है. And going back to the game, we are all set. Today's party from Pragg. अरे बिल्कुल बिल्कुल. आज तक कैंडिडेट्स में लंदन सिस्टम यूज करके जीता है. अरे वर्ल्ड चैंपियनशिप लंदन यूज किया था यार. डू यू रिमेंबर चैट? किसने यूज किया था? रिमेंबर? आई थिंक डिंग लिरन यूज द लंदन सिस्टम टू विन इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, जहां तक मुझे याद है. निजम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एग्जैक्टली. एको का ध्यान. थैंक यू मिस्टर साइलेंट एसएस. आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड बी हैप्पी कि आप चैट में है साइलेंट असैसिन जी. मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ भाई, मैं गंदे काम नहीं करता, प्लीज मुझसे दूर रहे. अब सब कुछ I am imagining a day when an Indian defending his world championship against another Indian. That would be crazy. But honestly, पता है वो तब आएगा जब Indians are dominating everything. वो स्टेज अभी आया नहीं है. So I would say play an Indian playing against somebody from, you know, abroad who's not an Indian would probably even have a higher hype than 2 Indians playing. Of course, you would love to get there कि 2 Indians हो, but फिलहाल के लिए important है अभी जीतना. अभी अगर जीत जाए ना तो जो मजा आएगा, उफ भाई, फील आने वाली है. डांसिंग वीडियो आई हैव नॉट सीन इट यार. ये क्या वीडियो है जो मुझे, मतलब मेरे से परे है ये वीडियो? विदित और विशी की डांसिंग वीडियो. आर दे मून वॉकिंग? वुड लव टू सी विशी मून वॉक यार. दैट वुड बी अ क्रेजी विशी लर्निंग टू मून वॉक. हे प्रबोध भाई, क्या हालचाल? थोड़ा एको हो रहा है आवाज में. निंज भाई प्लीज चेक. बाय द वे फिलहाल विदित, अब सोचते हो मैंने यार, विदित याद है निंज भाई, यू सेड नो कि विदित मतलब काफी कह रहे थे कि आई एम द मोस्ट वेल प्रिपेयर्ड इन दिस टूर्नामेंट. आई थिंक किसी ने, आपने कहा था, किसी ने बताया था मुझे. इफ दैट इज द केस तो 5वें मूव में इतना डीप थॉट, apparently that's not true then. Maybe he's trying to remember some lines. कई बार चैट क्या होता है ना, ये टॉप प्लेयर्स को अपनी खुद की गेम भी याद करनी पड़ती है पुरानी, कि हमारे ओपोनेंट ने मेरी कौन सी गेम देखी होगी जिसको देख के वो बोलते प्रिपेयर करके आया है और इंप्रूवमेंट लेके आया है. सो इट्स नॉट ओनली योर ओपनिंग प्रेप एंड योर, यू नो, opponent's opening prep, also what you played in the past you have to sometimes remember. So it's a very very difficult job being a top chess player man. इतना आसान नहीं है. क्रेड वालों को बोलो मूनवॉक भी हो जाएगा. अरे क्रेड वालों को बोले क्या? अरे बोलते हैं भाई, बुलाते हैं भाई. सुना है क्रेड वाला यार लॉस में चल रहा है. लेकिन बोटे से साथ विशी भाई का फोटो देखा क्या? अरे देखा मैंने यार. शी सेड कि इट लुक्स लाइक विशी इज हेल्ड हॉस्टेज. She's very genuine, no, like very as in nice expressions. Oh, by the way, D6 played, very interesting choice, and I assume we will not see Bishop G4 soon. I hope not, at least. मुझे वो ट्रैप याद आ रहा है निरंजन भाई, वो बार बार ना, वो कौन सा था वो, क्या बोलते हैं, लीगल्स में बोलते हैं इसको, when the bishop is on C4, bishop G4 and then you capture, you know, you capture on E5. ओके, लीगल्स में बोलते हैं ना उसको, उस ट्रैप को. हाँ भाई, करेक्ट. हाँ, ही सेड इन मजाक मस्ती. अच्छा अच्छा. भाई में विदित पूरा एंगल से देखते हुए ऊपर स्क्रीन की तरफ, ऐसा लग रहा है कोई पिक्चर देख रहे हैं सिनेमा हॉल में. पीछे से हमारे नोदिरबेक चलते हुए, वो भी मतलब फाइट कर रहे हैं लीड में पहुंचने के लिए टूर्नामेंट की. विशी भाई, मैंने विशी भाई बोला क्या? बहुत गलती हो गई यार, आई अपोलोजाइज यार. मेरा गला खराब है आज, मेरे शब्दों पे आधा कंट्रोल मेरा है नहीं. तो कुछ गलत निकल जाए तो कृपया करके हमें माफ करना. गोइंग टू द गेम ऑफ Pragg now.
ओ सो प्रग में कुछ क्रेजी हो रहा है भाई. E4 H3 castles bishop E3 and after knight C6 D5 attacks the knight goes to E5 and now F4. so chat तुम देखो ब्लैक कितना प्रोवोकेट कर रहा है व्हाइट को. ठीक है, पहले खेला नाइट C6, भाई धक्का दो, धक्का दिया, अब नाइट E5, भाई धक्का दो, धक्का दिया, और अब घर जाके बैठ गए. सो ब्लैक ने बेसिकली he could have legit played knight D7 in one move. तुम समझ रहे हो? Black could have played this move literally directly, but he's like, white को दो एक्स्ट्रा मूव देनी है. ये होती है किंग्स इंडियन भाई. किंग्स इंडियन इज एक्सट्रीमली ट्रिकी एंड अब वो इस सेंटर को चैलेंज करेंगे विद C6. At some point, E5 might happen on the board. You'll try to control some dark squares. You're trying to ask white to overextend when he's not basically developed. King भी center में है. He's at least 1, 2, 3 moves away from castling. And now Pragg plays knight to E2. And yeah, it's going to be very, very sharp. आई विल बीट विश एंड विदित इन फ्यूचर. कह रहे हैं प्रभु त्रिपाठी जी. प्रभु जी यार देखो, सिंपल सी बात है यार, वी ऑल वांट टू बी वेरी स्ट्रांग, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है. बट आई विश यू द बेस्ट भाई. आई होप समडे यू बिकम दैट स्ट्रांग. स्टैंडिंग्स ऑफ इंडियंस नंबर 2 पे है अभी. आई थिंक इट इज गुकेश एंड नोदरबेक टाइड है नंबर 2 पे. सो दैट्स द बेस्ट स्टैंडिंग फॉर इंडियन प्लेयर्स. आई डिफीटेड आनंद इन 1998 वर्ल्ड चैंपियनशिप. मिस्टर कारपोव जी कह रहे हैं, हेलो कारपोव जी, आपका नाम लेकिन इस लिस्ट में नहीं है अभी जो हमें स्टैंडिंग्स दिख रही हैं. सो फिलहाल के लिए हम फोकस करेंगे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके ऊपर. बट ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू कारपोव जी. गोइंग टू द गेम. ओके, रैपोर्ट जी बहुत सोचते हुए डीप सोच में. लेट्स गो बैक टू द गेम ऑफ विदित अगेंस्ट गुकेश. फुल एक्साइटेड. एंड गुकेश का टाइम आ चुका है अब डीप थिंक के लिए. Pragg knows how to beat the Kings Indian. I know man. Pragg ने बहुत प्लेयर्स को हराया है किंग्स इंडियन के अगेंस्ट. सूर्या यादव भाई, सूर्या जी हमारे क्रिकेटर चैट में है क्या? सूर्या जी, when are you going to have India number 1 today? We already have a new India number 1 today. We already have one. That's the crazy part. पहले क्या होता था? पहले हमें टूर्नामेंट खेलना पड़ता था to have a new India number 1. अब उसकी भी जरूरत नहीं है. Because Shenzhen Masters में Arjun won his first game. He won that game, gained 3.5 points, crossed Gukesh, crossed Vichy, and now is India number 1. So बस भाई क्या करें. सो आजकल हम स्ट्रीम भी नहीं करते तब भी इंडिया नाम चेंज हो जाता है. सो आज के दिन में 2 बार चेंज हो सकता है वो. इफ एनी वन ऑफ देम विंस, विदित विंस, गुकेश विंस, आई थिंक इवन इफ प्रग विंस, व्हाटएवर, इंडिया नाम फिर चेंज होगा. इफ अर्जुन विंस टुमारो मॉर्निंग, फिर चेंज होगा. फिर कल ये शाम को जीतेंगे, फिर चेंज होगा. फिर परसों सुबह वो जीतेगा, फिर चेंज होगा. तो ये जो निरंजन भाई आपका जो काम है ट्वीट करने का, ये लगता है बहुत बढ़ने वाला है निरंजन भाई, नहीं? भाई बढ़ने वाला है भाई साहब क्या ही दिन आ गया भाई. आई थिंक C6 H3. आई थिंक यू मीन फॉर, do you mean like bishop C6? So usually this looks very strong and it can be played. This is a strategy to play, like you kind of play for structure against double bishops. But Gukesh को जानते हुए ना, Gukesh as a player को जानते हुए, he is the kind of guy who loves dynamism. Maybe I'm wrong, correct me if I'm wrong, Nitin bhai, but usually he loves dynamism. मतलब ऐसा ना, मतलब crazy game खेलने का उनको पसंद है. So he's not the guy who might play here. I might be wrong, proven wrong, but मेरा कैसे वो कुछ normal खेलेंगे, like C3, H3, something like this he will play. Let's see क्या होता है. He's thinking right now, having a very deep think. Indian as a joke. Yeah, it's not a joke title. What are you talking about, Mr. FR, FR, FR? It's not for real, man. You can't be serious. Imagine तुमने पूरी लाइफ लॉन्ग काम किया है एज अ चेस प्लेयर, ठीक है, एंड देन यू बिकम इंडिया नंबर 1. तो एज अ इंडिविजुअल प्लेयर इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट. ऑफ कोर्स हम लोगों के लिए इट्स लाइक भाई आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, तरसों ये हो गया. बट फ्रॉम अर्जुन पर्सपेक्टिव, इमेजिन हाउ गुड इट मस्ट फील राइट नाउ टू बी अहेड ऑफ विशी आनंद. जब विशी आनंद वर्ल्ड चैंपियन थे, अर्जुन बेचारा मतलब लिटरली उस टाइम पे छोटा बच्चा होगा यार, मतलब स्कूल भी आता था, पता नहीं. By the way, he plays the move knight to C3. Interesting choice. Going for something very, very solid, nothing fancy. And from Black's perspective, I think castling आने वाली है बहुत जल्दी. मेरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या है, इसका क्या मतलब है भाई?
आप जीएम कब बनोगे? बहुत जल्दी भाई, अभी अभी बस निकल रहा हूँ बनने के लिए। अभी क्या बुलाइए, अभी निकल रहा हूँ जीएम बनने के लिए भाई, अभी बस। भाई तो वो, इज दैट एन आर्बिटर? कौन है वो रेंज में बीच में बिल्कुल ऐसे खड़े हैं? आर्बिटर है क्या वो रेंज में लामी आप? एरविन है, ग्रैंड मास्टर। अच्छा, अरविंद लामी है ना? बट हु इज अरविंद लामी ट्रैवलिंग विद? बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग, नो? और इज ही प्लेइंग इन द He चैलेंजर्स? may be probably there as a player. Ah, he's playing the challenges. I forgot. Yeah, he's playing in challenges. Yeah, he's playing the challenges. Exactly. Chat क्या लग रहा है यार? Okay, Gukesh definitely has some cold. I saw him taking out a handkerchief there, so he's probably not feeling that well. निरंजन भाई, कई बार आपका opponent अगर बीमार हो, so do you feel like कि अरे यार बीमार है, like you feel kind of sympathy, or you are like कि अरे बढ़िया, अब तो थोड़ा हल्का सा आसान रहेगा जीतना? What do you feel अंदर से मैंने निरंजन भाई? दोनों ट्राई किया है भाई, मैंने दोनों फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है और मैं कंक्लूजन पे भी पहुंच गया हूं। हाँ, क्या है कंक्लूजन? मत सोचो। अच्छा, सोचो ही मत, मतलब सोचो ही मत। सोच के ही बोल रहा हूँ कि मत सोचो। अच्छा, बढ़िया। चैट कमॉन भाई, सबके लोग जो चैट में सभी हाई लिखो भाई, कमॉन सबके सब। गुकेश उठ के कहाँ चला गया भाई? विदित भाई पूरे ऐसे कॉफी मतलब से पीजिए भाई, धार्मिक कॉफी होके बैठे हैं यार, कॉफी मस्त। कॉफी। भाई कॉफी 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 क्या कर रहे हैं भाई? रेलवे स्टेशन की याद आ गई मुझे। भाई विदित भाई सिटी सीट सीधा बैठते हैं। नाउ ही इज हैविंग वाटर, कैमरा की तरफ नजर दी उन्होंने एक। भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। आप कमेंट्स मत पढ़ो, बस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो कि हाँ, ऐसा कौन सा इंडियन प्लेयर है जो लगातार 9 गेम्स जीत चुके हैं टॉप 10 में। अच्छा तो इन 5 में से जो अभी है टॉप 5 विशी, विदित, टॉप 10 ले लो, गुकेश, इंडिया के टॉप 10 ले लो। उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो 9 गेम्स लगातार जीते आ रहे हैं। ओह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 9 गेम लगातार एक ही टूर्नामेंट में? नहीं नहीं, एक ही टूर्नामेंट में खेलते खेलते आगे अभी 9 गेम्स जीते हैं। यार गुकेश होगा। आठ तो वो ओलंपियाड में ही जीता था लगातार, तो उससे पहले एक जीत गया होगा कहीं ना कहीं पे। तो गुकेश। रॉन्ग आंसर। क्या बात कर रहे हो चैट? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द आंसर हियर? गुकेश ही होगा यार, 8 जीता, उससे पहले जीता होगा यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो प्लेयर है, उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। अर्जुन? पूरा नाम बताओ। एरिगेसी अर्जुन, अर्जुन एरिगेसी। करेक्ट आंसर। आप जीते तो हैं भाई शाउट अर्जुन आउट। समझ। थैंक्स भाई। भाई बढ़िया है भाई, स्ट्रीमर को ही शाउट आउट मिल रहा है भाई, बढ़िया भाई, थैंक यू रंजन भाई। भैया चैट रुकिए क्यों है मेरे यहाँ पे यार? मेरी चैट बड़ी नहीं रही, मैं तभी अच्छा कह रहा हूँ चैट तुम कुछ हाई लिखो। आई कांट सी द चैट ओनली। मैं तभी कह रहा हूँ यार चैट आगे बढ़ी नहीं रही, मैंने रिफ्रेश किया तो चैट बढ़ी। भाई यार यूट्यूब भाई तुम मजे ले रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ यार चैट कितने क्वेश्चन मिस कर दिए यार, अरे यार शिट। सॉरी चैट, यूट्यूब की गलती, यूट्यूब की बहुत ग्लिच कर रहा है आजकल, पता नहीं क्यों, है ना? हाँ भाई। आई आई डेंट इवन रियलाइज अर्जुन इज इंडियन। क्या बात कर रहे हो नंदू जी? अर्जुन नाम हमसे इंडियन नहीं समझ में आया आपको? आपने सुना नाम अर्जुन और आपके दिमाग में ये नहीं आया कि वो इंडियन है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हाउ इज इट पॉसिबल? लोग आउट ऑफ ऑल नेम्स अर्जुन का आप लॉजिक नहीं लगा पाए। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा इंडिया नंबर 1 कह रहे हो? ओ इंडिया नहीं, अच्छा वो हार्ट के पीछे छुपा हुआ था यार, सॉरी। हाँ भाई, ही जस्ट बिकेम इंडियन नंबर टुडे भाई, आज ही बने वो इंडियन नंबर 1। लेकिन कितने घंटे तक रिकॉर्ड रहेगा वो पता नहीं है, इट माइट गेट ब्रोकन जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स और अ फ्यू आवर्स। भाई चैट फिर रुक गई यार, अरे ये क्या, मेरे फोन पे चैट ही नहीं चल रही। ये अलग ही सिस्टम है भाई। यूट्यूब बाबा जी, हमसे कोई अगर गलतियां हो गई हो तो हमें माफ कर दे। आज के बाद हम थाई दाई वैन को कभी भी नहीं बोलेंगे, और विंसेंट केमर को कभी नहीं बोलेंगे कि आप टाइम पे कम क्यों हार रहे हो। प्लीज, हमसे गलती हो गई तो प्लीज के के माफ कर दे हमें। हमारी चैट चलवा दे, हमें चैट पढ़नी है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? अर्जुन के 10 नाम है, ये क्या बात है भाई? 10 कहां से हो गए? मेरे को तो एक ही पता है। अनीश इज एन इंडियन, दिल से है इंडियन भाई, दिल से, फ्रॉम हार्ट ही इंडियन। सी, इंग्लिश एपिक। चैट गायब क्यों हो रही है बीच में ब्रो? भाई तुम्हारी भी हो रही है क्या? अरे भाई वी आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम देन।
वीडी भाई चल नहीं रहे. वीडी भाई सोच क्या रहे? आई डू यू थिंक चैट वीडी इज फीलिंग द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट गुकेश की इंडियन है? Because last two games में he was blitzing out moves as if मतलब पनवेल निकलना था, बस बाहर वेट कर रही है. And today he's playing it so slow. Literally he's used like 12 minutes already in 5 moves and it's opening theory so far. Do you think Vidit, and ऐसा भी नहीं कि कोई crazy line खेल दी हो मतलब गुकेश ने, काफी normal moves है so far. Do you think Vidit is feeling extra pressure because गुकेश है, कोई Indian player है सामने? What do you think chat? अगर ऐसा है तो गुकेश और प्रग की टीम्स का ध्यान नोटिस कर रही होंगी. दे माइट यूज दिस इन द कैंडिडेट्स. यहां पे एवरीबडी हैज देयर ओन क्लब भाई. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रेजी. माइंड गेम्स खेल रहे हैं गुजराती जी. मुझे लग नहीं रहा है ये माइंड गेम्स. आई थिंक ही इज जेन्युइनली थिंकिंग. आई डोंट थिंक ये कोई ऑस्कर लेवल एक्टिंग चल रही है, उनको पता है और ही इज थिंकिंग. यहाँ पे कोई ऐसा क्रेजी लाइन नहीं है ना. कोई ऐसी क्रेजी लाइन तो नहीं लग रही मुझे इस पोजीशन में कि कोई गैम्बिट शैम्बिट ब्लैक की तरफ से. आई डोंट थिंक सो. बर्लिन में क्या करें आप? बर्लिन में हो तो भाई जाके कोई ग्रेट वॉल शॉल देखो यार, घूमो फिरो, ट्राई. वो खाने का डिश होता है, क्या बोलते हैं उसको भाई, बड़ा अच्छा होता है. प्रेट्जेल खाओ भाई, वहां पे बर्लिन में हो तो बड़ा टेस्टी है. स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों नहीं बनते भाई? यार पता है मेरे को चैट पढ़ने की आदत है, तो मैं वहां पे भी स्टैंड अप कॉमेडी करते करते भी भाई पूछने लगूंगा, भाई तुम क्या कह रहे हो, हाँ तुम क्या कह रहे हो भाई, क्या 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 भाई, तो वो होगा नहीं भाई. आई नीड द चैट टू रिस्पॉन्ड. वीडियो में क्या प्रॉब्ली सेकंड मैच अगेंस्ट गुकेश. I am curious, yeah, Ranjan bhai, when have they played together before, and what was the result between Vidit and Gukesh? Do we have this statistic? Would be interesting to see if that we know this. हाँ प्लीज चेक एंड एको का ख्याल करना भाई. प्रग का गेम देखो भाई, प्रग का भी एक नजर मारते हैं क्या चल रहा है. इवन दो आज क्रेजी गेम वही होगी. हमने 9T2 तक देखा था, C6 एंड नाउ 9G3. यूजुअली कई बार यहाँ पे G4 भी वाइट फेंकता है, दैट्स आल्सो अ पॉसिबिलिटी, सारे पॉन्स. बट प्रग वाज अ बिट प्रैग्मेटिक, प्लेड नाइट G3 एंड या आई थिंक बिशप E2 नेक्स्ट आएगा. फिर उनको चूज करना है कैसलिंग का. मोस्ट लाइकली आई थिंक ही विल गो टू द किंग साइड. सो पूरा सेंटर प्रग के पास है, बट ब्लैक ने खेला है किंग्स इंडियन. वी कैन नॉट ट्रस्ट द इंजन्स. जैसी ब्लैक किंग्स इंडियन खेलता है ना, इंजन को उठाओ, लात मारो बाहर. सो ये गेम हमें देखनी पड़ेगी एज टाइम प्रोग्रेसेस कैसी चलती है. गुड न्यूज ये है कि रैपोर्ट भाई बहुत सोच रहे हैं. जिनकी खुद की ओपनिंग थी तो थी ऑलरेडी आउट ऑफ बुक, एंड प्रग मतलब बढ़िया फॉर्म में, प्रेप में लग रहे हैं. गोइंग टू द गेम ऑफ विदित गुजराती गुकेश, एंड हियर फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग विदित प्लेज द मूव कैसलिंग, सबसे लॉजिकल मूव. एंड यहां पे व्हाइट को देखना है कि क्या करना है. विल ही ट्राई टू पिन द नाइट, जैसा हमें देखा था प्रग ने खेला था अगेंस्ट केमर. Will he try to play knight a4, win the bishop? Will he try to play h3 to block bishop b4? Will he play rook e1? Will he play bishop e3? Will he play I don't know what? इतने सारे options, बहुत confusion waiting for Gukesh to choose this. उस टाइम व्हाइट कौन था वे उस गेम में? So Vidit and Gukesh have only played one classical game, as निरंजन भाई ने कंफर्म किया है, और चैट में भी लोगों ने बोला है, श्रेष्ठ ने other people have said this. They have only played one game in the Tata Steel tournament, and that was a draw where Gukesh was white. So same colors थे उनके पास. So उनकी second game ही है. That's very very interesting, because you would expect कि भाई ये लोग तो इंडिया के ही हैं, तो आपस में खूब खेले होंगे, नहीं निरंजन भाई? But they've actually just played once. So बहुत interesting रहने वाला है. How do they tackle this new rivalry which is building up? जैन में एक बार खेला, अब मार्च में खेल रहे हैं, अप्रैल में 2 बार खेलना है. सो एक नई राइवलरी बनते हुए यहाँ गुकेश और विदित की. आई थिंक इन्होंने साथ में इसलिए नहीं खेला है बिकॉज एज ग्रुप्स डिफरेंट है. सो दैट माइट बी द रीजन. बट गुकेश एंड प्रग फॉर एग्जांपल मस्ट हैव प्लेड लॉट ऑफ गेम्स. और लेकिन ये ब्लिट्ज और रैपिड में खेले हैं विदित और हाँ 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 हाँ. वैशाली का गेम बिल्कुल देखेंगे. नेजो भाई एको का ध्यान रखना. वैशाली's game seems to be going decent for finally today. She had 2 losses, heartbreaking losses, but right now I can see she has the bishop pair. She has a decent center. कोई center में disadvantage नहीं है. King is extremely safe, so I do think he will kick this knight away at some point with C3, play bishop E3, queen D2, maybe F4 at some point. ये bishop के पास कोई rival नहीं है,
and Vaishali is definitely better. Plus, she's way up on the clock. So, आज Vaishali के जीतने के chances पूरे हैं. Looking really good for Vaishali here. Going back to the game of Pragg now. उनके भाई की गेम देखते हैं. Nothing has happened yet. So, Rapport भाई अपनी ही opening पे confuse हो गए. That's quite, इंटरेस्टिंग बोलना बंद करो टिक्कू भाई कि ट्रॉमा. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि रैपोर्ट भाई खुद की ओपनिंग में ही कंफ्यूज हो गए. यूजुअली व्हेन यू ब्रिंग आउट अ न्यू ओपनिंग, ओपोनेंट को सोचना पड़ता है. एंड दिस जस्ट शोज यू हाउ वेल प्रिपेयर्ड प्रग इज. परसों भी उन्होंने कहा कि उनका पूरा बिशप एफसी तक पता नहीं 25वीं मूव तक प्रिपरेशन थी, और आज भी इवन दो ब्लैक ने कोई ऑफ द बीट ओपनिंग खेली, तब भी जो एक्चुअल बंदा कंफ्यूज हुआ वो है रैपोर्ट जी. तो ये काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है यहाँ पे. आई डू थिंक कि फिलहाल के लिए लुकिंग एट द टाइम सिचुएशन प्रग इज इन द ड्राइवर सीट, बट वी डू नो कि भाई ये रैपोर्ट, नमेद्यारोव और डूडा इंडियन प्लेयर्स के अगेंस्ट पता नहीं ये डबल 2x पे खेलने लगते हैं. सो वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग. एंड प्रग ऑल्सो कमिंग आफ्टर अ लॉस विल नॉट बी इजी. सो गोइंग बैक टू द गेम ऑफ विदित अगेंस्ट, ये क्या हो गया भाई, विदित अगेंस्ट नोदिर्बेक गेम पे चलते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या कुछ खेला है गुकेश ने. गुकेश की कैमरा में अगर हम जाएं, विदित नाउ नॉट एट द बोर्ड. सो अगर निरंजन भाई आपको याद हो, अभी अभी यहां से उठ के गए थे गुकेश जब विदित की मूव थी, एंड नाउ विदित गेटिंग अप. आई विल सी इफ दे डू इट फॉर द फ्यूचर मूव्स एज वेल. यार इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए. यो में भाई यार जूस तो मुझे भी बहुत पीने का मन है यार, बहुत पीने का मन है यार. बहुत टाइम हो गया ऑरेंज जूस पिए हुए. क्या बोलते हो चैट, मंगा लें आज? Vishali is a GM, बिल्कुल. She is the only the third player ever from India to have a GM title among female players. So, I mean, she's also a legend. Yeah, I mean, and कई बार क्या होता है ना, female players get less opportunities because उनकी category में कोई Carlson नहीं खेल रहा. There's less exposure. So, but she's such a great player, man. I mean, she would be one of the favorites to win the candidates, even though I think Humpy is the top seed among female players, but in the women's candidates that is. But yeah, I mean, she would be a clear dark horse to win that tournament. And kya pata bhai, you know, Vaishali wins that one, Pragg wins that one. दोनों world champion घर में ही है. Ninja bhai, wouldn't that be crazy if open section, women's section, दोनों world champion एक ही country के नहीं है, एक ही state के नहीं है, एक ही city के नहीं है, एक ही घर में है. हाँ, वो बहुत मजा होगा भाई. This will be epic. कभी उनको कोई करना होगा ना इवेंट, ओपन वर्ल्ड चैंपियंस, वुमेन वर्ल्ड चैंपियन, घर पे ही कर लिया करेंगे. ये बढ़िया रहेगा भाई. लॉट्स ऑफ कॉस्ट सेविंग. बाप रे, लिटरली कोई फ्रेंडली मैच भी चल रहा है भाई, ओपन वर्ल्ड चैंपियंस वुमेन वर्ल्ड चैंपियन हो जाएगा भाई. क्रेजी यार, दैट वुड बी इनसेन. शी कैन प्ले ओपन, व्हाई शी सिंपली, ऐसा नहीं है मतलब, इट्स नॉट ऑलवेज दैट वे यार. वो कई बार अपने हाथ में होता भी नहीं है. इट्स जस्ट we need more female players to play, man. We need more and more female players to come in. उससे competition बढ़ेगा and on average लोगों की rating बढ़ेगी. It's as simple as that. कैसे हो कुसुम जी, कैसे हैं आप? टिको भाई क्या हालचाल? बढ़िया हो रहा भाई. कैसे आपने आर अपने नाम में कैपिटल क्यों नहीं करा यार? नाउंस का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, स्कूल ने मुझे पढ़ाया गया था. तो आर को कैप्स कर दे भाई प्लीज. Chinese women काफी strong है चेस में. I agree. China, Russia, US, these are 3 competitors, including Uzbekistan plus Azerbaijan. काफी strong countries है. हमें सबको बैटल करना पड़ेगा. ओलंपियाड में बड़ा मजा आएगा भाई. विद ऑनर गेम में देखते गुकेश देखते हैं गुकेश क्या खेलते हैं. वाओ टिक्कू, ये क्या है भाई? क्या हिकारू को जूसर क्यों कहते हैं भाई? हिकारू को जूसर कहते हैं क्या? हिकारू अपने प्यादे को जूसर बोलते हैं ना शायद. रंजन भाई, हाँ भाई, पॉन को जूसर खेलते हैं. हाँ वही ना, अपने पॉन को बोलते हैं. हाँ, हिकारू खुद जूसर नहीं है भाई, अपने प्यादे को वो जूसर बुलाते हैं. तो मारेंगे तो बोलते हैं हाँ, दैट्स अ जूसर. हाँ, वो आई थिंक एसक्यूसी से उन्होंने पिकअप किया था वो टर्मिनोलॉजी, जहां तक मुझे पता है. विदित भाई कुर्सी पे आके बैठ चुके हैं. गुकेश काफी डीप थॉट में. गुकेश भी अब बिल्कुल सीरियसली दोनों प्लेयर्स गेम को लेते हुए कोई भी हल्की सी भी गलती करने को तैयार नहीं है. Bro, do you know the match where you get defeated in a simul against Vidit and Anish? Yes, bilkul. I played that match. I think that was
That took place in July 2022, if I'm not mistaken. यूएसए तो मैंने बोला, बिल्कुल बोला यार भाई. आई कैन हियर माई सेल्फ निरंजन भाई. ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. चैट क्या लग रहा है यार? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लोग खेल रहे हैं, बहुत जल्दी टाइम प्रेशर में गेम जाने वाली है. सो दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ गेम जहां पे वील हैव अ रिजल्ट. ऐसे ये दोनों लोग ब्लंडर करेंगे बहुत बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर में. सो लेट्स सी क्या होता है. आई एम ऑल एक्साइटेड फॉर दिस गेम. एंड ये इससे पता लगेगा एक्चुअली यार कि कौन कैंडिडेट्स में जीतने वाला है. दैट्स माय प्रेडिक्शन. हूसोएवर विंस दिस गेम will win the game with the same colors in the candidates, and because you win that game you are likely to get at least a draw in the other one as well. So yeah, ये game बहुत बहुत important है. तू एनएन कैसे बना? बस भाई थोड़े चाचा जी मेरे विधायक थे भाई यूएस चेस फेडरेशन में. 2200 रेटिंग करनी पड़ती है भाई यूएससीएफ रेटिंग. अनीश नायक को कल साहिर सर ने काफी बार हराया भाई. यार रात की बात है, तुम रात को रहने दो भाई. अनीश नायक को तो रात में कोई भी आके हरा के चला जाता है यार. Yeah, I mean, this is why, you know what? But when my throat is not in perfect shape, I feel like, Spider-Man without my, like web. I feel like Superman without the power of flying or shooting lasers. I don't know why that is. मेरा गला थोड़ा सा खराब होता है, मेरे को ऐसे फील होता है मैं सुपर हीरो विदाउट माय पावर्स हूँ भाई. ऐसे हेल्पलेस फील होता है मुझे. कभी ऐसे फील होता है आपको रंजन भाई कि आपके पास सुपर पावर है बट आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे उसका? हाँ भाई, हर बार पावर ऑन ही रहना नेसेसरी नहीं है. तो इस बार हम थोड़ा चैट से भी बात कर सकते हैं. चैट को बोलते हैं कि क्या सोच रहे हैं, मुंह लिखो, फिर वो मुंह को साइलेंटली बोर्ड पे लगाओ और बताओ कि आप क्या खेलते हैं. ऐसे हम साइलेंट चीज भी कर सकते हैं. चैट बात सही है, साइलेंट चीज कर सकते हो. तो ऐसा करो, तुम लोग कमेंट्री करो, अपन सोता है भाई. हाँ, चांस दो भाई. चैट में कमेंट्री दो कि अभी कैसलिंग किया है, इसका आइडिया क्या है, आप सब बताओ. और टिकू भाई बताएंगे भाई कि क्या आपका सोच सही है या गलत. भाई वो चैट से पूछेंगे क्या कि वाइट वांट्स टू कैसल बिकॉज द किंग वांट्स टू रन अवे फ्रॉम द क्वीन. लड़ाई करके तंग हो चुका है किंग एंड दैट्स व्हाई ही इज रनिंग अवे. बट कोई उसको ना कोई हम चैट पे होगा. एक हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाई डज व्हाइट वांट्स टू कैस व्हाई डज द व्हाइट किंग वांट टू कैसल? रॉन्ग आंसर्स ओनली. हाँ भाई, चलो भाई, लेट्स गो चैट. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सो why do the kings hurry in castling in a chess game usually? Why is castling so important? Wrong answers only. Let's go chat. Let's see. That's a good question. मेरे पास आंसर है. मुझे पता है आपके पास है भाई. पूछा है तो आंसर तो होगा पक्का. साहिल साइलेंटली आस्किंग फॉर लीव. हाँ भाई, नॉर्मल जॉब में लोग लीव एप्लीकेशन बॉस को ईमेल करते हैं और यहाँ पे हम पब्लिकली लाइव स्ट्रीम पे बोलते हैं. टू गेट अवे फ्रॉम क्वीन. वो तो मैंने यूज कर लिया यार. दैट इज गॉन. बिशप C6 यार, इट्स पॉसिबल बट अगेन मतलब मैंने कहा ना, गुकेश के स्टाइल की मूव नहीं है. इट्स नॉट द काइंड ऑफ मूव गुकेश यूजुअली प्लेस. मे बी ही विल गो फॉर दिस. पॉसिबल तो है. इट्स नॉट अ बैड मूव बट नॉट गुकेश यार, नॉट गुकेश. टू गेट अ G1 स्क्वायर. नाइस नाइस. मेरे किंग की एक टांग नकली है. बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर है. एपिक 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 भाई. दैट वाज एपिक. पता है वेलकम टीवी पे लिटरली 2 दिन पहले चल रही थी, तो आई वाज लाइक वाचिंग अ फ्यू सीन्स. आई थिंक ऐसे कुछ खाना खाते खाते. मस्त था भाई. आज ड्रॉ होगा? नहीं नहीं भाई, अनलाइकली अनलाइकली. आई हैव टू बी ऑनेस्ट मैन, बिकॉज देखो ना, ड्रॉ एक चीज है कि पूरा उन्होंने खेला, नोबडी मेड अ मिस्टेक, बट दैट्स वन थिंग. बट लुकिंग एट द टाइम दे आर टेकिंग हियर, आई डू फील कि गेम के एंड में बहुत ब्लंडर्स होंगे यहाँ पे. दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंड अगेंस्ट प्राग एंड मकसूदलू. लास्ट में इतने ब्लंडर हो रहे थे कि एवरी गेम मूव द इवैल्यूएशन वाज चेंजिंग. सो आई थिंक यहाँ पे भी वही होगा. एंड बोथ दीज प्लेयर्स आर रियली गोइंग टू फॉल द टाइम प्रेशर. एंड आई होप लाइक कुछ शार्प गेम देखने को मिले. King's dad is going to get milk. अच्छा. Vidit is yawning. Really? Did he yawn? Did Vidit yawn, Ranjan bhai? I didn't see that. मैंने भी नहीं देखा
ओके, अब नजर ध्यान रखना वीडी पे नजर भाई, इज ही यॉर्निंग? क्या वो उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो यॉन करें और गुकेश को ऐसे दिखाएं कि भाई मैं थोड़ा नींद में हूं, मैं थका हुआ हूं, मुझे अटैक करो, मुझे अटैक करो? इज दैट द स्ट्रैटेजी? टेल मी योर ट्रू ओपिनियन ऑन अर्जुन एरिगेसी. भाई खतरनाक प्लेयर है, ही इज बीन रियली अनलकी ओवर द लास्ट ईयर. आई मीन इन चारों, ऑनेस्टली ऑल दीज फोर प्लेयर्स, लाइक जो तीन हैं ऑलरेडी एंड अर्जुन, डिजर्व टू बी इन द कैंडिडेट्स. अर्जुन वाज जस्ट रियली अनलकी आई थिंक. जैसे गुकेश को वो लास्ट में लकी ब्रेक मिला ना चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स, वहां पे अर्जुन मिस्ड आउट. इट वाज अ बिट मोर डिफिकल्ट फॉर हिम. सो या, ही वाज रियली अनलकी एंड फाइनली ही इज इंडिया नंबर 1 नाउ. So he's fighting back, and yeah, this is the power of never giving up. And by the way, रुको, Knight A4 इंजन की फर्स्ट प्रेफरेंस खेलते हुए हमारे गुकेश, he's trying to get the bishop pair. अभी भी अगर समय रहना कहते हैं बिशप पेयर इंपॉर्टेंट नहीं, तो भाई ये चाल को देखें, इस चाल की नजाकत को देखें. इतना साइड में घोड़ा वो क्यों खेलेंगे? नाइट ऑन द रिम इज डिम, सिर्फ और सिर्फ बिशप पेयर पाने के लिए. बिशप पेयर पाने के लिए अपने कई बार घोड़े को भी त्यागना पड़ता है, और वही कर रहे हैं गुकेश जी. बिशप जाएगा B6 पे, वो इमीडिएटली मार देंगे उसको, एंड देन ही विल प्ले दिस गेम. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. Nihal is next. Nihal is next. Of course, Nihal, SL. We have, I think, Nihal, SL और तीन थे ना? I think 2700 पे. There's one more, no? Who else was there? SL, Nihal, and Hari Krishna. These three are around 2700 right now. So ये तीनों का भी we would love to see them join in. I mean, it will be epic. अभी तीन player has 2750 plus chat, by the way. For the Niranjan bhai, isn't this the first time in history that we have three players above the rating of 2750? I'm not sure कि शशि किरण और हरि कृष्णा का क्या रेंज होगा. साथ में रहे तीनों 2750 प्लस? I don't think so. Yeah, less likely. I think Shasi Kiran has not crossed 2750. No, I don't think so. Yeah, this I'm Please not check. sure. Please check. Please check his highest rating on ratings.fidi and let me know, because Hari Krishna and Vishy sir were together at I think 277 something at one point. So they two were together there, but this might be a new record. We'll have to check, and I'll confirm you chat pretty soon. Vidit will beat Ding to become world champion. भाई वही तो हम चाहते हैं कि इंडियन वर्ल्ड चैंपियन बने. आपको अच्छा कौन सा इंडियन प्लेयर लगता है? सारे अच्छे हैं भाई, सारे चंगे सी. I will super chat 10K if you manage a live stream without mentioning समय. यार देखो, द प्रॉब्लम इज, एक तो हमारे समय स्ट्रीमर जी हैं जो हमारे मतलब के गुरु हैं यहाँ पे, और एक समय है जो ये क्लॉक है. सो दोनों समय को अवॉइड करना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो एक ना एक का नाम तो आएगा ही भाई. यो टिक्कू भाई, भाई कैसे हैं बलराज भाई? आपका असली नाम क्या है भाई? बता ही दो आज बस, कब तक मैं बालानर बुलाऊंगा. इंडियन चेस सीन में हरि कृष्णा जी का रेटिंग हाईएस्ट कितना? 2770. क्या बात कर रहे हो? रियली? And when was this? Can you just compare on ratings of Friday, like Hari Krishna versus Vishy, and you will get to know. Against Hari Krishna at least you can compare and see. साथ में था कि अलग टाइम पे था? Compare. If Arjun Agassi would have won against Hikaru in the Grand Swiss finals, he would have won the Grand Swiss. Yeah, मैंने कहा ना, Grand Swiss से लेके अपना World Rapid में भी शायद he had a chance, of Blitz में एक में he had a chance, in Chennai GM he had a chance everywhere. Like, well, he was so close. World Cup maybe he lost to Prague, and then Prague qualified, so he was very very close, and he was completely winning at one point. याद है वो queening था यहाँ पे? He was queening with the A pawn, फिर Pragg ने वो कोई move के ली थी, and he queened his own pawn, and then Arjun lost. Crazy endgame थी वो. फेवरेट टू विन द. अरे चैट फिर रुक गई यार. ये चैट आज यूट्यूब ग्लिच कर रहा है यार. आई कांट सी द चैट मूव ऑन माय फोन, तो तभी मैं पीछे के मैसेज पढ़ता रहता हूँ. गुकेश सिग्नेचर मूव, पॉन मूव आने वाला है. लेट्स सी. फिडे हैज रिवाइज्ड न्यू FII रूल्स. FII क्या है भाई? Do you think India is trying to become new chess epicenter of the world after Russia? Absolutely, yes. I don't think they're trying to become the epicenter, just trying to, make chess popular, get more and more talent. मतलब हमारे पास इतने GM हैं अब, मतलब we can legit मतलब just destroy every मतलब पूरा the entire the chess world, or destroy मतलब on the board भाई. Hari secondary choosing after Vishy doing yeah, Hari I remember. I think he even crossed Vishy in the live ratings by like 1 point or something during a brief moment in time. But Shasi Kiran ka, I was not aware he is crossed 2770. That's news to me. Amazing news, by the way.
कर दिया कैपिटल, ये हुई ना बात। हेलो एसएस भाई, कैसे हैं आप भाई? $100 यूपीआई नहीं आए भाई? मजाक कर रहा हूं भाई, प्लीज अब बोलना नहीं भाई, वो सेंटी मत करना मुझे भाई अब। चैट, वी आर ऑल सेट फॉर दिस क्रेजी मैच। देखो कितना प्रेशर है, कोई मूवी खेलने को तैयार नहीं है। हाँ, और हरिकृष्णा का तो तीनों थे उस टाइम पे, मतलब 277 समथिंग। शशि किरण, हाँ उनका देखो, उनका देखो। तो where is Nilamparthi nowadays? He is also gaining rating faster than I'm gaining white hairs on my head, man. He is doing amazing. Can Arjun Sahil Tikku, अभी ये क्या था भाई? What do you think are chances in this year's Olympiad? I would say हमारे chances जीतने के, Chad, I have a question actually. I'm happy कि somebody asked that question. So, do you think India are the favorites in the Olympiad right now? Because when I'm thinking about it, um, it feels like कि मतलब US की team stronger तो है on paper, but Wesley doesn't play that much. Dominguez doesn't play that much. Hikaru rarely plays. हमें पता भी नहीं है कि वो खेलेगा Olympiad, नहीं खेलेगा. He might not play. So in that scenario, Russia, we don't know if they will get to play or not. They did not play last time. China आएगी, but China में अभी कोई ऐसा crazy ding उनका खुद form में नहीं है. So looking at all of this, do you think we are like the favorites in the Olympiad? Not by much, but at least on paper, it feels like it. If we take the current ratings, it does feel like we might be the favorites. बिना चेस, हाँ तो वही तो कह रहा हूं ना, दैट मीन्स ही इज नॉट क्रॉस 275. दैट मीन्स इज द फर्स्ट टाइम इन चेस हिस्ट्री that we have 3 Indians above the rating of 2750. First time ever. And that's a great record, man. I remember Commonwealth and Asian Games. That was rapid, no? Nandu bhai, please correct me if I'm wrong. That was rapid, I think, जो अभी हुआ था recently. I might be wrong though. What's your rating? My rating is 2200, yaar. USA favorite, but they don't have teamwork. Exactly. They are like RCB. वो RCB की तरह है. By the way, 9 for Vishali game में कुछ हुआ, I think. Okay, she exchanged bishops again. Still better, yeah. Strong bishop against the knight. Yeah, knight has no good squares now. E3 pawn बहुत बढ़िया. Going back. रेटिंग बेस, अच्छा हाँ, रेटिंग बेस कल से होगा, ये कल से चेंज होगा. ईरान, आर्मेनिया, उज्बेक, रशियंस. रशियंस का पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे बिकॉज ऑफ द वॉर. दे डिड नॉट प्ले लास्ट टाइम, नो? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, भाई. दे डिड नॉट प्ले लास्ट ओलंपियाड, नो? सो इन दैट केस वी डोंट नो कि क्या रहेगा उसका. Ding is there. Will he come back? He will come back. His play will get better. Will he be back in time to his original level when he was world champion, even before the world, when he was defeating Carlsen before the pandemic? I don't know. Looks unlikely, honestly. Wei hai, I agree, Wei hai, but Wei also doesn't play that much. I have to stress so much on it कि जब प्रेशर आता है ना, when you are under pressure to perform for your country, the pressure you feel, उसका सबसे ज्यादा हैंडल करने का एक्सपीरियंस अभी इंडियन प्लेयर्स के पास होगा, because they are playing the candidates and they also have that pressure for a long time, like India number 1, ये वो. Yeah, China Russia didn't play exactly. Last Olympiad I think was won by ये Uzbekistan, right? Uzbekistan came first, Armenia was second, and India 2 came third. This was in the open section, right? This, and women's में I think we had kind of lost last में, like we were all set for gold and हमारा छूट गया था. Last एक बोर्ड से चेस नहीं जीती जाती तो अकेला डिंग क्या कर लेगा? नहीं, I think they do have a strong team. They have many strong players, but not enough to. I do think India is still the favorite, yeah. Wang Hao है उनका, that's he's also semi-retired. Wei Yi doesn't play that much. Ding Liren doesn't play that much. So Sare players. Yu Yangi is one in form. He's one guy who has played regularly. So I think he would be a good match. Baki तीनों player are part. It's very hard, man. Like मतलब एक 2200 के मुंह से part time player बोलते हुए world champion को, it sounds weird, I know. But compared to the other players,
they didn't get the opportunity to play because of the pandemic. They're just very unlucky. So that's why I think China on paper might not be the best team. They look very strong, but in practicality, they might not justify their ratings there. If they practice a lot till the Olympiad, then yes. But so far, हमने सिर्फ Ding को खेलते हुए देखा है, and even he has not played good chess. I mean, he had like 1 draw and 6 losses. Netherlands has only Anish Giri. We don't have any 2700 player apart from Anish. So, and Anish bhi आधा Indian ही है. So, I think Netherlands is not a threat. Regardless, Chad, let's have a look at all the 3 games. By the way, फिलहाल के लिए, okay, Vaishali is still fighting, has 99.2 accuracy, looks awesome. Going to the game of Pragg once. So look at this, by the way, knight e2, c6, and now knight g3 and knight e8. This is the power and the, also the controversial thing about the Kings Indian. सारे piece undeveloped करते रहते हो. Look at Rapport's last 4-5 moves, ठीक है? Knight c6 develop किया, got kicked, आगे आया, got kicked, वापस चला गया, यहाँ पे आया, पॉन से अटैक किया और वापस घर. सो किंग्स इंडियन काफी कई बार ना ऐसा लगता है कि भाई ये क्या ओपनिंग है या क्या है, कुछ समझ नहीं आता कई बार. सो आई एम रियली होपिंग, स्पेशली विद हाउ मच टाइम Rapport has used, I am really hoping Pragg has a miniature here. It is possible. At least he wins the game comfortably. I'm really hoping for that, although we cannot trust the bar. Let me reiterate, बार को उठा के बाहर फेंक दो, we cannot trust it. यहाँ पे I think priority होनी चाहिए castle करना, because the king is in the center. So bishop e2 blocking the e file looks like a very logical move. Also queen d2, I guess it's a very defending the bishop. Both these moves look interesting. Then let's castle quickly. That's very important. And if black were to take, then we can take with the c pawn, open the c file, and still maintain this huge center here. Yep, looks pretty decent for Pragg here. Going back to the game of Gukesh against Vidit, जहां पे Vidit ने खेला है knight to d4. Oh, that's a very interesting choice. So the idea is, यहाँ पे if knight c5, I think he wants knight b5 instead. Niji bhai, have you seen this before? What do you mean? Yeah, have you seen this pattern before? Like after knight a4, you play knight d4, takes and takes. ये ऐसे कभी देखा है अपने position दोनों pieces की? No, I don't remember seeing. है ना? It's not a common pattern here. And knight d4 खेला है. And just to check, so chess.com पे after knight a4, which is played in 27 games, 16 games went bishop b6 and 10 games went knight d4. So, and out of those 10 games, 4 games where white just took on d4. So that's interesting to see how this progresses. That might as well be a decent move. Or 4 moves में knight c5 happened. Let's see क्या होता है. So now if you look at the expressions, ये तो Pragg का camera. Can we have the camera Gukesh again? That kind of horrific for Ding. I agree, man. Ding must be like, really wondering ki, bhai, what went wrong. And by the way, again, we all love Ding. I really can't find anybody in the world who's like, yeah, Ding jitna chahiye. Like, we all want Ding to be happy, keep winning. He's such a nice person. Yeah, matlab, overall, he's not the controversial guy, but yeah, I mean, he's just in bad form. There's nothing we can do about it. Why not castle on queen side with Pragg? He can. It's not out of the picture, but because c file khul chuki hai, bishop already is on c3. So I'm a bit hesitant to do it. I wouldn't say it should be lost or anything. It is possible, but because ye khul chuka hai, already c file is opening up. Probably I would prefer king side here. I probably would prefer king side as of now. But let's see क्या होता है. Going back to the game of Vidit. प्रखर का पैकेज कितना है? प्रखर का पैकेज भाई ये कहां से आ गया? In Asian games, also China was strong both in team and team without Ding. Yeah, China is a strong team. I've never said they're not strong. I think I'm just comparing India and China there. On paper, thanks to the lack of experience, India should be slightly better because China का experience कम है. But as we have seen, experience का उतना फर्क नहीं पड़ता. Uzbekistan was a complete outsider in the last Olympiad, won it outright. Armenia भी किसी ने सोचा नहीं था. So ये तो सिर्फ हम पेपर पे, on paper बातें कर रहे हैं भाई.
एक्चुअल में क्या होगा वो किसी को नहीं पता। कहता नॉर्वे जीत जाए भाई, कार्लसन अकेला ही ड्रैग कर ले पूरी टीम को, 9 में 9, 10 में 11 में 11, 13 में 13 मार लिए। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। सो एज ऑफ नाउ सिर्फ ऑन पेपर हम बातें कर रहे हैं। ईरान की टीम स्ट्रांग है, बट दे डोंट हैव फिरूज जाना, सो दैट्स वन प्लेयर दे डेफिनेटली मिस। एंड फ्रांस के लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा, विल फिरूजा प्ले और नॉट, बिकॉज लास्ट टाइम वो शायद नहीं खेले थे। सो देखना पड़ेगा विल ही एक्चुअली प्ले द ओलंपियाड फॉर फ्रांस। अगर वो खेलते हैं तो फ्रांस की टीम भी काफी काफी स्ट्रांग हो जाएगी यार। फिर गुकेश फिर से कुछ जूस या समथिंग ही इज ड्रिंकिंग अगेन, एंड sorry, with that is, and Gukesh has taken the bishop on c5 and exclamation mark बोलता हुआ इंजन हमें बता रहा है गुड मूव है तो गुड मूव ही होगी भाई, नॉट वांट टू आर्ग्यू अगेंस्ट द इंजन हियर। भाई चेस बेस कितना लोड लेता है भाई, वो थोड़ी खोल पाएंगे, मेरा लैपटॉप क्रैश जाएगा यार। नाजुक लैपटॉप है मेरा यार, अनफॉर्चुनेट बहुत नाजुक है भाई। अभी मेरे साथ बात करो यार, बट आपका यूजर नेम कह रहा है कि आप तो चैट में हो ही नहीं। आई एम मिसिंग निहाल। यार निहाल, निहाल का पता है क्या है, निहाल इज जस्ट, I mean, he's the only guy who's among the youngsters who's not reached the top. Really waiting for him to kind of join the others soon. Really hoping for that. Hope that happens soon, yeah. Hope that happens soon. Bilkul. Especially because he's so good at, you know, rapid and blitz, like, and even bullet online. Like he can be also be the complete package. MVL to hai, but MVL is one guy. Imagine if Firuza joins, MVL joins, suddenly France is extremely strong, yeah. Possible lineup for Russian Olympiad if they do play, which I don't know what will happen or not. तो देखना पड़ेगा because Kramnik I think is retired. Karakin will not play, so we don't know. Yeah, it's speculation. We really don't know. Nepo तो होगा, of course. Nepo will be one player. नया लैपटॉप मैंने लाया नहीं अभी यार, लाना है मुझे. I'll get it soon. फिलहाल पुराना वाला चल रहा है. By the way, VD is now thinking. Has he played it? Yeah, he took on B5. He took on B5. And now Gukesh is time to think. आपकी तरह नाजुक है भाई, मैं तो नाजुक नहीं हूं यार, मैं तो बहुत टफ स्किन्ड हूं यार, हो भी सकता हूं, पता नहीं। ऑफ ऑल द इंडियन प्लेयर्स आई लाइक Nihal the most. Why is that though, Prashant bhai? Would love to know. Like, I know multiple reasons why, but would love to know your reason. Nepo Dubov Artimef. अरे भाई ये तो खतरनाक टीम लग रही है भाई। क्योंकि ये सारे प्लेयर एक्टिव है, तो ये सारी टीम खतरनाक लग रही है। ऑल्दो अनीश जस्ट डिफीटेड आर्टिमेव कन्विंसिंगली, बट ही इज आल्सो प्रीटी स्ट्रांग। लाइक वर्ल्ड ब्लिट्स में तो क्या ही खेलते हैं वो। टूटा हुआ, हाँ वो रिटर्न तो मतलब अभी बात चल रही है, इन प्रोसेस है भाई, चांसेस अच्छे हैं कि हो जाएगा, बात चल रही है अभी। इट्स विदित सो ड्रॉ, नहीं नहीं भाई, दिस वन माइट नॉट बी अ ड्रॉ, इट्स विदित अगेंस्ट गुकेश, एंड विदित के ब्लैक पीसेस है, गुकेश विल ट्राई फॉर द विन। यहाँ पे दोनों नाइट्स हैंगिंग है नाउ। आई थिंक White has to make a choice. Either he brings the knight back, that's one choice, but the knight on b3 is not a good piece because कोई square है नहीं. Second choice हो सकती है to play the pawn to a4 and attack black's knight. And surprisingly enough, इसके उसका अच्छा square है नहीं. The only square is knight d4, but then when I take and take, you have double pawns. And after knight b3, now this knight has a purpose. You might play c5, but you've actually kind of have this weird structure जो मैं कल को नाइट घुमा फिरा के I can get it to some light squares. So this is not exactly what black wanted in a perfect case. So ये एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन होगा ये मारने का नाइट डायरेक्टली एंड देन व्हाइट टेक्स. बट इस केस में प्रॉब्लम है कि ये वीकनेस, ये काइंड ऑफ वीकनेस एंड ये वीकनेस, so this is also not very convincing for black. So मुझे समझ में आ रहा है यार कि I think white should be slightly better in this opening. Like at least he can have a chance to put some pressure on Vidit, and Vidit के troubles अभी खत्म नहीं हुए हैं गेम में. आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? जीतने वाले को भाई, क्योंकि मैं कभी हारना नहीं चाहता. Nihal looked more promising than Pragg. I think दोनों promising थे, and you can have this debate for long, but Pragg ने जो effort डाला है वो दिख ही रहा है भाई. Like Pragg has risen like crazy. Nihal also won to close to 1 million last year in speed chess. यार 1 million थोड़ी था वो, 1 million was total prize fund, if I'm not mistaken. I think he won like a few 100,000, not 1 million. I might be wrong on this. नहीं नहीं भाई, इतना नहीं, 1 million जीता होता तो भाई फिर फिर तो से it would make sense to relax for a while. इंडियन और अबे यार भाई यार आज
फिर कुछ आगे पीछे मूव करते हुए थोड़े से एक्साइटेड लग रहे हैं अबाउट समथिंग इन द पोजीशन, आई डोंट नो. Pakistan has a GM now, by the way, chat. I don't know if you know, but Pakistan has a GM now. Sultan Khan को GM title दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से. So Pakistan officially has at least one grandmaster in their list. He's not well playing now, but yeah. Who do you support in IPL? I used to support RCB, भाई, but फिर मेरा थोड़ा सा common sense जाग गई. Yeah, I think it was 150, 200K, something like that. Yeah, not 1 million though. But it was a pretty huge price, though, I agree. ट्राउजर्स तो लग रहा है. ट्राउजर्स ट्राउजर्स क्या है भाई? यार विदित कितना पीता है यार, मतलब ये जो भी. अब व्हाट इज ही ड्रिंकिंग नाउ? कैन वी हैव लाइक फुल स्क्रीन? आई एम क्यूरियस, व्हाट इज ही ड्रिंकिंग? लाइक इट्स नॉट ऑरेंज जूस नाउ. व्हाट इज द व्हाइट पैकेट, निरंजन भाई? डू यू हैव एनी क्लू? नो आईडिया भाई, जूम करके देखता हूं, एक मिनट. हाँ करो. What I want to try is I want to get the same drink tomorrow. जो विदित पी रहा होगा ना, whatever he's drinking, I'll have it tomorrow. What is that now? Milk है क्या? I don't know what it is. But VD apparently has chosen to have a lot of, drink a lot during the game, which is not common actually, right? Because I remember Carlson saying it's best to only have water. Do you remember this, Ranjan Bhai? He said during the World Championship, right, that I prefer having only water, not to have any spikes. So, do you think it has an effect on the play, Ranjan Bhai? Like what you drink, what you eat, and do you think Vidit's choice is correct or wrong? What do you think? I think Vidit is close to 30 years now, 29 almost, so almost reaching 30. So he has an idea of his body. The advice that usually nutritionists, they give is generally given because people ask in social media, but on a case-to-case basis, our bodies are all different, isn't it? तो विदित के लिए जो उनके बॉडी का रिक्वायरमेंट होगा, इसी के हिसाब से आई एम 100% श्योर विदित हैज कंसल्टेड अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड ही हैज गॉट अकॉर्डिंगली अ डाइट अकॉर्डिंगली. तो ये तो मतलब पूरा प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं. तो मैग्नस कार्लसन इज प्रोबब्ली सेइंग व्हाटएवर इज वर्किंग फॉर हिम और नॉट वर्किंग फॉर. So I think that diet differs, the drink differs from person to person. But I hope उनके डाइटिशियन समय रहना तो नहीं है ना? मैं 10,000% श्योर हूँ वो तो नहीं है. अच्छा ठीक है. नहीं, I agree. Everybody is different. So for example, I kind of am on the Carlson camp here. Like I used to see these spikes like fourth, fifth hour में ना. Like it would help me if I am having it right now, but within a few half an hour, 1 hour, I would start blundering pieces. Maybe that was my actual level and मैं सिर्फ गलती डाल रहा हूँ orange juice के ऊपर. But that was my experience. Vidit went to Vidit जा सकता है भाई, washroom जाना allowed होता chat. By the way, chat very important. Yeah, मतलब usually open tournaments में all the players have the same washroom, चाहे वो कोई भी players हो. यहाँ पे I don't know if that's the case. Maybe they have a separate one. But yeah, because I'm saying this because I actually met Wesley So in a washroom like during the Millionaire Chess Open. So so going to washroom during tournaments can be beneficial. By the way, Gukesh has found the pawn to a4 move. Echo ka dekh liya Rajesh bhai. A4 played, the knight is attacked, and now it's with his choice. Does he move the knight to d4 as we saw, or does he grab this? Both choices don't look that tempting, to be honest. It does feel like, at least as a human perspective, white is slightly better. निरंजन भाई कह रहे हैं मैं खाना खा क्या, तो मैंने कहा ये गजब है भाई, मतलब हम खाना ना खाए भाई. खा लो भाई, खा लो, मजाक करो. अर्जुन वर्सेस पराग में पराग ने मैग्नस ने लेट टाइम गैम्बिट यूज करा था इन अ ब्लिट्ज मैच इन द वर्ल्ड कप. इंटरेस्टिंग. बेबी इज बैक. हाँ वो बच्चा फिर आया था यार, पक्का यूट्यूबर बनेगा. वी कैन आल्सो सी वैशाली इन द बैकग्राउंड. लेट्स हैव अ लुक एट हर गेम. Okay, looks pretty decent. Rook f3, rook f1 incoming. Lot of pressure here. Knight slightly worse than the bishop, let's put it that way. And yeah, more active pieces. So I would say slightly better for Vaishali. 99.2 accuracy, all looking awesome for her today.
दोनों चले गए, अब कौन खेलेगा यार? टुमारो में खेलते हैं यार, चलो हम जाते हैं और दोनों खेलना स्टार्ट करते थे। क्या बोलते हो मिस्टर श्याम 333? How about candidates in women's section? How much chance does Vishali have? Vishali is the second from the bottom in terms of the rankings. I think Salimova is the only one weaker than her in the standings. I had this list prepared recently. Humpy is the top seed. So on paper, Humpy is the favorite to win the candidates. But you never know, man. Like Vishali is a dark horse. She can win any tournament at any time. She did win the Grand Swiss very comfortably with the round to spare, I think. So मुझे लग रहा है कि totally she can win this event. It would not be such a big shock. Why Vishali is still being shown as I am? I think titles allocate होते हैं साल में 2 बार. So maybe she's not technically gotten it like right now. I'll have to verify this, but it takes time sometimes from achieving the qualifications to actually receiving the title. Baba, why doesn't Nihal play classical chess? I don't know. I think he played some recently somewhere. I saw his rating increase. But yeah, he is playing a little bit less than the others. That is true. भाई दोनों प्लेयर कहाँ है यार? बहुत टाइम हो गया. Chat, where are the players? I don't know where are the players. They have somehow just disappeared. Hello, hello, knock, knock, VD, knock, knock, Gukesh. भाई है तो VD की move, so his time is going down. Maybe VD is getting his next drink. I don't know, but he should come back soon. भाई यहाँ फर्क पड़ता है यार. This time is gold. बाद में इतना मिस होता है time, especially because they've played like 8 moves until now, or they've already used 1/3 that time, so they should play faster a little bit. Did they forfeit? No, Gokul bhai. They're just walking around or have gone to the washroom. I don't know. Let's go and play their games. हाँ भाई चल के खेलते हैं यार. तुम टिकट भेजो प्राग की, मैं आता हूँ रवि भाई. कौन सा प्रेशर आएगा ये देखो. हमें भाई को ह्यूमर, हमें भाई का ह्यूमर बढ़िया. आई थिंक निहाल भी अंदर आरटी में. नहीं नहीं यार. I hope he gains rating soon. Can Pragg act as Vaishali and play Canada's women's section? मिस्टर बोर्ड पार्टिकल ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब वो अगर आंख बंद करके सोचेंगे उनको मिल जाएगा. उसका जवाब मैं नहीं दूंगा. 2 मछली पानी में गया भाई, तीसरी कहाँ है? लेकिन दोनों प्रेशर में है इसलिए प्रेशर अबे यार. अरे यार वी टू ड्रिंक विद अनलाइक गुकेश. बट यार गुकेश का तो ड्रिंक है ही नहीं वहां पे. उसका कॉफी है ना, तो मग लेके कहाँ घूमेगा वो? ही कैन नॉट. यू कैन कैरी अ बॉटल बट यू कांट कैरी अ कप. आउट ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट करने गए. नाइस वन. दैट इज अ नाइस वन. नाइस. नहीं भाई नहीं हुआ सेटलमेंट भाई. आ गया वीडी. He looks at the board, plays the move, like writes the move. Nodirbek is an insane on aggressive chess player. I agree. His stare is so deadly, man. It makes you feel scared about your position. भाई थोड़ा एडजस्ट करते हुए अपना पेन कॉपी सब कुछ. अब वो चेयर एडजस्ट करते हुए गुकेश भी आ चुके हैं. कब चेंज करने जा रहे हैं भाई? चेस में को ना क्या काम करने पड़ते हैं भाई? बोर्ड भी एडजस्ट करना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, कितना कुछ काम होता है यार. चेस में कोई 12th मैन नहीं है. लेकिन इंडिया हैड 8.4% जीडीपी ग्रोथ इन लास्ट 3 months. अरे बहुत बढ़िया माइकल जी. अब बढ़िया सुपर चैट भेजने का भाई. Candidates tournament first, second, third prize money is lower than World Cup. By World Cup, I think has more players, has more countries involved. So obviously the prize fund might be higher because Carlsen खेल रहा है. You have all the players in the world participating. अब candidates is important, but only had 8 players. So और उसमें 3 एक इंडिया से है, 2 यूएस से है. So it's very hard to get the same level of sponsorship, I think. Do you think classic chess will be replaced with 960? I do think it's possible. मतलब 960 बहुत ही फन था देखने के लिए. बड़ा मजा आया देख के मुझे कि पहले दूसरी मूव पे ही ब्लंडर कर रहे हैं लोग. कारुआना ब्लंडर्ड on the move on move 1 in 1 game literally. So and Hikaru I think won like a game in 2 or 3 moves. So it is fun, man. It is fun. इतनी जोर से बोल तो शोर की वजह से प्लेयर्स चले गए. यार अगर मेरा इतना इन्फ्लुएंस होता तो मैं चिल्ला रहा होता भाई जब हमारे ओपोनेंट्स हमारे प्लेयर के ओपोनेंट जीत रहे हो. तो इतना चिल्लाता हूँ कि कान फट जाते भाई. वीडी ड्रिंकिंग अगेन. नहीं, I think this is a genuine like मतलब he's actually consulted a nutritionist about this. निजमा ने कहा ना they've actually had proper discussion about this, like what works best for him,
एंड उसको बोला गया है कि बीइंग हाइड्रेटेड रेगुलरली इज गुड फॉर यू. इज देव कम टू दिस कंक्लूजन बिकॉज ही इज डेफिनेटली हैविंग अ लॉट ऑफ ऑरेंज जूस, दिस दैट, आई डोंट नो क्या क्या पी रहा है. तो या ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फिटनेस प्लस डाइट ऑफ एंड ऑन द बोर्ड. गुकेश भाई का सूट मस्त है. गुकेश हैज द सेम सूट, नो, ही लव्स द कलर ग्रे. I think he's a fan of the color gray somehow. He always has this suit. I think उन्होंने एक ही टाइप के तीन चार बनवा के रखे हैं and he always plays this. Wears this, sorry. Take my name. Hello आर्यन भाई, कैसे हैं आप? Who is winning? Right now it seems to be equal, man. And because we have, two Indians playing each other, तो एक गेम कम है आज, तो automatically less games to look at. But Prague की गेम में एक नजर मारे अगर हम क्या हुआ है अब तक. So we saw it till 98. हम कह रहे थे कि कैसी अजीब सी ओपनिंग है किंग्स इंडियन, ऐसी मूव्स अच्छी मूव निकलने लगी. एंड यहां Prague plays बिशप E2, लॉजिकल मूव, कैशलिंग की तैयारी चल रही है. एंड नाउ कम्स E6, फाइनली चैलेंज करते हुए सेंटर को. Prague ने कहा भाई तुम चैलेंज कर रहे हो तो हम मारेंगे, उन्होंने मार दिया और ब्लैक ने पॉन से मार दिया. एंड यहां पे इट इज वाइट टू प्ले. नाउ वन लॉजिकल मूव इज क्लियरली कैसलिंग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वेरी लॉजिकल मूव. नेक्स्ट यू प्ले क्वीन D2, यू ब्रिंग द रूक टू द सेंटर. ये पॉन भी थोड़ा वीक है, नाइट हैज टू डिफेंड दिस कॉन्स्टेंटली. एंड ये इज नेवर अ थ्रेट बाय, दिस वुड बी रियली बैड बिकॉज नाउ योर डार्क स्क्वायर्स आर वीक एंड ये पॉन मारना इज एनीवे वेरी डिफिकल्ट. सो आई थिंक कहीं ना कहीं Prague is better. How much we'll have to see because we can't trust the engines, as I said. And दूसरा एक मूव यहां पे इंजन कह रहा है, which is H4, which is rather interesting because it makes sense. Now you're thinking ki bhai maybe I can even castle queen side, who knows. And also H5 is extremely tempting because to break on G6, then the rook files opens up and you already have this huge center. But yeah, it's not a move that comes to my mind immediately because already आप एक move H3 पे लगा चुके हो, तो दोबारा H4 खेलना is not that easy नहीं है खेलना. But yeah, that's the engine's preference. My move would be castles. That's a logical human move. Let's see which one Pragg goes for. फिलहाल तो Pragg सोच रहे हैं, दोनों ऑप्शन है, और भी ऑप्शन होंगे. I'm sure Queen D2 should be logical. Oh, Queen H4 actually, I missed that move. Queen H4 immediately आ रहा है. So yeah, that's why that also adds up to H4. Yeah, being a good move. So you have to be careful. You have to be careful. And also Queen H4 पे you don't have Bishop F2 because F4 is falling. That would be pretty much lost. आप कहां से हो? मैं भाई हूं फरीदाबाद में रहता हूं भाई, मेरा खानदान कश्मीर से है, अगर कोई पूछता है तो बताता नहीं हो भाई. Did you see Bill Gates posted on IG he is traveling in India? Yeah, he was in Kolkata I think. Tata Steel India के लिए. आप रिकैप ये है कि भाई आज वी हैव VD अगेंस्ट गुकेश अगेंस्ट VD एंड वी हैव Pragg अगेंस्ट Richard Rapport. ये दो गेम इंपॉर्टेंट एंड वैशाली टुडे फाइनली आल्सो हैविंग अ गुड गेम. We'll have a look at all these games. बहुत शार्प होने वाला है. एंड जैसा मैंने बोला कि ये जो VD गेम है, जो इसमें जीतेगा ना वही बंदा कैंडिडेट जीतने के पूरे चांसेस है. एंड दैट्स व्हाई यू सी 55 minutes for Vidit now. He has used up 35 minutes for 8 moves and now he has 55 minutes for 32 moves. So not easy at all. Yeah, Nodirbek is crazy, man. Pretty strong. I think Ethan Vaz, Arjun, Eddie Reddy. Yeah, I have heard both of these names. There are many youngsters, many youngsters you've never heard of. That's the crazy part. India में बहुत लोग हैं. इतना competition है कि it's hard to even kind of, even if you could prepare an Excel sheet and you will have to go to page 2, man. That's the list. ठीक है, पिज्जा से आ गया घर पे, मैं जा रहा हूँ. क्या आपको आना है तो आ जाओ भाई. अच्छा तुमने वो गार्लिक ब्रेड नहीं मंगाई, गार्लिक ब्रेड मंगाई होती तो मुश्किल रहता रेस करना यार. फाइनली साहिल विल गिव समोसा अवे टुडे. भाई यार कल भी हमने दिए थे, मैंने भी आई थिंक मैंने डीएम चेक नहीं किया, सो आई अपोलोजाइज, आई विल चेक माय डीएम्स टुडे. बट हाँ भाई वो कल हमने दिए थे, आज भी देंगे अगर तुम 369 लाइक्स पहुंचाओ. चैट स्ट्रीम लाइक करो, लेट्स गेट टू 369 लाइक्स एंड एक बंदे को हम समोसा देंगे भाई. The loser of this match will win the candidates. Trust me, if there was clear evidence to prove that, like you could actually prove that with evidence, अभी रिजाइन कर देते भाई लोग. अभी पीस ब्लंडर हो रहे होते भाई, नाइट B7, नाइट C3, but that's not going to happen. I would say कि भाई जो जीतेगा, he has better chances to win the candidates. वे साहिल भाई, वे तो कोई ड्रिंक को स्पॉन्सर कर रहा है. Is he like a
I don't think so कोई है वैसे, but yeah, he could be like it would be a good partnership based on how much he is, highlighting himself. It would be a good partnership. Garlic bread भी है भाई, cheesy dip नहीं है लेकिन, तो I'm fine. Ethan was my friend. Yeah, I saw him on Twitter a little bit. Yeah, he was. I saw his couple of tweets actually on Twitter. Yeah. Ethan was. Who is Vidit and Gukesh? भाई अभी बिल्कुल equal चल रहा है. I would say Gukesh slightly better as we discussed. भाई यहाँ पे 9 is attack. Black has two choices, either d takes c5 and a takes b5. But this variation I don't like personally because I love open files. And now this a7 pawn is a weakness. e5 is a weakness. बहुत ज़्यादा weakness है actually, honestly. This pawn is, you could call it weak, but yeah, I would rather be white here. दूसरा option ये है कि भाई you actually just play knight d4, takes, knight b3 and c5. This is also not preferable, but I would rather have this than the other one. So let's see which one Gukesh goes for. Vidit goes for. That will be interesting to see. Ian favorite for candidates. I am not sure, man. दो बार जीत गया. What is the probability he wins a third time? Extremely low. चीजें टिप भी है भाई, पर कोक नहीं होगी ना भाई, तो इट्स फाइन. आपका डेली रूटीन क्या है? अभी बनाता हूँ व्लॉग भाई, डेली रूटीन का भाई. दिन को 4 बजे उठने का और शाम को 6 बजे सो जाने का. आई एम स्लीपिंग राइट नाउ लेजिट. जो ओपन डेटिंग टूर्नामेंट होता है, एंट्री फी होता है वर्ल्ड कप प्राग में एंट्री होता है क्या? नहीं भाई, एंट्री फी थोड़ी होता होगा. इतने जो ओपन होते हैं उसमें होता होगा, बट इन टॉप प्लेयर्स के लिए थोड़ी होता होगा. इनको तो इनफैक्ट प्राइज मनी मिलता होगा, पेरेंट्स फी भी शायद मिलती होगी. फैबी विल विन. आई रियली होप ही डजंट यार. फैबी जीत जाएगा तो हमारा चांस चला जाएगा यार, एक साल का फिर से कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा. आई एम रियली होपिंग ही डजंट. बट एनीवेज लेट्स सी. They played. Yeah, by the way, d takes c5. He went for the choice I did not want to go for. So Vidit choosing a move which I did not want to play. And now comes a takes b5. And his idea is to play queen to d6. So he has defended both pawns. Now he moves towards connecting his rooks. And next move obviously will be like bishop g4 or bishop e6 or bishop d7 and so on. And the main question is, let's say कि white plays h3 to prevent this. And let's say I play bishop d7. So white को भी c4 खेलना पड़ेगा. So white का struggle भी, it's not a one-way street because the d3 pawn is a weakness. And कल को I can reroute my knight via some paths and get it to d4. So it's a very intense struggle, but still white probably slightly better. This is a difficult weakness to kind of win at the end. Queen e2 rook d1, and I kind of hold it together. कभी का समझ में ही नहीं आता कि को हो क्या रहा है, पूछे बिकॉज आई. भाई मैं हूं ना भाई, चेस में क्या हो रहा है देखो, काउंट करो. फर्स्ट वे टू evaluate the position is to look at the bar. If you have access to the bar, look at the bar plus 0.4. Then you see plus 0.4 मतलब white is tiny bit better. क्यों है बेटर यार? अब तुम देखो यहाँ मटेरियल तो बराबर है. You count the pawns, pawns बराबर है, पूरे पॉन्स है हर किसी के 8 पॉन्स ईच. पीसेस बराबर है, बिशप बिशप, नाइट नाइट, क्वीन क्वीन, रुक 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 रुक, किंग किंग. एंड देन यू सी कि यार ब्लैक के पॉन्स थोड़े से वियर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोनों में है, कनेक्टेड नहीं है इतने अच्छे से. डबल पॉन है एंड दैट्स व्हाई ही स्लाइटली वर्स. एंड व्हाइट के भी डबल पॉन है, बट व्हाइट का रुक फाइल ओपन है, तो इट्स काइंड ऑफ एडवांटेज हियर. Why do we call Vidit greedy? As somebody mentioned, because greedy videos run करना जरूरी है. पेप्सी, अरे तो कोक अलग से ऑर्डर कर सकते हो यार. Why do we call, sorry, let's be honest, I don't think anyone is weaker than Indians in candidates except Abbasov. So I would have to disagree. I think Firouzja is not in his prime form. Maybe that's debatable, but I don't think he prime form mein hai. Hikaru is somebody who plays really well, but he plays quite infrequently. So he's not the guy who plays every tournament. So it's possible for him to go wrong. Then Caruana is in form, but he also kind of lost 2 or 3 games in a row in the last Olympiad. Sorry, in the last candidates. And so I kind of see ki matlab jo, it's not always ki, the same players win. And also Nepo hai. Nepo has won 2 candidates. Will he win the third time? I don't think so.
हाँ बताओ भाई, 20 स्टैट्स। सॉरी, हाँ 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 हाँ, ये मुझे हाँ, 24th। हाँ, बाय द वे विदित और डिंग का बर्थडे सेम है, 24th अक्टूबर। दैट्स समथिंग आई एक्चुअली न्यू। एंड कि गया था अभी रिसेंटली। एंड क्या पता कि दोनों का मैच हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप, दोनों साथ में बर्थडे मना रहे हो। क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप आई थिंक इज लाइक सम यूजुअली हैपेंस इन नवंबर। तो मान लो 1 नवंबर से स्टार्ट है। इट विल बी एपिक, पता लगे एक हफ्ता पहले साथ में बर्थडे मना रहे हैं विदित और डिंग। इट इज पॉसिबल। इमेजिन अ रैंक 102 प्लेयर। नहीं यार, आई थिंक बासो इज अ स्ट्रांग प्लेयर भाई। देखा था वर्ल्ड कप में क्या खेला था वो। बाय द वे वीडी नॉट एट द बोर्ड, गेटिंग अप क्विकली एंड मूविंग अराउंड पूरा स्टाइल में। वो बच्चा भी उधर ही है भाई, वो बच्चा तो जरा कैमरा टाइम लिया वो। Drive the expectations up by coping and criticize them later when they don't win like cricket. Fake hype is the worst thing in the world. um so there are levels to this. Let me clarify why hyping is important. So India mein there are level of sports, theek hai? There are two levels of sports, three levels. One, ye bhai thoda philosophical hai. One is cricket, usme khali cricket hi hai. Number two आता है sports like badminton, then you have hockey या whatever, जो actual में physical sports. Sorry, हाँ कबड्डी, which are actual physical sports. एंड उनके वो बहुत ट्रेंड होते हैं when somebody wins like a Olympic medal. वो उस टाइम पे उनको BMW गिफ्ट होती है, ये होता है वो होता है. बट देन पीपल फॉरगेट फॉर द नेक्स्ट 4 years. एंड तीसरे लेवल पे आते हैं स्पोर्ट्स जिसके बारे में ट्रेंड कभी यूजुअली नॉर्मल पब्लिक में होते ही नहीं है. एंड दैट्स वेयर चेस इज. ठीक है. सो अगर तुम उसको हाइप ही नहीं करोगे, सो दैट इज लाइक सेइंग भाई मेरे को कोई इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देगा तो मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूंगा. भाई मैं बोर्ड में फेल हो जाऊंगा तो मैं पेपर ही नहीं दूंगा. इट्स बेटर टू हाइप समथिंग एंड फेल. एटलीस्ट पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट. अगर हाइप ही नहीं करेंगे तो भाई किसी को पता ही नहीं लगना. तो कोई जीत भी गया, बाद में बेचारा खुद एयरपोर्ट पे अकेला आएगा, कैब पकड़ के घर पहुंचेगा. So I think that's where chess is. It has to be it has to be mainstream, and that's why hyping is not wrong. Even if they fail, at least enough eyeballs are on them. Somebody will notice them, somebody will support them, and hyping is always good. Ask any player, would they prefer? The question simple hai bhai. Would you have 1 million fans and 1,000 haters, or would you have 10,000 fans? Simple funda hai bhai. The more people you involve, utne trolls aate rahenge. You cannot control the trolls. You have to focus on the positives. You can keep controlling trolls, फिर उसी में लग जाओगे भाई. As simple as that. So hyping, there's nothing wrong with hyping, and I enjoy it. Bhai, I want to see them win. So it's not like ऐसा नहीं है भाई fake कर रहा हूँ. Fake भाई, ऐसा नहीं भाई, genuine है भाई. क्रिकेट इज लेजेंड ब्रो. हाउ डिड लेजेंड तभी बना ना भाई, कपिल देव वर्ल्ड कप जीता. अब इमेजिन करो कोई कवर ही नहीं करता वर्ल्ड कप को, मीडिया कहती अरे यार हाइप क्या करनी है भाई. लेट्स नॉट हाइप इट अप टू मच भाई. तो अभी बेचारा धोनी धोनी बेचारा बैठा होता अपने 2 BHK में. तो दैट्स द मेन थिंग भाई. सो या एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट. कैन डिंग डिफेंड हिज टाइटल? As of now, no, but I do think he will get better and better and better as the year progresses. So yeah, it will be amazing. आखिर कहना क्या चाहते हो भाई? समझ गए तो समझ गए भाई. टूर्नामेंट के प्लेयर्स में इंडिया के प्लेयर्स कौन जीतते भाई? कौन से टूर्नामेंट में? राम, ये क्या रिक्वेस्ट है भाई? Normally, professional chess player will be thinking how many moves ahead. That's a good question. Depends on the position. यहाँ पे, for example, it's kind of a starting middle game position. यहाँ पे you will probably think deep because you really want to decide कि where will my pieces go. So do I put the bishop on g5? Do I put it on e3? Do I put it on b2? There are a lot of possibilities. So you really want to go deep strategically. कोई force variation हो, वहां पे you have to go really deep. Sometimes 10, 15, 20 moves deep in certain force variations.
कोई नॉर्मल एंड गेम है स्ट्रेटेजिक, या रुक रुक एंड गेम है, या कोई नॉर्मल मिडिल गेम है, मैन्यूवरिंग चल रही है, देन यू कैन सिंपली थिंक 2 moves deep, that's enough. So it depends on the actual position actually. घंटे का स्पोर्ट्स है भाई, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नो, तभी तो हाइप करना जरूरी है भाई. अगर तब भी हाइप नहीं करेंगे तो कौन देखेगा, फिर घर पे बैठे रहेंगे भाई, वही 200 लोग देखते रहेंगे जिंदगी भर चेस. वो नहीं करना ना, वी हैव टू बिल्ड अप द ऑडियंस, सिंपल. यो मिस्टर कनुंगो जी, कैसे आप? प्लेयर्स इन प्लेइंग गुड बी लैग इन कैंडिडेट्स, दुनिया हिला देंगे हम. भाई हिला दो यार, प्लीज हिला दो यार, सब हिला दो भाई. गोइंग टू द गेम ऑफ प्रग, कुछ हुआ क्या? By the way, he played the pawn to h4, so he played that Indian's first preference, and now comes bishop f6. So this pawn is saying tata bye bye. If you play h5, there is bishop h4, and this is extremely difficult to defend. Rook h3 खेलना पड़ेगा, which is not only does it spoil castling forever, there's also e5, and you can see जो bishop है, वो एक जोकर वाली स्माइल दे रहा है ऐसी हल्की फुल्की. So that's the main issue. So I think h5 is no longer a good move, and यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे कुछ और खेलना पड़ेगा. What will be that move? Maybe it is bishop d3 with the idea कि अगर वो bishop मारते हैं, there is queen to g4 attacking the bishop, and let's say the bishop goes back. मान लो it goes back. Now comes e5, and basically black is lost, already lost. In fact, यहाँ पे rook takes h7 का threat है. For example, b6, rook takes h7, king takes, queen g6, king h8, and mate. So काफी interesting position है. I think Pragg will find bishop d3. He is not somebody to not find these critical variations. So he's thinking right now. He has more time on the clock. So Pragg अभी बढ़िया position में लग रहे हैं मुझे. Going back to the game of Vidit against Gukesh, जहां पे Gukesh still in deep thought. Time भी बराबर हो चुका है दोनों players का. 54 minutes each. Wow. Who was the weakest undisputed world champion for me? It's अबे यार, world champion को भी कैसे तुम weakest बोल सकते हो भाई? Do Vichy and Magnus have most world championships? I think Vichy has 3 or 4 depending on how you count it. No, sorry, 5 or 6 depending on how you count it. And Magnus has, how many does Magnus have? 13, 14, 16, 18, and 21. He also has 5, right? Nanjmai, he has 5, I think. क्या? Magnus has 5 world championships, right? मतलब जो क्लासिकल वाली. Yes. हाँ हाँ ठीक है. एको भाई. Do you think जैसे Kasparov ने मैंने कोच किया था, वैसे Magnus will यहाँ कोच करेगा? Absolutely करेगा, I think. I do think he will do that because, as a world champion, when you kind of decide कि ठीक है, I don't want to be world champion anymore, he would love to see his legacy, get carried on. Whenever Carlsen does well, it's also a pat on the back on Kasparov, right? Because he is the one who coached Carlsen. जब Carlsen अच्छा करता है तो Kasparov को खुद को अच्छा लगता होगा यार कि I taught him, he became the greatest. That means it's also a plus point for me. So कहीं ना कहीं Magnus भी वो चाहेंगे. So I'm pretty sure कभी ना कभी वो एक youngster को help कर सकते हैं. It is possible. Maybe not immediately, but at some point when Carlsen is 40, he's kind of playing less chess, he might do that. Kasparov 6, yeah. Karpov 6 world championships, Lasker has 6 and Kasparov has 6. वाह, Kasparov की तारीफ कर रहे हैं. वाह. चेस का हाइप है 1.9 के लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे. आप थोड़ा कमेंट्री अच्छा करोगे तो लोग जरूर देखेंगे. भाई गजब बेइज्जती मार दिया भाई संतोष भाई जी. यार काश मैं भी बहरा होता यार. भाई और नहीं सुन पाता ये. ऑफ प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. भाई क्या क्वेश्चन है आपका? चेस प्लेजर भाई. नत्थु भाई बढ़िया, आप बताओ भाई कैसे हैं आप? भाई आज इतना स्लो क्यों चल रहा है सब? एवरीबडी इज मूविंग सो स्लो. Vaishali, by the way, is getting a better and better position. Look at these moves. She played the rook to f2, doubled up rooks, played h4. ये पूरा लग रहा है Vaishali is going to just cruise through here. Ideally play h5, create weaknesses, and then she might even move the rook up if required and so on. Bishop also pointing towards f7. So ये knight भी कभी हिल नहीं सकता. This is very, very scary for her opponent. Looking good for Vaishali. 1.9k was 1 crore plus. Yeah, exactly. The difference है, and it can improve a lot. There's a lot of scope for improvement. Let's put it that way. I am regular, make me mod. अरे वाह, नाम ही रेगुलर है बंदे का. बात तो सही है यार, he is regular यार, बट मॉड नहीं होता यार. प्रग गेम अभी देखिए हमने. प्रग गेम लुक्स रफली
decent, I would say, time pe aa gaya, and bishop d3 we discussed would be a good move with the idea of queen g4, f5, e5, h5, and to basically launch an attack before black can coordinate. Before queen comes in, black plays e5, whatever, jaldi se attack kar sakte hain. So Pragg is right now thinking उनको ये pawn sack कर देना चाहिए and hope for the open h file. संतोष जी इज ऑल्ट अकाउंट ऑफ निरंजन, डायरेक्ट नहीं बोल सकते. बाप रे. Pragg's गेम ओके देख लिया. I will submit 100K if Vaso wins candidate. निशांत भाई देख लो. रंजन भाई ये स्क्रीनशॉट कर लो यार प्लीज, बहुत जरूरी है. 100K सुपर करने की बातें कर रहे हैं भाई. 100,000 क्या रुपीस की डॉलर्स. हेलो मिस्टर कल्पेश जी, कैसे आप? निशांत बैंगनी जी ने कहा है कि वो 100K सुपर करेंगे अगर अब्बास ऑफ कैंडिडेट जीतते हैं. भाई देख लो भाई, हो गया. स्क्रीनशॉट देख लो, फंस गया अब है निशांत भाई. बाय द वे नो रिजल्ट सो फार. सारी गेम्स चल रही हैं शार्प. आई एम काइंड ऑफ शॉक दो कि अभी सब काइंड ऑफ ओपनिंग इज स्टार्टिंग, मिडिल गेम में सब कुछ है. And even Gukesh now falling below the 50-minute mark. That's 10 ही मूव हुए हैं chat. They have used up for like what 40 minutes for 10 moves. वो भी पहले 10 जहां पे you kind of know the theory. This is looking extremely dangerous now in terms of the time situation. And अभी तो गुकेश हाथ और सर पे रखा अभी तो. This is not going to get better. आपकी प्रेप कितनी डीप है भाई? 2 मूव की. दिस कैंडिडेट्स राइटिंग एवरेज इज द लोएस्ट ऑफ ऑल टाइम. रियली? एक्चुअली आजकल रेटिंग्स का इशू भी है. आई थिंक एज यू हैव माइट हैव हर्ड कि रेटिंग्स का डिफ्लेशन सा हो गया है, तभी फिडे ने पुश करी है रेटिंग्स. अर्लियर यू हैड लाइक 10 प्लेयर्स अबव 2800 एट द सेम टाइम एट वन पॉइंट. आजकल लिटरली 1 या 2 ही रहते हैं. कार्लसन भी बेयरली अबव है. सो या इट्स नॉट द. ओ वेट, he played knight to h4, so knight coming to f5, maybe queen coming to f3. So is he planning to launch some sort of mild attack? Possibility to hai yaar. What does VD do now? I think rook e8 looks very logical, just to kind of defend the pawn, and also exceptional cases where queen can go back to f8. And also kalko if knight f5 takes, then e4 happens immediately. Rook is already behind the pawn, so looks very logical. Bishop g4 is another move, yeah, just to kind of tempt this move f3 if possible. White will of course not play this, I think. कि अब्बासोव जीतेगा, if he wins I'll win 1 million, उसमें 100K दे दूंगा. अरे वाह वाह वाह. But 100K हार जाओगे ना यार तुम, most likely. तो उसमें क्या फायदा? I just checked something and man, he literally stayed world champion last year for 27 years. What a dominating player, absolutely. आपके जीएम्स, ये आपके जीएम्स आपके मजे ले रहे हैं स्लो खेलकर. भाई मजे नहीं ले रहे यार. दे आर रियली स्ट्रेस्ड आउट. आई कैन अंडरस्टैंड यार. मतलब इट्स नॉट समथिंग, बिकॉज एट द एंड क्या है कि दे नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस गेम इज. एक तो इंडियन है ही एक अलग सी राइवलरी, बिकॉज एट द एंड sponsorships are limited, everything is limited, so you're kind of battling everybody. Second, they're going to play each other in the candidates. So world champion एक ही होगा यार. And regardless of how close they are, how much they know each other, they've trained before, practiced before, played together before. Right now world champion एक ही हो सकता है. 3 world champion नहीं होते हैं, ये rivalry चलेगी. Nodirbek clearly winning against Navara. भाई Nodirbek तो क्या ही फॉर्म में है भाई. Wow, Nodirbek seems like he's close to like, oh, look at these active pieces, man. And literally blunder मारने के बाद भी उनकी पोजीशन इतनी बढ़िया. In fact, knight f7 directly was working apparently, and knight g5. So Nodirbek ji full pressure on Navara. सारे पीस एक्टिव है. He is just a beast, man. कैसे बार बार कर लेते कुछ समझ नहीं आता है मुझे. एंड डेविड नवारा जी के लिए अच्छा दिन नहीं लग रहा आज. नोदिरबेक जी 2.5 पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए. अगर गुकेश को कैचअप करना है, he will have to defeat Vidit, something that Vidit doesn't want obviously. So वहां से भी एक तगड़ी फाइट देखने में मजा आएगा भाई. Come on गुकेश. ये कौन आ गया मेरे नाम से चैट में? कोई नहीं आया यार. Dikku has the better position here. I came here just now. यह कमेंट्री के
ये क्या है भाई? भाई आई वर्क फॉर चेसकॉम भाई, आई वर्क फॉर चेसकॉम नाउ, समझो भाई. Do you think Arjun is training for candidates in the friendship? I don't know, because technically Pragg did knock out Arjun from the World Cup. So how strong that friendship is my speculation, of course. I don't know if Arjun is involved with helping anybody. It would be very interesting to know if that is the case. But knowing what I know, I find it hard to believe actually. Purely because it's difficult. Matlab, like even Pragg probably would have his team already. He has a very strong team. So will they involve Arjun? I don't know, because Arjun is playing himself. He's an active player, has less time. Arey Kalpesh bhai, thank you for super chat bhai. Arey, thanks a lot. Fifth super chat on the stream. Arey wah bhai, thanks a lot yaar. It will be shocking if Vaso wins Candice and does he manage to become world champ? Society would accept it. By society, kya accept nahi karti bhai. Don't listen to society. If you base your skills on society, you will always be sad and depressed. Don't worry about society bhai. Jo karna hai karo. If you want to be, world champion, be world champion. If you want to throw rocks, throw rocks. If you want to just dance, dance bhai. Do whatever you want to. समोसे भिजवाओ भाई, समोसे करेंगे 369 लाइक्स के ऊपर. जल्दी से लाइक करो ताकि हम समोसा चैलेंज कर पाए. मेरा मैसेज तो देखो भाई, देख रहा हूं लेकिन दिख नहीं रहा मुझे. हाउ इज C4? यहां ब्लैक से C4. नाउ C4 actually makes some sense because E4 hanging है, but the problem is after takes, let's say queen takes, rook takes, E5 pawn भी weak है. Like knight E4, I'm wondering, can I just play rook E1 here? That might be a move. So it looks possible, but I do feel कि ये चार pawn चाहे जितने भी अजीब लग रहे हो, white is better here. White should be better. Yeah, he should be better. Although, yeah, it's not losing. It's not losing though. C4 is definitely an option. Is Vishy helping anybody? I think so, yes. I don't know who, how much, but we do know Gukesh is student of Vaka, so maybe, I don't know. Ikbhai, उस दिन केवल 30 सेकंड इंक्रीमेंट काम किया, बिल्कुल. Never listen to society. My society also bad. They don't let me play cricket. बाय सोसाइटी में तुम्हारी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा था भाई, इन जनरल ह्यूमैनिटी की बात कर रहा था भाई. जो करना है करो भाई. C4, has he played C4? Why white? If the pawn is attacked, we will have to play C4, but it's not something I'm too excited about because जैसे C4 खेलूंगा तो D3 pawn weak हो जाएगा यार. So I will have to play it, but let black at least waste a move to attack it, and then I will save it. Of course I've played gambits, but मैं 1D4 player हूं तो मेरी gambits थोड़ी limited है भाई. E4, there are more number of gambits. D4 में बहुत कम है. Tikku ignored my massage. I definitely ignored no massage bhai. Have you played? Okay, is Rook D8 a good move? Rook D8 to put pressure on this pawn again feels logical. I think White Queen F3 खेलेंगे, getting out of this C4 idea, and Knight F5 and also Bishop G5 seems to be a good move now. So again, it's okay, but White still seems to be better. Vidit का जो problems है ना, वो solve नहीं हो रही Rook D8 से भी. So let's see what he plays. आई एम अ बॉय जो अपनी नानी के फोन से स्ट्रीम कर रहा हूं. मुझे पता है भाई, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मुझे पता है. यो नैतिक भाई, क्या हाल चाल? जो मर्जी हो करने से पेट नहीं भरता. अरे भाई यार देखो, कई बार भरता भी है यार, कई बार भर भी जाता है, पता है. और गलती से अगर भर जाए तो तुम भी कितने खुश रहोगे फिर, देख लो. समटाइम्स इट्स वर्थ इट, जस्ट थिंक. Come on. 46 minutes for Vidit. Look at the hands on his head. Like, he looks so focused and intense right now. I don't know why that's the case. I think he realizes कि भाई clock पे time जा रहा है, कोई clear मुझे variation नहीं दिख रही. Because we saw chat, Rook D8 पे there is Queen F3, there is this Bishop G5, Knight F5 incoming. Rook E8 पे भी, I think the plan will be similar, yeah? Not much changes. Although it is slightly better, I think, because defense E5. Then probably if you play Bishop D7 attacking the pawn, am I forced to play C4 immediately? Can I ignore it for now? If C4, then Rook F8 does look a bit strong though. So what do you play after Bishop D7? That's interesting. Ninja bhai, what do you play here though? यहाँ पे क्या खेले भाई? सोच रहा हूँ ब्लैक से या व्हाइट से. White से, because if I play C4, then Rook D8 now,
let's say queen into to save the pawn, bishop g4, and already this pawn is like, bhai main chala. I'm not so sure. F3, bishop e6, rook d1, but then bishop. Wait, what do we play here? Easy नहीं है भाई इतना. Because I thought essentially bishop c4, but there is knight f5 then. And queen d7, apparently there is bishop h6. बाप रे, connecting the rooks and attacking g7. भाई ये बहुत ही sharp position होने वाली है चैट, मुझे लग रहा है भाई ये तो बहुत. एंड या आई कैन अश्योर यू विदित इज लुकिंग एट ऑल दीज वेरिएशंस राइट नाउ, तभी वो सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है. 3 बार हेलो बोला. कैसे मैनर्स है आपके यार, कैसे हैं भरत जी? भाई भरत जी आप बताओ भाई. ये लो भाई, 3 बार मैं भी हाय बोलता हूँ. हेलो भरत जी, हेलो भरत जी, हेलो भरत जी. रील देखी क्या? नहीं भाई रील क्या था रील में ब्रनर भाई? एक सवाल पूछना था, पूछो यार. खुशी में समोसे ऑर्डर कर लिए. अरे वाह चिराग भाई, हमने भेजे नहीं, आपने खुद ही मंगा लिए. वाह. चल एक चैलेंज है मेरे पास, ट्राई करें क्या? आई हैव अ चैलेंज, ठीक है? सो लेट्स डू इट व्हेन वी रीच हाउ मेनी लाइक्स वी हैव. हाउ मेनी लाइक्स राइट नाउ? वी हैव 184. चलो एक चैलेंज करते हैं चैट. वी हैव 250 वाचिंग. लेट्स गेट टू 250 लाइक्स एंड आई विल डू अ चैलेंज. एक चैलेंज दिमाग में, ठीक है? एक बंदे को वील गिव आउट समोसा. लेट्स गेट टू 250 लाइक्स जल्दी से टिल 9:30 एंड एक बंदे को मैं समोसा दूंगा. आई हैव अ इंटरेस्टिंग चैलेंज, ठीक है? लेट्स गो चैट. शो केमर गेम. भाई केमर का क्या करना है हमने यार? केमर भाई हारे जीते हमें खाक फर्क नहीं पड़ता भाई, एटलीस्ट फिलहाल के लिए. Going to the Prague game, has something happened after bishop f6? No, Prague is still in deep thought. So काफी deep calculate करते हुए, that means he's also out of prep most likely. Bishop d3 again with the idea of queen g4, as we saw, still the best plan for him. Let's go back to the game of Gukesh against Vidit. Still nothing has happened. 43 minutes for Vidit now. निंजा टेक्निक नहीं है भाई, बिल्कुल एक चैलेंज करेंगे. लेट्स सी. 250 लाइक पे करेंगे भाई. नहीं चाहिए समोसा, लाइक नहीं करूंगा. क्यों भाई? अपना पेट भरे भाई, समोसे को पेट में डालें और अपना पेट भरे भाई. टेस्ट बस आपके मांग रहे समोसा. इमेजिन करो भाई, वो आपका मेल्ट होगा वो में समोसा, क्रंची क्रंची. ओहो क्या मजा आएगा. Why does our brain ignore the second the? I don't know यार. It takes shortcuts. We all love shortcuts. कचौरी भिजवा देंगे भाई. कचौरी भी पसंद है यार, ये बात तो है. I love कचौरी also. Vidit looks a bit, kind of a bit depressed for some reason. I don't know why. He's not happy with this position. How about g6? But g6 के बाद ये स्क्वायर्स वीक कर दिए भाई, h6 और g5. Now you can imagine bishop h6 all the way attacking the rook. Yeah, it's not convincing. It doesn't convince me at all. Even just f4 to even bring the rook into the game now. You can see the bar jump up. देखो jump कैसे छलांग मारता है भाई. या देखो ये खेला. If g6 here, गया ऊपर. And if f4, गया ऊपर. So you can see how this is getting dangerous. It's getting really, really dangerous for VD now. टिको भाई को लाइक माइलस्टोन्स पे बोनस मिलता है. समोसे खिलाते हैं, रियल फिलैंथ्रोपिस्ट. भाई लाइक्स पे बोनस मिलता तो बढ़िया भाई. भाई हाँ, ये ऐसा कोई बोनस नहीं है भाई. जल्दी लाइक करो भाई. इतनी ठंड है यहाँ पे, 3 दिन से समोसे ही खा रहा हूं भाई. कहाँ रहते हो निशांत भाई? टिक्कू भाई इनोसेंट भाई. हम इनोसेंट ही है भाई, शरीफ आदमी हम. He's not played bishop g4 yet. That is a potential move to prevent this queen g4. यहाँ पे I think queen e1 will happen and then you will try to kick the bishop away later. That does feel like a good move for VD though. I do like this move. And now you play bishop d7, attack the pawn, and there is no queen f3 anymore. So this feels like a potential plan. And also there is no c4 because queen d3 is hanging. So maybe bishop g4 is the best plan for Vidit here. Let's see if he plays it. Only 11 moves for white and 10 for black. पूरे 30 मूव पेंडिंग है चैट. तो 30 मूव खेलने लिटरली मतलब 40 मिनट में. This is extremely difficult. प्रूव में यू आर कश्मीरी. क्या कर प्रूव यार? हेलो कश्मीरी बोल भी दी. Everyone in chat is indeed a CM.
Currently traveling to Tawang, अरुणाचल प्रदेश. आज मॉर्निंग -2 टेम्परेचर था भाई साहब. साले वीडी के चैनल की वीडियो में आए हो भाई. भाई वो वीडी का वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ था ना वो. ही डिफीटेड कार्लसन देन. सो ग्लैड टू बी देयर ऑफ कोर्स. दे हैव नो टाइम. एग्जैक्टली ये 40 मिनट दिख रहे हैं which is dropping below 40 now slowly, and they literally have played no moves. Rook d8 played. भाई चैट में कोई बोल ही रहा था rook d8 and he plays rook d8. wow. so let's see chat क्या होता है अब, क्योंकि फिलहाल के लिए the bar says then it does feel like intuitively कि भाई white should be better. who do you want to win यार? want is क्या mention भाई? f4. wow. I thought maybe like queen f3, queen g3, and then maybe something. f4. So if he takes, that would be awesome, bhai. I think we would be really happy then. With bishop g5 next, queen aa gayi. But maybe he will not take. Maybe just c4 now. And this is a pin now. I can't take now. If fe5, then queen check, king h1, and now takes. Oh, sorry, knight hanging it. Sorry, knight g4 then. My bad. And I can play knight f2, I can play knight e5, I can play cd3, and I think I'm okay. I'm okay. So queen f3, knight e5, queen g3, and the game goes on. Maybe it's still sharp, but f4 pe I think c4 kind of holds for black, and that's why I think he played rook d8, maybe to counter this f4 move. सत्य को स्वीकार करो. ये क्या है भाई? क्या यार चैट, मैं पता नहीं क्या ही पोएट्री लिख रहे हैं भाई. सीएम इंग्लिश चैट मास्टर नहीं यार, तुम में से कोई चैट मास्टर भी नहीं है यहाँ पे. फिर भाई फुल सोचते हुए एक सेकंड, अच्छा गुकेश ऑन द बोर्ड है ही नहीं यार. इंटरेस्टिंग. हु डू यू वांट, गुकेश और विदित टू विन? यार ये तो सस्पेंस है ना. हु डू आई वांट टू विन, मुझे भी नहीं पता. विदित कैमरा को पूरा शाहरुख खान का एक्सप्रेशन देते हुए भाई इफ दे यूज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स एंड पेपर में मूव्स क्यों लिखते हैं? दैट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कि भाई व्हाई डू वी नीड लाइक दी स्कोर शीट्स नाउ? आई थिंक द मेन पर्पस इज टू हैव क्लेम्स. यू कैन क्लेम कि भाई देखो 3 मूव रेपिटेशन हुआ है, आई हैव इट रिटन ऑन द स्कोर शीट. 3 फोटोग्राफिक ड्रॉ हुआ है, 3 बार सेम पोजीशन आ चुकी है. दैट इज द मेन रीजन. उसके अलावा तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर रीजन नाउ टू बेसिकली लेट्स से राइट मूव्स. It might be logical if you're playing on a board जो digital नहीं transmit हो रहा, but usually top level पे there is no need. But yeah, I think claim करने के लिए चाहिए. Maldives going bankrupt. यार मैं इतना बैंक बैलेंस मैंने मालदीव का भी चेक किया नहीं है रिसेंटली, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस. समय को कॉल करो भाई. समय शो कर रहा होगा यार अभी. आई थिंक यूजुअली शो ही कर रहा होता है. यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और रिफ्रेश होने के लिए चेस देखने आया. 1 घंटे से यही देख रहा हूं भाई. सौरभ भाई देखो ना, द थिंग इज अगर तुम प्लेयर्स का टाइम देखो 40-40 मिनट है. सो अगर 1 घंटे में हमें इसका भी आइडिया लग जाएगा किस तरफ जा रहा है. फाइनली गुकेश आते हैं आफ्टर लाइक 2-3 मिनट्स ऑफ द क्लॉक गोइंग डाउन. आराम आराम से आ रहे हैं, बट बाद में वही 2-3 मिनट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू गेट रियली रियली शार्प वेरी क्विकली. 11 मूव हुए सिर्फ. दे हैव यूज्ड हाफ देयर टाइम. Vidit has used more than half his time, close to 55-60% of his time already. तुम्हें टिक्कू क्यों बोलते हैं? मेरा सरनेम टिक्कू है ऋषभ भाई. प्राग गेम थोड़ा एनर्जी लाओ यार. सीम सो ड्राई. सॉरी यार, माफ करना भाई, गलती हो गई. तुम्हें टिक्कू क्यों बोलते हैं? हो गया भाई. यार मेरे ही बोर्ड्स और मैं चेस देख रहा हूं भाई. बोर्ड्स और चेस गो हैंड इन हैंड भाई, हैंड इन हैंड. बाय द वे, Pragg has still not played. Ninja bhai, can we have Pragg on camera for a second? तो भाई चिल लग रहे हैं काफी. Can we have Pragg on camera? He's been thinking for like, I don't know, 20-30 minutes now. कुछ तो क्रेजी खेलने वाले हैं. इतना लंबा डीप थिंक. And by the way, they have also only played 13 moves. तो ऐसा भी नहीं कि यहां पे कोई चमत्कार हुआ है.
और यहाँ पे तो ऑलरेडी अटैक लगने के चांसेस है, तो यहाँ पे तो इट माइट बी इवन मोर इंपॉर्टेंट. विंसेंट विंसेंट ब्लंडर भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. Chat again. H5 cannot be played because bishop H4. घोड़ा गया, घोड़े को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है. Rook H3 and then E5 and everything is kind of opening in black's favor. So he plays bishop D3. He played the move bishop D3. Exclamation mark from Pragg. Pragg finds the best move. Chat. Pragg is in epic form. Chat, मैंने कल भी कहा था, I know Pragg lost yesterday, but कहीं ना कहीं पे whatever I've seen so far, as compared to the all-rounder, somebody who never makes a mistake, finds those best moves back on back on back, I think Pragg seems to be the most all-rounded and confident player as of now. And the idea is, अगर हम ये H4 pawn मारते हैं, comes queen G4 जो हमने देखा, and अगर bishop जाता है कहीं पे भी, let's say E7, then rook H7, king takes, queen takes, and it is mate. And I think यहाँ पे आपको knight मारना पड़ेगा, but queen G3 and the attack still exists. I think E5 के बाद था, sorry भाई. I think मैंने E5 के बिना ही sack कर दिया था कुछ. हाँ, पहले E5 and once black plays something, then rook H7. हाँ भाई, थोड़ा जल्दबाजी में ऐसे काम जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. So that's why I think ये बहुत तगड़ी मूव है. Queen coming to G4 is a threat anyways. And I think white can even consider castling queenside now. Now it becomes an option at least. Draw or someone to beat other, choose only one in Guki game. Draw or someone to beat other. ये क्या है भाई? I think, अच्छा, okay, I understood. I think एक प्ले जीत जाए तो मजा आएगा. I think देखने में मजा आएगा. ड्रॉ में उतना फील नहीं आता. सो आई वुड लव कि एक प्लेयर कोई जीते, कोई भी हो, वील गेट टू नो, बट जीतना चाहिए कोई. नोदिबेक ब्लंडर्स इन विनिंग पोजीशन. अरे तभी वो उज्बेकिस्तान वाले चैट से भाग गए. क्या ब्लंडर किया उन्होंने? रुक D8, बिशप B4, AB4, और यहां पे नाइट F7 मारना था उनको, बट उन्होंने खेला नाइट C5 एंड नाउ ही इज लूजिंग. वाओ, डेविड नवारा विनिंग आफ्टर क्वीन D4 apparently against Nodirbek, but queen D4 मूव निकालना इतना आसान नहीं है, because bishop F7 अलाउ करना पड़ रहा है, and to calculate कि भाई this is okay, it's not always easy. So देखना पड़ेगा if Navara will take on D4. So going back to the game of Pragg, has Rapport played? Not yet. Thinking 30 मिनट लेने के बाद भी Pragg is ahead on the clock. That is great news. And मुझे लग रहा है कि chat Pragg will win today. Anybody joining right now? चैट जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए सवाल है. हु इज इंडिया नंबर 1 इन दिस मोमेंट? नाम लिखो भाई. हु इज इंडिया नंबर 1 इन दिस मोमेंट? तुम्हें पता है क्या? अगर नहीं पता तो गेस करो भाई. सो हैप्पी फॉर नवारा, कह रहे हैं एसएसजी. इंटरेस्टिंग. वेर इज सागर? सागर इज इन प्राग एंड इन द ओशन. प्लंडर वीडी के सामने नोदिरबेक. अरे यार वो अलग चीज है. अर्जुन इज इंडिया नंबर 1. एब्सोल्युटली करेक्ट भाई. अर्जुन आज शेंजन मास्टर्स में गेम जीते. ही क्रॉस्ड गुकेश, क्रॉस्ड Pragg, क्रॉस्ड विशी एंड इज इंडिया नंबर 1 राइट नाउ. सो यहां पे हम Pragg फिर से इंडिया नंबर 1 के लिए फाइट कर रहे हैं. कल अर्जुन फाइट करेगा फिर से, फिर Pragg करेगा, फिर अर्जुन करेगा. तो ऐसे करते करते मुझे लग रहा है एक दिन हमें भी चांस मिलेगा चैट. सो अब तो हर 6-6 घंटे में इंडिया नंबर चेंज हो रहा है. सो अर्जुन भाई अभी इंडिया नंबर 1 है बिल्कुल, एंड Pragg भाई बिल्कुल इन लाइन टू काइंड ऑफ कैच अप एंड गेट ओवर दैट रेटिंग अगेन. सो ये बड़ा मस्त लगेगा देखने में. लेट्स गो बैक टू द गेम ऑफ विदित अगेंस्ट. कुछ हुआ क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ है यार. मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये लोग इतना स्लो कैसे सोच रहे हैं यार. वो नवारा जी भागते हुए टॉयलेट की तरफ ऐसे फुल जोर से भागे. क्या उन्होंने क्वीन D4 मारा? नहीं मारा. नवारा जी ने क्वीन D4 मारने की हिम्मत नहीं हुई. क्वीन C7 खेला एंड नोदिरबेक इज विनिंग और वेरी इन गुड पोजीशन येट अगेन. सो नोदिरबेक भाई की किस्मत अच्छी थी वहां पे. गोइंग बैक टू VD अगेंस्ट गुकेश. गुकेश स्टिल थिंकिंग. निहाल सही नहीं एंड में अभी यार. क्या कैन वी हैव द बोर्ड? भाई बोर्ड कहां है निंजन भाई? बोर्ड लगा दो यार. हाँ, board and we are back. Oh, Vidit looks angry for some reason. Can we have Vidit full screen? Sorry, Nanjan bhai. He looks like very angry for some reason. ऐसे गुस्सा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों.
नहीं chat, he looks a bit अरे नहीं, now he doesn't look angry. He looked a bit angry for a second. जानता है मैं कौन हूँ? हाँ, जानता है तू? हाँ भाई, दिल्ली से हूँ भाई, मैं दिल्ली से भाई। भाई विराट कोहली मेरा फेवरेट है भाई, पता है भाई, तू जानता है मैं कौन हूँ भाई? जस्ट किडिंग भाई। चेस बोर्ड दिखा रहे, दिखा दो भाई, बोर्ड दिखा दो चैट को भाई। Better have a limit on how much to drink. नहीं यार, I think whatever he thinks is best for him, he should follow. VD working on his stare. VD is not the guy to have a very ऐसे खतरनाक stare. No, he's not that guy जो ऐसे घूरेगा तुम्हें. Like I think stare लोग ना नोदिरबेक को सूट करती है. It suits like Hikaru, but not VD. VD, Gukesh, Pragg, तीनों, अर्जुन, सारे कैसे शरीफ लोग लगते हैं यार. नासिक का स्वैग, अरे नाइस. निहाल ओनली प्लेइंग ऑनलाइन नाउअडेज, पता नहीं यार, देखना पड़ेगा. फिलहाल के लिए हम फोर्स जो गेम सामने है. और विदित भाई सोच रहे हैं. एंड चैट, अगर तुम्हें लग रहा है व्हाई इज वीडी नॉट रोमिंग अराउंड टू मच नाउ, बिकॉज टाइम की कमी. एंड गुकेश गोइंग बिलो वीडी नाउ, बिलो द 40-minute मार्क. चैट 29 मूव्स खेलने हैं 39 मिनट्स में. एंड फाइनली ही प्लेस क्वीन टू E2, वन ऑफ द बेस्ट मूव्स इन द पोजीशन. गेट्स आउट ऑफ C4 tactics, defends the E4 pawn. And now if C4 I can take for free, so that's not an issue. And also still connects the rooks. And now bishop will be developed to E3 or G5 or B2. We'll see how it goes. And वापस VD पे pressure, 40 minutes है. Has to play 28 moves in those minutes. भाई स्टेयर है तो शैम शैंकलैंड का, बाप रे भाई, उसका स्टेयर देख के ना मतलब रात की नींद उड़ जाती है भाई. खतरनाक स्टेयर है सैम शैंकलैंड का, सोपिको का. लाइक दे हैव खतरनाक स्टेयर्स. Gukesh looks like gangster sometimes. Yeah, man. You know, when you have some crushing wins, तो gangster element तो अपने आप आता है. Yeah, let's go. IPL जीतेगा RCB, बिल्कुल भाई, यही उम्मीद ला के बैठो भाई, बिल्कुल. They're thinking now he has to. Oh, he played bishop G4 quickly. He plays it extremely quickly, not wasting any time. Now, will he play F3? Unlikely. Maybe he will play Queen E3, moving up. Queen E1 के chances कम है because he's already moved to E2. Would be a waste of move. Either Queen E3, Queen G3. I think that feels like the most logical maneuver here, because then you can kick the bishop back and then allow bishop h6, bishop G5, for example, Queen E3. The queen can later come here, attack the bishop, and then you can have these bishop h6 tactics, knight f5 ideas with mate on G7. So Queen E3 seems to be logical. Let's see Gukesh क्या खेलते हैं. F3 also a move though. It's not a bad move. लॉर्ड सेतु को भूलते नहीं भाई. It's very hard to compare. लॉर्ड सेतु को अगर स्टेयर कर दे तो भाई गेम खत्म. Sopiko has an extremely like not a very calm stare at all. I actually had a video on this on my channel एक बार में. I had a competition of stairs. मैंने Discord पे किया था अपनी, कभी शेयर करूंगा लिंक. भाई मस्त थी वो. उसमें सबकी स्टेयर हमने कंपेयर की थी वोट कर करके. भाई मस्त था वो. Nobody can beat Kasparov's stare. भाई Kasparov was insane. Shanklin's stare is like Ben Shapiro. भाई Ben Shapiro कहां से आ गया भाई शेयर्स में. Gukesh thinking again. VD भाई chilling, थोड़ा रिलैक्स मूड में लग रहे हैं VD भाई आज. Chat, based on the current position, what do you think? Who is likely to take this home? फिलहाल के लिए तो टाइम प्रेशर के देखते हुए तो गेस करना बड़ा मुश्किल है यार. एंड ब्लैक के लिए एक प्रॉब्लम है चैट. एंड हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आई डोंट हैव अ डेफिनेटिव आंसर. द प्रॉब्लम इज कि ये A7 पॉन हमेशा वीक है. How do I get rid of this weakness? I always have to keep the rook on A8 to defend this pawn. If I play B6, then that doesn't solve the problem. If I play A6 at some point, white can just take, and I get rid of my double pawn. You might end up with an isolated pawn on A6 in some cases. So it's exactly not what I want. तो कहीं ना कहीं पे मुझे feeling आ रही है कि white should be slightly better. ड्रॉ 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 ड्रॉ. गाना भी गा रही चैट, बढ़िया भाई. आप ओलंपियाड में कमेंट्री करोगे? करेंगे भाई, बिल्कुल यही करेंगे. होम क्या लेते हैं? ये क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? वड़ा पाव विल डिफीट इडली डोसा, ये क्या है भाई? F3 बेस्ट मूव. नाउ इंजन से F3 बेस्ट मूव है, बट उसका
I somehow still like queen e3. I like that maneuver. Practically, it's a decent idea. Bishop will drop to, I don't know, d7 for example, and now you see the bar going down slightly. So bar पे उतना हमेशा भरोसा नहीं करने का यार. bar पे अगर तुम सीधे जाओगे ना तो it's very hard to play chess according to the bar. But ऐसा कहते ही गुकेश खुद खेलते हैं f3. The bishop, instead of d7, my move goes to e6 quickly. So this will be interesting. What is his plan now? Very interesting moment now, because he has played f3. What now? And by the way, chat, look at this stat. So far, the accuracy. Chat, guess the accuracy of Gukesh so far in 13 moves. Guess the accuracy. Hope we have a result though. Hoping for it. Bharat Subramanian, crazy player, had some insane performance in the World Blitz. I think even Rapid he had good performances. Crazy player there. Future talent coming up for sure. Chat, accuracy for Gukesh is 99.7. So मतलब बिल्कुल 100 के आसपास ही खेल रहे हैं वो. बिल्कुल गोकुल भाई, बिल्कुल सही गेस किया आपने. So and Vidit is 98.3. So हल्का सा ना मतलब 98.3 है तब भी that is not enough. इतने लेवल पे ये लोग गेम खेलते हैं यार. That's insane. That's insane. यहाँ पे हम कह रहे हैं AI is taking jobs और ये लोग AI के लेवल पे खेल रहे हैं. भाई अलग ही लेवल के प्लेयर है भाई. Your opinion में बस उन्हें I think I already gave that. 69% नहीं होती हर चीज लाइफ में यार. भाई ये लोग अपनी विल भी लिखेंगे ना. I give 69% of my wealth to my wife. क्या क्या मतलब क्या हर चीज 69 नहीं होती यार. मेरी रेटिंग 400 है 27 तो कैसे करे भाई. अगर शॉर्टकट चाहिए तो भाई अपना कोई वेबसाइट हैक कर लो. वहां पे 27 कर लो भाई. इसको फिडे पे जाओ, हैक कर लो और कर लो भाई. दैट्स द इजीएस्ट वे. जस्ट किडिंग बाय द वे. वीडियो हैकर्स 99.9. शायद गेम के एंड तक कितनी होगी. Do I get samosa for this भाई? नहीं भाई, हमने पहले डिस्क्लोज नहीं किया था. By the way, B3 played. Excellent move. हमेशा हमेशा के लिए C4 का ऑप्शन उन्होंने निकाल दिया है. Now there is no C4 for black. He fixed the weakness on C5. And guess what will come next? Bishop E3 to attack the pawn. देखो चाहे चेस कैसी सटल है. मान लो ब्लैक प्लेज नॉर्मल मूव, ठीक है, H6 मान लो, ठीक है. Now comes Bishop E3. This pawn is attacked. And कोई भी इंसान कहेगा यार ये pawn attacked है, let me play B6 to save this permanently. But exactly what white wants. Suddenly ये अब देख लो A7 कितना weak हो गया. तो that's the point. मतलब it's like chess काफी strategic है. He attacks once, you defend. He attacks, you defend. He attacks, you defend. He attacks, and then you can't defend. So ये chess काफी complicated है. फिलहाल के लिए तो I think B3 पे अटके हम. Let's see how this moves now. Of course, he will not play at 6. That's what a nothing move. आज समोसा गिव अवे बिल्कुल करेंगे. चैट, आई विल गिव यू एन अपडेट ऑन समोसा गिव अवे. अभी हमारे लाइक्स हैं 236. एग्जैक्टली 369 लाइक्स पे वी विल हैव आवर फर्स्ट समोसा चैलेंज. एक बंदे को समोसे भिजवाएंगे. सो वो तुम्हारे हाथ में है चैट. 10 बजे से पहले कभी भी लाइक्स कर दो 369 एंड वी डू अ समोसा चैलेंज. लेट्स गो. 10 से बाद में होगा तो लाइक्स विल इंक्रीज. 400 पहुंच जाएंगे फिर. Let's see. 36 minutes for Gukesh, 38 for VD. VD भाई हवा में देखते हुए, सोचते हुए, कैलकुलेट करते हुए, दोनों प्लेयर्स पे प्रेशर. रैपोर्ट ब्लंडर कह रहे हैं जल्दी से एक बार गेम देख के आते हैं प्रग की क्या चल रहा है. हमने देखा था बिशप D3 कितनी खतरनाक मूव है और रैपोर्ट ने खेला है नाइट टू C5. Is that a blunder by Rapport? Chat, let's have a look. First of all is my question कि यहाँ पे E5 possible क्यों नहीं है? Because if black takes, we can take. But the problem is 9 takes D3 is check and bishop H4 is also a problem. That's why not E5. Now we can take on C5 first. Let's say pawn takes. Now comes E5 attacking the bishop. The bishop drops back and you can see how H5 becomes very strong. Now you can slowly prepare castling. I don't know what is the best move here. Is queen E2 possible? F4 is hanging, my bad. So probably first we defend this, let's say knight CE2, and then we move the queen, castle, even H5, and white does seem to be better because the bishop is completely blocked. अब white को pressure रखना पड़ेगा इस bishop को block रखने के लिए. There might be better moves as well यहाँ पे. For example, just bishop C2
also logical try. यहाँ पे black को सोचना पड़ेगा. Does he play passive or does he take on c3 and kind of put pressure here? But again, h5 is incoming, queen g4 is incoming. It's going to be extremely difficult. It's not exactly a blunder, but definitely not the best move from Rapport. So for Pragg, clearly 11 minutes ahead, 26 moves to go. They have to play it in 31 minutes. It does feel like Pragg ke chances better hai. And again, look at the center, man. Look at the center. Look at the bishop pair pointed towards the king. Look at the h pawn coming up, the open rook file, the queen coming up. Khali हमने castle नहीं किया है. That is the only problem. उसके लिए बस queen move करनी है g4 पे कभी. Once this is defended, and then we castle. Once that happens, black को नानी याद आ जाएगी भाई. Yep, this is going to be very difficult. So Rapport के पास time बहुत कम है. Pragg definitely in the driver's seat as of now. So we'll see how this progresses, going back to the game of Gukesh against Vidit, where VD is still thinking 36 minutes each now. Friend request कहाँ भेजी है वन भाई आपने मुझे? Will trading be a good idea in Guki game? Trading where? Trading what though? What are you trading here? That's the question. Summer challenge होता है, we give out samosas to one person in the chat at a particular like point. वो like point है 369 lakhs. Rapport चला गया उठ के, उससे क्या होता है भाई? वो उठे या कहां पे भी बैठे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो हराएंगे. टूर्नामेंट एंट्री लेने के लिए मिनिमम रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए? आई वुड से 2600 इज द मिनिमम. उसके बिना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. देखो भाई कैसे ना, मतलब दोनों चैट पता है इतना. चेस इज सच अ क्रेजी गेम. क्रिकेट में होता है ना, मतलब यू बोल अ बैड बॉल, गलती होगी, चौका चला कोई बात नहीं. चेस में एक गलती एंड इट्स ओवर. दैट इज द हार्शेस्ट थिंग अबाउट चेस. मकसूदलू भाई आते हुए मस्त स्टाइल मारते हुए. एंड Pragg plays bishop c2. He did put the bishop back, did not go for bishop c5. I am not shocked, honestly. Bishop c5 was a committal move, giving up the dark square. So he plays bishop c2, the logical human move. And now it is black to play. I think queen g4 is obviously on the cards. Maybe not exactly right now because of e5, but yeah, queen moving somewhere, castles, and then h5 attacking on the spot. And black ka yaar, king side bahut weak hai. He's not even look at the pieces. Look at these pieces all on the back rank. White के सारे pieces कैसे developed है. सारे pieces developed. Queen भी इस move में develop हो जाएगी कहीं ना कहीं पे. Yeah, looks good. मेरा 2456 है. क्या है भाई आपका 2456? प्लीज डोंट से बैंक बैलेंस. अब रेटिंग बोलना भाई प्लीज. कैन Rapport walk on water? I'm sure he can. He can pour a glass of water on the floor and walk on it. It's possible. Arjun is the best. By right now, he actually is. He actually is India #1. So yeah, no argument there. Focusing on the game again. Yeah, still Rapport thinking, moving towards less than 30-minute mark. The game is sharpening up. Going to Vidit's game again. Still thinking now, VD. 34 minutes. I knew it. What did you know, bhai? Pin. You mean bishop g5? So पहले तो black to play है भाई. Black क्या करेंगे पहले देखना पड़ेगा. Bishop g5 is always a decent try. It should be combined with something else, maybe like queen here or knight f5. But yes, it does feel like a logical move. Will the candidates play candidates after this, or they have different tournaments? No. At least for the Indian players, this is the last tournament for the candidates. So directly इसके बाद candidates होगा. They all will have, I assume they will be training for the next 20 days. Looking at what went wrong in this tournament, in Tata Steel, what they can improve, because it's like a board exam. हमारे 1 April से start है और हमारे पास मान लो 10 दिन 20 दिन पेंडिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं लास्ट में तैयारी बेस्ट. तो ये वैसा सिचुएशन है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कौन जीता है. Sir, you're like someone who belly dances alone in front of the mirror. So I do love dancing, but not belly dancing, unfortunately. But I do love dancing. Not in front of a mirror, though. खुद को देखने की जरूरत नहीं है. कहीं पे भी चलेगा भाई. I bet Pragg beats all of them to Taisto's race. It is possible. Definitely possible. The queen b6 played by Vidit. So the idea is to first of all keep an eye out for this pawn, keep it defended, and also attack the pawn on b5. Chat, look at this. If you play c4 now, okay, the bar goes down because queen d6 back. And if rook d1, then even a6, and we are kind of breaking through
For example, takes, and honestly, black is better. I have control over the a file. You are not even developed yet. Your d3 pawn is weak, b3 pawn is weak. Knight क्या कर रहा है भाई? जब भी आएगा उड़ा दूंगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. And I like black suddenly. So that's why white has to sacrifice the b5 pawn and go for an attack. So यहाँ पे pawn sack on demand करना पड़ेगा गुकेश को. He has no other choice. So this is going to be an extremely sharp game now. Oh भाई, ये गेम sharp होने वाली है यार. Actually, Tikku streaming on Chesscom is better than his own channel. At least रेगुलर स्ट्रीम करता है भाई. अब मैं रेगुलर ही करूंगा भाई. सारे टूर्नामेंट स्ट्रीम होंगे यहाँ पे, सारे के सारे होंगे भाई. I think he has to attack. The question, he can't play f4 immediately because there is c4 check. So I would say bishop e3 maybe. And once he takes, just go f4, launch an attack. That is the only thing he can do now. And there is knight e4 tactics also. You take on e5, you open the rook's file and hope for the best. That is the only thing Gukesh can do now. VD is winning this pawn chat. If Gukesh plays c4, he would be clearly worse. Even a6 directly. Why waste a move with queen d6? So yeah, Gukesh will calculate this. But the problem is, to calculate all this, he will take some time. And if he's taking some time, he already doesn't have much. So pura time pressure mein jaane wala hai. They still have to play 26 moves in literally 33 minutes. Not looking good. खुद का भी चैनल है भाई. पहले चेसेस पे करता था मैं स्ट्रीम. That was the channel. Now this is my channel. Of course, इस पे ही स्ट्रीम करूंगा. I work for Chesscom now, and I also have a secret channel जो किसी को पता नहीं है, which is handled by my editors now. Why chess is not as popular as cricket? Because nothing is popular as cricket भाई. विदित की शादी कब है? अभी उसको पूछेंगे डेट. हम फिक्स करते हैं डेट. पहले कैंडिडेट तो जीत जाए. VD is black, Gukesh is white. आपस में मैच है. 400 की वॉचिंग है चैट. 360 लाइक्स पे करेंगे हम चैलेंज. जल्दी से करते हैं. जल्दी लाइक करो भाई. If you have to compare Indian youngster with Marvel hero, who is who? I think we did this exercise earlier. Tony Stark कौन होगा? बस ये बताओ. Tony Stark वो बंदा है जो भाई बहुत ऐसे ना cocky है, who's like, you know, बहुत confident, who self-made man, smart. Who do you think will be Tony Stark in the chess world? Pragg blunders the advantage. क्या बात कर रहे हो? अरे यार तुम लोग यार तुम शिवम भाई, तुम यार ऐसे डराओ मत यार. कमजोर आदमी है हम यार. मतलब ऐसे ऐसे देखो ना, दवाइयां खा रहे हैं भाई, दवाइयां खा रहे हैं भाई. तुम कमजोर आदमी को तंग कर रहे हो यार. Do you use a voice secret channel? I will not reveal any information, bhai. It's all secret. By the way, Gukesh does not play bishop e3. He plays king to h1. And this should be clear. This should be clear. कि वो idea क्या है? It is f4. It is f4. Ah, man. We are going to see a sharp game now. बहुत sharp game. आपका secret channel नहीं, किसी को नहीं पता भाई. Adiban, but with, अबे ये क्या यार? Adiban has money, I'm sure. Maybe not Tony Stark level, but for sure. And now Vidit, you can see यार दोनों players कैसे focused है. They know attack is incoming. दोनों को पता है. They understand कि attack आने वाला है. Gukesh like, I have to succeed with the attack, otherwise मैं pawn down. And Vidit chops off the pawn. चलो भाई, अब आएगा मजा भाई. Pawn गया. And question mark दिखा रहा है. It's showing a question mark after bishop g5. Was this the plan of Gukesh? Niranjan bhai, question for you. How does black prevent doubling of these pawns after bishop g5? Oh my God, is Vidit worse? Gukesh is going to be better. Are you there, Niranjan bhai? There is no way to prevent the doubling and opening of the king side now. Right? Chat, Gukesh is pushing. As far as I understand this, Gukesh is pushing the game and VD is under huge pressure. If Gukesh finds bishop g5, I think he will find this. Ronak Sadhwani is Tony Stark. I kind of agree. Looks wise, yeah. He is confident as well. Yeah, he is confident. Maybe, but yeah, well, he's not still at 2-7-5-0. So yeah, but yeah, technically looks and attitude wise, I agree. मैन क्या ये प्यादा महंगा पड़ेगा विदित को
भाई ग्रीडी वीडी हमने बहुत सुना है, क्या ग्रीडी होना काटेगा उनको भी? अपेरेंटली चैट यहाँ पे बेस्ट मूव वाज नाइट टू e8, but that's such a difficult move to find just to kind of not have this move available. Yup, difficult choice. He takes the pawn and now we will see. And the problem for Gukesh is उनके पास time बहुत कम है, but bishop g5 is such a natural and he finds it. Gukesh plays bishop g5 and Vidit is under pressure now. I don't know, you can see a pump in his Gukesh's body language suddenly. कॉफी देख रहे हैं कि नहीं, पूरा suddenly हाथ वाथ हिल रहे हैं. You know, he's rubbing his knees like this ऐसे करके. You can see the confidence oozing through him. Vidit under huge pressure on Vidit now. Chat, just to point out कि क्या problem है. Anybody who's not understanding this, just to, let's say black wastes a move a6, ठीक है? We take on f6. Pawn takes forced, and now the king is opening up. White's pieces have a direct access to the black king, and now chat, who will find the best move? It should be very obvious what is the best move here. Come on, chat, nikalo. There are a few good moves, but the plan should be logical. Find the best move here for white. Pragg की game में जाएंगे. Pragg is also better, by the way. He'll go to his game soon. His Rapport is still thinking, but this game is sharpening up right now. Both players 30 minutes to play, roughly 25 moves. बहुत difficult. The idea is chat f4 indeed. बिल्कुल सही chat f4. The idea is to bring the queen, bring the rook. You also could start with queen e3 with a similar idea, but the idea is to bring the rook into the game, the queen into the game. The knight is already there, and this is looking extremely dangerous. So Vidit under pressure, clearly he has to come with some good moves. For example, I'll show you how difficult this position is. Okay, my logic was, let's go queen e8. Okay, but now again takes f4, and it's again clearly worse. The Indian's first preference for some reason is a5. And maybe I'm stupid, but a5. At first I thought शायद rook a6, कुछ rook g6 का defense होगा. But the idea is to play a4. Let's say you take. Let's say you play queen e3. The idea is to play a4. Who will find this as a human? यहाँ पे king की वाट लग रही है, हम a4 pawn exchange कर रहे हैं. And ba4 के बाद not takes बल्कि queen b2. So chat, जो ये variation इंजन ने बताई, this is not happening on the board. No way this is happening. So Vidit का काम बहुत 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 difficult है यहाँ पे. समोसा भैया, हाँ मेरा नाम समोसा भैया ही है भाई. अभी स्टॉल खोल रहा हूं मैं. 369 लाइक्स पे होगा चैट, और 10 बज गए भाई. अब 400 लाइक्स पे होगा. अब तूने डिले कर दिया चैट. If you get to 400 likes until 10:15 p.m. 400 like, 120 more likes, we'll do a samosa challenge and somebody in the chat will get garam samosas. Let's go. Let's hit the like button and get to 400 likes. Game sharp ho rahi hai and Vidit's time has fallen below 30 minutes. Vidit a5 is impossible. I'm not even like it's impossible. A5, a4, queen b2 सब निकालना. It's impossible. There is no way he'll find it with 29 minutes. It's such an Indian idea, yeah, to kind of go for counterplay here. Activate the queen, pick up these pawns, allow white to completely go queen e3, queen. Yeah, human tendency is go queen e8, queen d7, have some sort of defense. $250 लाइक से कोई चैलेंज नहीं था भाई. कमेंट्री करते हुए दिमाग चलता है, खेलते हुए नहीं भाई. ये बात है. दूसरे के पीस घुमाने में बड़ा आसान है भाई, अपने पीस घुमाना बड़ा मुश्किल. Madrid Mania is very excited about the win for Gukesh if he wins. Chat, by the way, who do you want to win? ये मैंने पूछा कि who will win, but who do you want कि जीते? तुम्हारे दिल कहाँ कहता है? I want to learn. Gukesh against Vidit. Who do you want to win? How is winner selected? I will ask a challenge and one guy or girl will win. C4 कह रहे हैं. C4. What? Here. But B takes. I'm not so sure about this. By this looks like a free pawn to me. Looks like a free pawn to me. You might get a pass pawn, but ये ज़्यादा दूर जाएगा नहीं pass pawn. Oh, Vidit struggling. 28 minutes for him now. Vidit. VD, Gukesh, Guki. I want to draw. So asking, भाई
यार गो ऑल इन, नो गो ऑल इन भाई, पोकर खेल रहे हो तो ऑल इन करो ना यार। अरे प्रग, मैं इस गेम की बात कर रहा हूँ, प्रग अलग गेम खेल रहा है भाई। पता लगे प्रग बीच में आ रहा है, हटो परे तुम दोनों, मैं जीतेगा ये गेम। दैट मेक्स नो सेंस। Vidit Gujrathi from Maharashtra, Gukesh my favorite after Vishy, Guki, VD, चैट के पूरे सपोर्टर, दोनों प्लेयर के बराबर सपोर्टर लग रहे हैं मुझे। Pragg gaming नजर मारते हैं, then he'll come back to this game quickly. By the way, Bishop Queen A5 खेला है Rapport ने, so he wants to take on C3. Pragg can simply play Queen D2 and he's still much better in the position and the clock. The game is complicated, but he's better. Yeah, this is not as simple as the VD advantage, the Gukesh advantage, but it's a higher advantage. It's like you can win more, but you can also spoil the position. But wahan pe the advantage is very clear. Yahan pe it's not so clear yet. The game is a bit more complicated. And now I think Queen D2 will happen. You can castle and take a bit more risk, but I think Queen D2 is very human and very logical. So Pragg still better up on the clock as well. Going to the VD game. By the way, one look at the Vaishali game, where we saw till H4, H5, Queen H4, threatening this check maybe and takes. Knight G5, and this is the current position. And Vaishali does seem to be better. The bishop cutting across the king, and she has more time on the clock. It's looking awesome. Going back to the game of VD, 26 minutes now. Magnus is not playing this Guki because he's young and fearless. Why not Bishop D2? कहां पे, किस गेम में? ड्रॉ का रेटिंग इंडियन प्लेस की कम नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट से पहले, ये बात भी सही है, बट कैंडिडेट से रेटिंग बिल्कुल भी मैटर नहीं करती अब. Once you have qualified for the candidates, the rating is irrelevant, chat. So from our perspective, I would love to see a fight. I would love to see somebody win this. Gudit must win. Gudit भाई ये सही था, बढ़िया भाई. ये कौन बंदा गुडित है, बस सही प्लेयर लग रहा है भाई. क्या प्रग वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे? टोटली अ पॉसिबिलिटी. बिशप D2 प्रग की गेम में खेल सकते हैं, बट यू आर मूविंग योर बिशप बैक. The bishop on E3 is a good piece, and let's not move our pieces back. समझ रहे हो? And then black can also have some control over dark squares. वो नहीं चाहिए. Pieces पीछे नहीं चलने, आगे बढ़ना है. लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो भाई. ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन. स्कूल खत्म, मूव ऑन. कॉलेज खत्म, मूव ऑन भाई. एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी भाई. एक्सचेंज सैक हो सकता है क्या? एक्सचेंज सैक कहां करे भाई? आपका तो फेवरेट वीडी है भाई. ऐसा नहीं है. द रीजन आई ऑलवेज से वीडी ऐसा फेवरेट इज बिकॉज़ ही इज अ बिट ओल्डर, सो ही हैज लेस चांसेस. फॉर एग्जांपल, जैसे it's hard to believe somebody who's 45 or 40 will be as strong as somebody who's 25 because of the age factor. So if I had to choose, all things being equal, VD would probably have less chances in the future. But overall, I want an Indian to win. That is very important. Well, Indian chess growth is my number one goal, and I really need some Indian to win this. क्वीन सैक भाई, क्वीन सैक कहां हो रही है भाई? ग्रुप प्रोजेक्ट with older, exactly 28 is older, man. That's the harsh life. By the way, Vidit finds A5. No way he found A5. No way he found A5. No way. No way. भाई भाई मान गया भाई. If he finds this idea, no, जो इंजन का ये A4 and so on, if he plays A4 next and gains enough counterplay, man, मतलब भाई सल्यूट देना पड़ेगा भाई, literally. मतलब what? How can he find? Exactly, it's a crazy idea. Like, मतलब man, it's good news कि इंडिया के सारे प्लेयर खतरनाक फॉर्म में खेल रहे हैं भाई. What a find by Vidit. Chat, just go, let's go deeper now. अब इतने निकाल दिया है, now it makes sense to go deeper. So by the way, Queen E3, Gukesh saying तू बेस्ट निकाल, मैं भी बेस्ट निकालूंगा. So Gukesh also finds the best move, and now A4 is the plan. And let's say he takes, you take, and now you take on A4. Now you have to play Queen to B2, attacking the C2 pawn. We are going with the engine's first preference with the best moves possible. Okay? Trying to see where the engine leads us. Okay? Let's see. Now the best move F4. Okay? And यहाँ पे E takes F4, Queen takes C5, and Queen to E5. So this must be the idea. Now you can see that
a4, queen b2, queen e5 coming into action. And chat, question for you: should Gukesh play queen takes e5? Should Gukesh play queen to e3? Come on chat, question for you. कैसे मिला ये मूव वीडी को? यही क्वीन बी टू क्वीन ई फाइव देखा होगा उसने. He is a strong player, man. That's why I said VD is an epic form this year. Epic form this year. Wow, man. That was a crazy find. I am really impressed. भाई साहब क्या मूव निकाली a5. Your king side is getting blasted open and you kind of play a pawn on the corner of the queen side, man. Insane. Yes, you do not trade queens. This is exactly what VD would want. And now the game, you can see it's better for Vidit now. So from Gukesh's perspective, you want to actually play queen e3 or something like this and maintain the pressure. And then you can think, okay, can I move my rook up? Not yet, because a1 hangs. And then you see kya karna hai. So the game is not over. Vidit finding the best move a5. And this means the game is on. The game is on. But the pressure still on VD. He has less time on the clock. White ke moves are very obvious, chat. You know, bishop f6, queen h6, f4. Black ke moves not so obvious. So he has to take time to find these out. And kab tak nikal payenge? That is the problem. Kab tak? Man, this looks crazy. I am really impressed by both players in this game. What a game overall. Oof. And look at VD, fully intense, thinking. Man, why Fabi Karu not playing? Because they probably had no need to play. हे भगवान ड्रॉ हो जाए कह रही है जोरा गेमिंग. नहीं, ड्रॉ नहीं चाहिए हमें, विन चाहिए भाई एक मिनट के लिए. हमें एक शार्प गेम चाहिए, क्रेजी गेम चाहिए. अब ड्रॉ हो गया तो हो गया भाई. Yo, Pascal bhai, come on, Gookie. Show other games. Bilkul. Let's have a look at the Pragg game and come back to this. Nothing has happened in the Pragg game. That's why we are sticking to that game, because Pragg game bhi bahut slow chal rahi hai. So Pragg is still thinking. Let's go back. I don't know, man. Let's go to Vin's game. This is moving really fast and excited about this right now. Vaishali game pe look, King h1 khela hai. Very interesting, but King h1 not so sure, because h file might open up. And then you might have this. So I assume she wants to play h6 check here. We'll have to see how it goes. So King h1 probably not the best move there by Vaishali, but we'll come back to this. Still thinking VD. 17 move हुए हैं white के, 16 move हुए हैं Vidit के. So Vidit has to play 24 moves in 22 minutes. Man. Glad to see you back. I am indeed back भाई. अब बस यहीं पे हम सारे टूर्नामेंट स्ट्रीम करने वाले भाई. I support Gukesh. कह रहे हैं मिस्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ. With bhai, not so happy with this position still. Man, poll का क्या चल रहा है भाई? पोल में 1400 वोट है. 46% पीपल से गुकेश विंस, 31% से विदित विंस, ड्रॉ से कहते हैं 23%. अलाइंस विद द वाइट पीस गुकेश हैज एंड द पोजीशन ही हैज राइट नाउ pretty much aligns. Come on, 21 minutes now. It's looking extremely dangerous for Vidit. Based on the clock, he did find the best move. But can he find a4? Continue with the best plan. Difficult. Gukesh is definitely a beast, by the way. Never forget, 8 on 8 in the Olympiad. 8 on 8. Man, defeating Caruana, what not? Insane. अबे टिक्कू कहां से पनौती बन गया भाई? दोनों इंडियन खेल रहे हैं. आज तो लिटरली इम्पॉसिबल है पनौती बनना. 10 मिनट का डिफरेंस या 11 मिनट का एक्चुअली. पता है चैट, निंजा भाई, आर यू देयर? व्हाट इज द मोमेंट इन योर क्लॉक व्हेन द टाइम गेट्स टू यू? आई विल टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग. मेरे लिए दैट्स द 19 मिनट मार्क. तब मेरे दिमाग में ना स्ट्रेस लगने लगता है मुझे. उससे पहले आई एम फाइन. व्हाट इज दैट मोमेंट इन योर क्लॉक इन अ क्लासिकल गेम जहां पे स्ट्रेस आने लगता है दिमाग पे? 3 मिनट बाद. 3 मिनट. रंजन भाई कैजुअली सेइंग 3 मिनट्स. मेरे को तो 19 मिनट पे ही स्ट्रेस आने लगता है भाई. 19 जैसे मैं देखता हूं ना, बिकॉज दैट्स द मोमेंट व्हेन द क्लॉक स्टार्ट्स शोइंग सेकंड्स. तो सेकंड्स जब दिखने लगते हैं ना, तो भाई डर लगने लगता है.
And that's the moment VD is almost there. By the way, he plays a4. Why VD finding all these crazy moves? That I know he's a top 15 world player, but that was not easy to find, man. Not easy to find all of this crazy concept by Vidit. Wow. He finds it with time to spare, yeah. Gukesh Gujrathi wins. Now Gukesh thinking, okay, what do I do? Do I take on f6? I think dono marne hi padenge one by one. He has no other plan. Man, this game is exciting game, man. This is what I wanted actually. Something exciting, something crazy. As a dull draw nahi hona chahiye, bhai. Both players at each other's throat over the board, literally. Why when you found no, the thing is it's easy to find a4 once you have played a5, but a5 a4 pura plan nikalna was next to impossible. So that he found all of this entire plan, I am really impressed. This gives me huge hopes. Yeah, matlab ki Vidit is in great form indeed. My time never goes down for 25 minutes. Karthik bhai, because he gets mated before 25 minutes. Awesome. VD सब prep secret रखा है कैडेट्स के लिए. I am not so sure about that, Mr. Unknown D. I do think कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिखेगा तीनों players का. They will not play something completely random. They will try to avoid the main lines of their prep, but they will play kind of similar stuff because otherwise फिर वो they're not learning anything about the openings. This is great practice also. Became a fan of Guki from Olympic performance. Guki Chad performance, I agree. Just imagine they get up and start. भाई ऐसा कुछ नहीं होगा. Chess players are usually बहुत काम होते हैं. There are very few players, who have these stares, and they are usually very irritating players in general. मेरे को तो पसंद नहीं है कोई मुझे stare करे. Indian players बहुत usually down to earth, calm, अच्छे रहते हैं. They're not those controversial players, and yeah, I mean, usually you will never see Indian players try to, enter these zones. वीडी को और टाइम दो राकेश भाई. राकेश भाई का यहाँ पे स्कोप नहीं है अनफॉर्चुनेटली. अगर ये समय की स्ट्रीम होती तो काम करता, बट दिस इज नॉट समय स्ट्रीम भाई. ये जो स्ट्रीम है इसमें हमारा टाइम हमारे हाथ के बाहर है. 500 वॉचिंग चैट. चैलेंज करते हैं भाई. चैलेंज भाई चैट. ठीक है, रेडी हो. 10-14 हो रहे हैं. 10-20 तक 6 मिनट में 420 लाइक पहुंचने. डॉट 100 लाइक्स चाहिए. If we get 100 more likes, एक बंदे को समोसा चैलेंज भाई. क्लियर चैलेंज है. एक लाइक भी कम नहीं चलेगा. We have to reach 420 likes and एक बंदे को समोसा. Let's go. Do you think Nepo Nakar watching this closely? 100%. Nepo, Nakamura, Caruana सब और उनके seconds ये टूर्नामेंट ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए. Why do you think I'm talking in Hindi? ताकि वो मेरे एनालिसिस ना देख पाए भाई, कुछ सीख ना पाए मुझसे. That's very important, by the way. My rating goes from 114 to 1 rated. Crazy भाई, congrats. पार्टी कहाँ है? 420 लाख चाहिए चैट उसके लिए. Okay, now Gukesh going into deep thought. What is Vidit's plan? It's very much possible he did not see this move a4 because not a move you consider. Yeah, once you're trying to attack on the king side, you don't even think about a5 a4. Now he's like, bhai. At first, he might have thought maybe rook a6 is the idea, but now a4. Okay, so what is the plan of a4 now? So now he must be going deep into the variation that, and he takes the pawn. He takes the pawn. Let's see now what happens. Chat, critical moment. Oh, Vidit takes it. I thought queen b2, but he takes on a4. Okay, now what? Probably rook a b1 could be a move. You could also play rook a e1 and completely ignore the king. Actually, that's also possible, yeah? Just rook a e1 and focus on the king side. Bhai, isko yahan ruk ko rehne do. Because White's plan is on the king side. Pragg game 1, look at the Pragg game. Bilkul. And by the way, queen d2 plays as we thought. And now comes queen to b4. And chat, no points for guessing what is the obvious move Pragg played. Come on, chat, let's go. What did Pragg play here? b2 pawn attacked. What should we do? c4 pawn also attacked actually. But Pragg plays the obvious move, and that is castling queen side. He castled queen side, prepares an attack. If queen takes c4, हमें फर्क नहीं पड़ता. We will play h5 and go for an attack. Bishop c3 मार दे, कोई बात नहीं. At this point, not only can we take with the pawn, we can also take with the queen.
queen takes, pawn takes, and we are still better. And actually, we are attacking without the rooks, without the queens. हम still attack कर रहे हैं because black के pieces ही develop नहीं है. And this is still very dangerous. I'm threatening to take. I could have rook h6 come in. I could have e5 come in. Bishop attacks the pawn. Bishop attacks the knight. Rook attacks the pawn. This is still not easy, even without the queens. And as black, yeah, it's looking very dangerous. And 19 minutes hai sirf. Rapport has to play, just putting things into context, he has to play 24 moves in 19 minutes. In a sharp position where his king is getting destroyed. Yeah, he might survive this, but unlikely. Going back to the game of Vidit against Gukesh, जहां पे Gukesh अभी deep सोच में, तब तक वैशाली game पे नजर मारते हैं. Nothing has happened. C3 played, still going on. Let's go back. Still thinking. He's cuffing. He's definitely not in perfect shape, Gukesh there. We can see him cuffing and sneezing. tick long castling and tick. Nice. That could be a meme. Nice. Ranjan bhai, isko dhyan rakhna. Castle was the move, chat. Bilkul sahi sabne. Kaushik bhai, Saket bhai, Dhruv bhai. Absolutely true. Kuch nahi. I think he's not responding. He's just attacking. He has his own plan. I agree. And uske liye rook e1 could be a very logical move ki bhai, mujhe exchange nahi karna hai. I am just going to focus on my attack. You can do whatever you want on the queen side. Jo karna hai karo. I will just focus on the king side here. And if you attack this pawn, I will always have rook e2 to defend this way. So yeah, I think yahan pe attacking chances abhi khatam nahi hue hain. And bishop s6 still in the air. He's not doing this immediately. He's keeping the tension. He's not giving black a clear heads up ki kab main marne wala hu. Every move Vidit has to calculate ki kab marega. Why not rook takes a4? Now, if rook takes a4, queen takes a4, there's already pressure on c2. So white has to distract himself. Let's see what he plays. Oh, he takes. He actually took on a4. Queen takes a4 and queen takes c5. And that was not the best move apparently. And chat, yahan pe ek move hai Gukesh ke paas. In fact, do move hai. And one of those is queen to c6. And now you can see queen is also indirectly defending the knight if the bishop moves. And here, if you take, is this a draw? Are there chances for a win? Hard to say. And if you take on e5, let's say, then I take on c2. You take on f6. I take on d3. The rook is hanging. The rook moves to g1. I take back, you take back, and now important move here, queen to d4, and I save the game. And to be honest, this is still not, drawn. Oh, sorry, not this. Because white has the strong pawns here, solid king. Black has two pass pawns, connected pass pawns. So even this is not a draw yet. So ये बहुत ही complicated endgame होने वाली है all the way regardless of what these guys play. So time will play a factor for sure. Equalize, man. This is no way equal yet. अभी देखो तुम. हाँ, it was better for Gukesh now earlier, but it's not equal at all. I would say अभी बहुत complicated है. We have to see what they do. Brief look at Pragg. Has he played? Oh, by the way, Rapport did take the pawn. Greedy Rapport. And now Pragg is basically, he plays h5 immediately. Wow, so full pressure on Rapport also. बाहर देखो कहां कूद रहा है भाई, ऊपर तक. Rapport की गर्दन चला गया बाहर भाई, ये तो अच्छा लग रहा उसके लिए. Going to the game of back Gukesh again with it. Let's see what happens. Thinking 26 minutes for Gukesh, 19 for VD. They have at least played 20 moves now. So 20 move खेलने हैं Gukesh को 26 मिनट में and 21 move खेलने हैं VD को 18 मिनट में. दिल पे लगी कल की प्रग की स्ट्रीक, बट आज ही वो विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट करने वाले हैं 100%. चैट, तुम्हारे चैलेंज तो खत्म हो गया, तुम कर नहीं पाए. देख लो भाई चैट, मैंने कहा था भाई. How many moves to get 40 minutes? 21 moves for VD right now in 18 minutes. As you can see, that definitely will play a role here. Gukesh looking extremely calm. Chat,
Chat right now, looking at the position, what percentage chances would you give Gukesh of winning this game? What do you think? Kitna percent chance Gukesh wins this game? I would give Gukesh roughly, I think 40% chances of winning, 40% chances draw, and 20% VD winning. Maybe even 10%. Something like this sounds logical. Gukesh accuracy decreased. Yep. अब Gukesh की है 96.3, VD की है 96.0. भाई मुझे 7 साल का बच्चा हरा गया, कह रहे जोरा गेमिंग। भाई स्ट्रेस ना लें, 8 साल के बच्चे जीएम को हरा रहे हैं यार, तो आप और मैं क्या टेढ़ी खीर है। 90%, 40, 30, 16, अब 69 तो आना ही था। 90, 50, 60, क्वीन C4। भाई क्वीन C4 कौन सी मूव है भाई? फ्री का क्वीन नहीं देना यार। विदित इज विनिंग दिस, मार्क माय वर्ड्स, मार्क्ड भाई। मैंने अपने फोन पे मार्क कर लिया है भाई मार्कर से। 65, 48, 1%, 80%, 15%। शोएब, वैभव, ऋषभ, शिवम, अनुदिता, श्रेष्ठ, मोहक, एफआर क्या है पता नहीं, अश्मित, सब लोग प्रिडिक्शन दे रहे हैं, हर किसी की डिफरेंट है। विदित ने मस्त हाथ कर लिया। अरे भाई अभी तो हम गेम स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी तुम रुको, देखते रहो। भाई अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। %40 Gukesh, fifth win, draw 10%, Vidit win. अच्छा, interesting. That sounds about right, yeah, actually. What's your rating? My rating is 2200 Fide, bhai. VD gonna win this, man. VD का जीतने के लिए Gukesh को ब्लंडर करना पड़ेगा. It's impossible for VD to win this without Gukesh having a kind of a blunder. But Gukesh can win this gradually by putting pressure, and it might not require a huge blunder from VD for Gukesh to win this game. So logically, more chance for Gukesh. But yeah, the game is complicated now. So as we saw some variations जहाँ पे Black had 2 connected pass pawns, it's possible to lose. लकी जडेजा कैसे हैं आप? 100% ड्रॉ कह रहे कुसुम। अरे बिल्कुल ऐसा कोई चांस ही नहीं है। 97 एक ऑप्शन दिया है। 97 पे क्वीन C7 and the rook is now hanging, so I would not play 97 unfortunately. Interesting choice though, yeah, interesting choice getting out of the pin. Justin Eber is new chess platforms. ये क्या है भाई? Chat, come on, let's go. Game sharp होने 15 मिनट है वीडी के पास अब, और 21 मूव खेलने हैं. He better find like a defense right now, otherwise तो बहुत मुश्किल होने वाला है. अर्जुन भाई कह रहे होंगे कहीं ना कहीं कि यार दिल से, भाई तुम लोग ड्रॉ कर लो. भाई तो, लव यू अर्जुन भाई. अर्जुन भाई कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे दिल में यार, देखो भाई इंडियन भाई ड्रॉ कर लो भाई. ड्रॉ कर लो एक दिन के लिए, मुझे इंडिया में 1 रहने दो भाई. रैपोर्ट थ्रोइंग पॉन्स, कहां थ्रो, किसके मुंह पे थ्रो कर रहे हैं पॉन्स? ओ बाय द वे, क्वीन C4, H5 एंड B5 प्लेड. वाओ. So that's an ambitious move. It's like saying भाई तुम्हें जो करना है करो किंग साइड पे, मैं तो करने आया अटैक. Interesting choice, yeah. Because the thing is, black is not set up for an attack somehow. He has 3 pieces in the attack right now. I can take care of one immediately. So it and there are tactics here. And I have E5 tactics as well. E5 looks like a very good move, honestly, actually, because this will become loose, this will become open. Yeah, E5, yeah, the bar kind of agrees. E5 looks very strong immediately, actually. So I do think Pragg should just win this. So unfortunately, I think Pragg will overtake. Unfortunately, Arjun, I think he will overtake him, and then Arjun ko kal dobara chance milega to kind of win and take India number 1. And I think some people are thinking कि भाई why this constant India number 1 race? क्यों हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं? हमें टूर्नामेंट के एंड पे देखना चाहिए ना. The thing is, competition से everybody is motivated. कोई बंदा 2751 पहुंचा, अरे 2753, 2755, 2758, ऐसे करते करते सारे इंडियन 2760 पहुंच जाएंगे भाई. तो ये हमारा गोल है भाई. VD, by the way, was almost played something there. पर Gukesh जीता तो सोल लीड करेगा. हाँ भाई Gukesh जीता तो. By the way, what's happening in the game of
Parham Maghsoodloo, because Parham Maghsoodloo is leading the event. Oh, he's apparently slightly worse here. So if he loses, that would be good for in terms of tournament standings. Yeah. So going back to the game of Prague once, kuch hua kya? No, nothing has happened. Let's go to Vidit against Gukesh ek bar. And he plays Queen C6. He plays Queen C6. Now the choice is for Gukesh. Does he go for this position, jahan pe he's better, but not much better, and winning would be difficult? Or does he go for this line, Queen E5, Queen C2, Bishop F6, Queen D3, Rook G1, Pawn takes, and Queen D4, jahan pe he is maybe slightly practically has more chances to win, but also has chances to lose. So this is going to be an interesting choice for Gukesh. Knowing Gukesh, how he has played so far, I am going to assume he goes for the dull choice, but he can prove me wrong here. Let's see. Queen D4 is also possible, by the way. Also possible. I personally wanted to maintain the C7, B7 pawns. I did not want to give them away because, again, I saw them as counterplay in that variation. So I was like, let's keep these pawns. And white ko ek tarfa advantage nahi dete. Let's not give him one way edge and thoda complicated rakhte game ko. Nodirbek Navara draw ho gaya. Okay, interesting. Vidit waited for Gukesh to leave to play his move. Really? Did that happen? No, I don't think so. यार ये चीजें मैं ऐसे लोग करते भाई. Now the comedy should be who reaches 2800 first. Absolutely agree. I would probably say it's a huge milestone that is 2800. We have to kind of divide it into two parts at least, like 2775 or world top 5 and then 2800. So 2800 would be world number 2. So it's a huge difference. So yeah. ये कौन सी नई थ्योरी मार्केट में लाए हो भाई? मैं थ्योरी लाता रहता हूं यार, बट सारे पीयर रिव्यू नहीं होते यार. ओके कम ऑन. क्या लग रहा है चैट? Which one? Chat, question for you. Will Gukesh go for the safe advantage or will he go for the risky advantage? Come on, Gukesh. Come on, chat. बताओ भाई. What do you think? Arjun rating is 2.51. Agreed. बिल्कुल. He's India runner right now. वो तो जीत रहा था भाई, एक टाइम पे ब्लंडर भी किया उसने, लेकिन ऑल राउंड जी कह रहे हैं बिजुरिया भाई, काफी इंटरेस्टिंग कोट है उनका. वुड लव टू गिव अ शाउट आउट टू दैट. क्वीन E7, यहां ना मुझे लग रहा है कि यार दिस इज काइंड ऑफ गोइंग इनटू ओपोनेंट्स टेरिटरी. सो व्हाट डू विल डू ऑन रूक E8? तो क्वीन को वापस आना पड़ेगा. सो ब्लैक शुड बी एब्सोल्युटली फाइन नाउ एंड आई विल टेक ऑन C2 नेक्स्ट एंड विदित विंस. सो that's the problem. You don't have time to grab this knight, and if the queen sack karoge, it is not enough. Black is completely winning here because of the pass pawns. So that's why I think yahan pe white has two choices. I think our third choice queen F2 bhi hai. You can defend the pawn, like that's also a choice actually. Yeah, so queen C6, queen E5, queen C2. I think 3 choices for Gukesh. Safe marega wo, safe one. Exchange incoming probably not the safe one. Pragg match. चिंता वाह भाई, क्या है, मतलब अलग ही गाने चल रहे हैं. By the way, looking at the game of Pragg, by the way, he has played my move E5. Wow, I'm so happy now. So he plays the pawn to E5. If black were to take, chat, you can see how the knight is loose. Khali queen se defended hai. And already I can think of ideas like, bishop C5, queen C5, and then knight. कौन से knight से खेलूं? I think knight GE4, forking 2 pieces. The queen has to go back to E7. I take on G6. And now I can imagine rook open on the file. This is extremely dangerous, man. Extremely dangerous. Do I? Oh no, Queen F4 का threat है भाई, उसका ध्यान रखना है. So probably rook D-F1 looks extremely strong here. Yeah, this looks very strong. And again, black cannot play bishop D7. It's hanging. Bishop B7. Oh. And yeah, rook A6, by the way. Attacking G6. It's just lost. So I think Pragg is very close to winning this game potentially. He could be winning in just 5 moves from now. And Rapport ka time dekho, baap re. Look at the time. He has to play 22 moves in 11 minutes. Baap re. And he takes on E5. Man, Rapport is going to be in a world of pain soon. Pragg is going to crush this game. And Gukesh still thinking yahan pe तीनों में से कौन सी choice वो खेलेंगे. From where those top players prep, I think they look at old games, their own games, all top player games, try to come up with novelties, new ideas in openings.
Why is this thing bad now? Why बिल्कुल भी नहीं. I think today would be a bad to say that. I think he's playing really well. Do you meditate? I unfortunately don't. कभी करने का टाइम मिलेगा. अभी तो यार literally I'm not kidding. I have 0 seconds free in the day. Like 0 seconds. Literally. दिन में इतना काम है. What do you think will be for US Chess? I think the Indian team is the favorite. US Chess team में they have top 4 players. Hikaru, Wesley, Caruana, and Dominguez. I think Dominguez doesn't play that much. Hikaru might not play anyways, and Wesley also doesn't play that much. So I think कहीं ना कहीं पे unity and overall teamwork में, and we also saw teamwork में कैसे Uzbekistan won the Olympiad. So teamwork is very important here. It's not about individual play. RCB नहीं बनना है. So that's why I feel कि कहीं ना कहीं Indian team on paper should be favorite. But actual में कौन जीतेगा वो टाइम बताएगा, समय बताएगा मैं. If Tikul takes my name, I will start prep for 2044 candidates. Bye, Gokul bhai, let's assume your rating is 1000. Yeah, 1400. Okay? It will take at least an investment of 10 to 20 crores for you to reach that level. Not 20 crores. Zyada ho gaya. Maybe, yeah, maybe even that much. It's not easy, bhai. What the hell? ये क्या कबाड़ है भाई, ये सब मत किया करो यार. What about Arun is lower rated by? He is rated 2721. So he's not strong enough to make it to the US team. That's how bad it is. Queen e7, there was rook e8. We already saw this. Queen e7, rook e8. So that doesn't work. Queen has to come back now, and I will take on c2. So unfortunately for Gukesh, he has 3 choices only. This, and this. He has to choose one. Board order, that's a very interesting question, chat. Very interesting question. I think board 1 पे होंगे हमारे Magnus Carlsen होंगे, ये सब होंगे. So board 1 I would place Pragg, because Pragg is the most fearless and has the best record against Carlsen and all these guys. I think I would place Pragg on board 1. Then board 2 पे you will end up playing people who are kind of solid 2700-ish. So I would place Vidit. Board, but Gukesh bhi to hai yaar. Gukesh bhi to hai. It's very hard, and he played so well on board 1 last time. Very hard to choose, actually. Very hard to choose. And Arjun is equally. I mean, this is the tough choice, man. Inti pinti ponti karna padega bhai kuch. I don't know. एनएम की तारीफ करूंगा. हाँ, वो हो सकता है. एनएम बन सकता है भाई. एनएम हो जाएगा. धोनी और विराट. नोदरबेक लूजिंग. अरे बाप रे भाई, उन्होंने इतने ब्लंडर. नोदरबेक ने 1, 2 और 3 ब्लंडर साथ में मारे. नाउ ही इज लॉस्ट ऑफ द बिशप d4. बढ़िया भाई. तभी उज़्बेकिस्तान वाले आए नहीं चैट में. गोइंग टू द गुकेश, सॉरी, Pragg गेम फॉर अ सेकंड. ओ, मारा है, एंड Pragg हैज प्लेड बिशप c5. ही इज गोइंग फॉर द वेरिएशन वी लुक्ड एट. He is going for the variation we looked at. So queen c5 played. Gukesh, by the way, doesn't look happy. He was shaking his head, I think, for a second. He doesn't look happy with his game. I think he now realizes कि game कितनी plus थी मेरी, and I spoiled my edge. Gukesh definitely must be mad at himself if that's the case. Knight g4 or knight c4 coming correct. I thought knight c4, but Indian was suggesting knight g4. Let's see which one he plays. Actually, it doesn't matter. Both are okay. Oh, by the way, did something happen in the game of Gukesh? Has he played something? Not yet. He's not happy with himself. When coming to classical, I kind of agree because of past performance, like how he played last time. I would also put Gukesh on board 1. But it's like, I kind of feel ki Pragg is also the guy who's kind of a bit more stable. Gukesh can have that odd loss sometimes. So, and he can have a couple of losses also. So maybe I would place Pragg on board 1, and I would place Gukesh on board 2, Vidit on board 3, and Arjun on board 4. Maybe currently, based on what I understand, that might be the better one. But to be honest, you could literally place anybody anywhere, and it would literally be the same. Okay, come on, Gukesh. You don't have much time. Going to the game of Pragg. Is he still? No, he's still not playing. Going to Pragg's game. Has he played something? Not yet.
उफ भाई Cookie is current clearly not well. Yeah, he's not that well. That's another thing. टेम्परेचर वहां पे 0 डिग्रीज है, 2 डिग्री है भाई प्राग में, सो इट्स इजी टू फॉल सिक देयर, स्पेशली इफ यू कमिंग फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे गर्मी होनी स्टार्ट हो गई. ओह स्टिल थिंकिंग मैन, टाइम कितना कम होता जा रहा है दोनों प्लेयर्स का. दे टेकिंग इट वेरी वेरी lightly. They should play now. Pragg is more, yeah, Gukesh can have more spectacular performances, but Pragg is more consistent. ऐसा मेरे को लगता है. I could be wrong on this. That's why I would put like Pragg on board 1. But it could be done either way. Oof. The pressure. First, the candidate starts from 4th April to 21st April. Vishy can also play it right. Vishy can play, but based on my understanding of how Vishy has played tournaments this year, last year, I think he will just, he will just kind of help the team. That's his main role here. It won't be the same by the way I see it. Praggnanandhaa board 3 and 4 would give us many wins against weak both of our teams. Krishna really can solve more. I agree, but I think if we want to win the candidates, kahin na kahin pe kya hoga ki hamare charo player barabar rated hai. They're all rated equally. So we should not, I don't think Arjun is weaker than, Gukesh or whatever. It's all about the style of play. Pragg is very stable, so he'll be amazing at board 1 or 2. Gukesh has that spectacular streak that he can have sometimes. So excellent on board 1 and 2. Board 4 pe to वैसे ही किसी को streak मार सकता है. Anybody can have that streak. So utilizing, if you have faith in your team, you put your, I think Gukesh and Pragg on board 1 and 2. I think so. हेलो भाई, कैसे हैं क्रिकेट शॉट्स भाई? ओ विदित भाई पूरा रिलैक्स करते हुए अच्छा है, क्वीन C6 बड़ा अच्छा है. गुकेश क्या समझा था? F6 मारेगा, हाँ शाबाशी देगा. I don't know भाई क्यों करता मैं सब ड्रामे. Viz is better than Gukesh positionally. Maybe that's true as well. So everybody has the advantages. किसका है ये तुमको इंतजार भाई? सारे एक्टर्स के पोस्ट दे रहा है वीडियो आज. A5 was critical. Yeah, he found a great move, man. वेद भाई का स्ट्रीक इन ECC, अरे वो भी है भाई, हर किसी का है. वही तो मैं कह रहा हूं, यू कुड रिप्लेस इट इजिली, ऐसा नहीं है. बट अगेन, जो मुझे इतना लग रहा है बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, आई वुड पुट Pragg board 1, Gukesh board 2, Vidit board 3, Arjun board 4. सिंपल. सस्ते गब्बर लग रहे हो? अरे भाई सस्ता गब्बर भी काफी फेमस होगा नहीं? निहाल, so 5th player जो qualify करेगा in the Olympia team, it will be 1 player out of Nihal, Hari Krishna and SL Narayanan. So based on what I understand, Nihal has the best prospect, again because he's the youngest and whatever, but it depends on the ratings at that point जब भी वो list team बनाएंगे. So I'm pretty sure एक fierce competition होने वाला है between Hari Krishna, Nihal and SL Narayanan for the final spot. So, and the final spot is important because they are the ones who will play in critical games. If somebody is sick, somebody is not in form, they will be helping us, and वो भी 2700 player है चारों. So in terms of rating, it's all equal. But who would actually be the one वो critical होगा देखने के लिए? By the way, देखो कितना pressure है chat. By the way, 12.5 minutes of Gukesh now. His clock is gone below Vidit's by 2 minutes now. Who has the best chance of candidates? One favorite, if we had to choose, would be Caruana. There is no doubt about it. But I do think favorites do not win always. Olympiad is in September, bhai. I think Budapest mein hai. FIDE ne recently dates nikali thi. Would be crazy. Who is current strongest Indian player? चारों डॉट बराबर है. Gukesh has no time. I agree. The thing is, जितना टाइम नीचे जा रहा है ना, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है. He will go for Queen C6 because that's the safe choice. So जितना टाइम कम हो रहा है, उतना इसकी प्रोबेबिलिटी is increasing. I would start studying for board. नहीं भाई, I don't want to studying for board. क्या करोगे यार? फेल तो होना ही है. I feel Arjun in board 1 makes draws and Gukesh and Pragg at lower board. वही है ना, you can think about it in any way. बहुत strategies possible है. Which one do you feel is best?
वो उस दिन उनको डिसाइड करना है. So there are many, you could place, Pragg and Gukesh both 3 and 4. They both have streaks and we win the Olympiad. Also possible. So it all depends on what you feel. And I think iska decision, Ramesh, Srinath, all these coaches who will be helping the team at that point will have more experience and they can take a better decision. हम लोग तो speculate कर सकते हैं भाई. हम लोग experts नहीं है. उनको ज़्यादा experience है. What have they done in the past? What has worked? ये प्लेयर क्या वीकनेसेस हैं. इमेजिन करो प्रग की वीकनेसेस रमेश से बेटर कौन जानते होंगे. वैसे अर्जुन की वीकनेसेस शीना से बेटर कौन जानता होगा. तो वही है ना. तो दे अंडरस्टैंड कि वो कौन से बोर्ड पे अच्छे रहेंगे. हम तो बस यहाँ पे भाई डिबेट कर रहे हैं. विराट इक्वल टू विदित भाई, ये बात तो है. स्टाइल तो है बंदे हैं भाई. देखा नहीं तुमने पोस्ट नहीं देखा. गुकेश प्रग गेम यार एक नजर मारते हैं तो गुकेश सोचते हैं. By the way, knight g4 played, queen goes to e7 and knight f6, exactly the way she looked at. अब यहाँ पे queen f6 आएगा I think, and yeah, I think rook df1 pretty soon, and black के pieces developed ही नहीं है, and white is literally just about to take on g6 and play rook h6. जब g6 falls, Pragg I think will be winning in 5 moves from now. I think he will be completely winning in 5 moves from now. तो ये गेम खत्म होने की कगार पे लग रही है मुझे, बट टाइम कम है, सो यू नेवर नो क्या हो सकता है टाइम प्रेशर में. वी सॉ प्रग ब्लंडरिंग इन वन मूव yesterday, so I'm not going to bet all my money on that. So let's see how it goes. Let's go to this game right now. How much chance for Chidambaram? No chance है. उसकी रेटिंग 100 पॉइंट कम है. So he's a great player. I have lost to him personally, so I know how strong he is firsthand. But unfortunately, he's a bit older and he's 2620 or something, if I'm not mistaken. I could be wrong though. रोहित शर्मा कौन है? रोहित शर्मा होगा I guess somebody who bosses other people around. Adiban? ए चलना, ये करना, वे करना, वे करना. Adiban feel like the guy who might do it because he's older and like maybe. Violent upload, I do upload by secret channel पे, and यही है मेरा चैनल भाई. अब what if your chess username crazy Martian है भाई? Who do you think is okay? India has the best chances for win this time. I agree. Why was it on board 4 and not Arjun last Olympiad? By last Olympiad में 3 टीमें थी. It was very confusing. By the way, Queen C6, जैसा मैंने बोला, जैसे ही टाइम कम हुआ, the probability of this move increased. Now pawn takes c6 and now white has a clear edge, but is it enough to win? We don't know. अब हम एंड गेम में आ चुके हैं और टोनी स्टार्क कभी भी निकल के टाइम ट्रेवल करेंगे. सो लेट्स सी क्या होता है. तब तक के लिए प्रग की गेम देखते हैं क्या चल रहा है. He has taken on f6, queen takes f6 played as we discussed. I would have played rook df1 here and went for the attack. They do have increment for move 40. तो कोई चक्कर नहीं है भाई. 2 दिन हो गए, अब तक दो मेरी मेंबरशिप, उसके बाद पक्का पढ़ना शुरू करूंगा. अपू भाई आपकी मेंबरशिप थी क्या? कल जीते थे आप शायद. मेरे को डीएम तो आया था. हाँ बाय द वे, मुझे 3 चिराग का डीएम आया है भाई मेंबरशिप के लिए. ये कौन चिराग आ गए? मैं कल मेंबरशिप के लिए देख रहा हूँ, चिराग ने मैसेज करना था. 3 चिराग का मैसेज आया मुझे, 3 चिराग का. हेलो भाई, मेरी मेंबरशिप. ये क्यों करते हो स्कैम तुम लोग भाई? जो बंदा जीतता है उसको जीतने दो ना यार, प्लीज ऐसे मत करो यार. By the way, Rapport भाई तो अपने बाल पुल कर रहे हैं लिटरली. प्रग भाई कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ द पोजीशन. क्या धोया है इस गेम में यार. चैट टीम, लेट्स डू अ चैलेंज. हमने समझ चैलेंज आज किया नहीं है. लेट्स डू अब चैलेंज एग्जीक्यूट करते हैं. चैट 10:46 है, ठीक है. यू हैव टाइम टिल 11 PM टू गेट अस टू 501 likes. 501 इज द टारगेट. अगर हम पहुंच गए तो एक बंदे को समोसा मेरी तरफ से. लेट्स गो चैट. 100 लाइक in simply 14 minutes. बहुत आसान टारगेट है with 600 watching. Let's go chat. एक बंदे का पेट भरो chat. Let's go. Oh, live rating is 2662. Wow. So he's increasing it constantly, but it will be difficult to increase it by 40 points or so. He will have to get to 2700 at least to have a chance. But it's possible, man. It's possible. But yeah, let's see. नया अकाउंट बनाया है चिराग. अच्छा आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था लेकिन. हाँ रिमेंबर, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी भाई. नाउ आई रिमेंबर, आपने स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे सुपर चैट में ना, याद आया. मैं इंस्टाग्राम क्यों देख रहा हूँ, बेवकूफ हूं मैं. थैंक यू भाई फॉर रिमाइंडिंग मी. ठीक है, दैट्स इजी. जैसे क्रेजी मार्शियन है भाई.
धोखेबाज भाई, वही तो भाई, पता नहीं भाई, चार लोग घुस जाते भाई, मैं चिराग, मैं चिराग, मैं चिराग, मैं इसका चिराग, मैं उसका चिराग। बाय द वे, गोइंग टू द गेम ऑफ विदित, क्या चल रहा है? कुछ खेला है, F4 खेला है गुकेश ने। ही वांट्स टू get this strong pawn chain of 3 pawns, move this pawn, activate his rook, and maybe even take on F6 next. Srinath, I think 2560 or something, I assume. भाई, एक जमाने में लोग बिटकॉइन स्कैम करते थे, आजकल चेसकॉम मेंबरशिप स्कैम भी करते हैं भाई, क्या जमाना आ गया, मतलब चेसकॉम इज डूइंग सो वेल। बाय द वे, गोइंग टू द गेम ऑफ Pragg again. One look at Vaishali's game, what's happening? Okay, still very interesting. She's dominating it on all angles, but it's not over yet. Knight on G5, kind of holding fort for now. But yeah, long term, she should have good chances to break through. But देखते हैं कैसे होता है. Going back to the game of Pragg, 11 minutes for Pragg, 10 for Rapport with 18 moves to go. कल का नया मॉड गायब कह रहे हैं भाई, मॉड नहीं आया भाई, ये बात तो सही है भाई, हमारे शिवन भाई आज आए नहीं। भाई मैं तुझे समोसा खिलाऊंगा, बस स्पैम करना बंद कर दे। इट्स गोना एंड इन अ ड्रॉ आई गेस, आई एम नॉट सो श्योर। Pragg वाला तो ही जीतेगा जीतेगा। विदित वाला भी आई एम नॉट सो श्योर एक्चुअली येट। He takes F4 played. I think we'll have, he could play this also, that's also a possibility, because Vidit का structure बहुत damaged है यार। If I take and take on F4, is there any chance? Nanjan bhai, do you think there's a chance here in this position? Material equal है, but black structure is damaged heavily. I think he still has some chance. White has still got some chance. He can first bring his king to the center to E3 square. Usually endgame में जीतने के लिए 2 weaknesses चाहिए होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे F6 और C6 दोनों वीकनेस है, लेकिन F6 को हम ज्यादा अटैक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है हमें और वीकनेस ढूंढने होंगे। हाँ हाँ, agreed. I agree. I think some chances here for sure, even though Bars is equal. So we'll have to see how this progresses. Going to the Pragg game. Echo का ध्यान से भाई. G3 played. Similar idea. You can't take with the queen to trade queens, and now black takes on F4. No, guesses here. Knight E4 आने वाला है मुझे लग रहा है, या फिर H6 आने वाला है. One of these two moves will happen, and Pragg is taking the game home. मैं वो जिसको आपने यो भाई लिखा है क्या बात कर रहे हो, really? Pragg had something, yeah, but then they both moved on. क्या had something क्या होता है भाई? With a good defender in endgame, so draw. Yeah, that's true. ये निरंजन भाई थे, मंदिर भाई। Let's go, 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 go. 0-0 please. अबे यार क्या रे, ऐसे मत बोलो यार, ऐसे नहीं बोलते यार, ऐसे नहीं बोलते, किसी को कंधा नहीं बोलते। अगर किसी को रोस्ट करना हो, उनके शतरंज के प्ले को रोस्ट करो, बंदे को रोस्ट मत करो भाई, ऑलवेज। क्या ही घटिया मूव खेली है हमारे बहुत बढ़िया रैपोर्ट ने ऐसे। whoever talking background, नहीं भाई, he is talking to you as well भाई, he's talking to you as well. What is Srinath rating? I think 2560. Anyways, I don't know, Srinath is not the focus right now. Srinath भाई तो बैकएंड वाले आदमी है भाई, उनके भरोसे आधा इंडियन चेस चल रहा है अभी। But right now, the focus is Praggnanandhaa R. And he's like, okay, let's finish this game. And I don't see any counterplay, man. You can't, there's the knight, bishop, you can't develop here. Rook is like, bhai, मुझे chat, I have a question, ठीक है? What are the chances कि गेम खत्म हो जाएगी और रुक पूरी गेम में चलेगा नहीं? ये नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा है A8 पे। तो I really have huge suspicions कि पूरी गेम खत्म हो जाएगी, रैपोर्ट विल रिजाइन, एंड ये रुक यहीं पे होगा। इट वुड हैव नॉट मूव्ड इन द एंटायर गेम। इसलिए मैंने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया भाई, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। मेरा प्रोनाउंसिएशन मंदार है। अरे बढ़िया भाई, मंदार जी, थैंक यू भाई फॉर लेटिंग मी नो। बट फिर AAR होना चाहिए ना यार, नाम से स्पेलिंग गलत है भाई, स्पेलिंग ठीक करो भाई। 100%। कैन सेतु बिकम लॉर्ड सेतु के बारे में कुछ नहीं बोलने का भाई। शो विदित गेम अभी देख रहे थे, कुछ कोई चल नहीं रहा उसमें कुछ। Oh, he took with the bishop. Okay, so he doesn't want this. He wants to attack C7.
also a decent strategy, actually even a better one, I think. Because f6, as Ninjabai said, f6 was not a weakness we can attack easily. So doubling these pawns really it solves the purpose, but the bishop on e6 basically controls everything. Agar ye dark square bishop hota na, then suddenly I'm excited about this. Knight f5 and so on. Light square bishop controls everything. So yeah. So bishop f4 might even be the better move here, attacking c7. And ye constantly ek piece ko defend karna padega. Like the rook has to stay or the knight has to stay, and that makes black's pieces passive. So a very practical decision. Good decision. रजत पतिदार है. अरे यार, चेस सीजन है मेरा भाई, क्रेजी मार्शियन है भाई chess.com पे. बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है. कौन सी क्लास में 0-0 भाई? Nodirbek totally winning. Your commentary is beauty. Thank you, bhai. I really appreciate it. Sahil equal to Sahil, correct? No, by our logic. भाई यार तू मुझे साहिल बुलाओ, कुछ भी बुलाओ भाई, घंटा फर्क पड़ता है भाई. I honestly don't care. That's the beauty भाई. सेक्स नहीं रहना चाहिए. Nodirbek again winning. भाई Nodirbek जितना विनिंग होता है उतना कोई विनिंग नहीं होता लाइफ में. बिशप भाई इस गेम में कितने ब्लंडर है भाई, भर भर के. एक और he was completely lost after bishop h7, but black ने गेम दे दी after rook takes f7. वाह. Oh, black blundered the game in one move, similar to what Pragg did. Look at this, chat. Rook takes f7, and now rook d6 double exclamation mark. Reminds me of Pragg's game against Maghsoodloo. And the problem is now if rook takes, then there is queen e8 check, and the king has nowhere to go. Rook f8, queen f8. And chat, if let's say you move the rook somewhere, I don't know, kaha move karoge, I don't know, rook a8 something, then knight f7, queen takes f7, and rook takes d4. Basically a bishop gaya. We won a piece and we are completely winning. So Nodirbek finds a tricky tactic to convert the game. David Navara busted. Nodirbek goes to 2.5 points confirmed. Let's go to the game of Gukesh and Vidit. कुछ हुआ है क्या? ये कौन सी गेम आ गई भाई? नहीं, this one. So nothing happened since then. 8 minutes for VD. Chad, by the way, I know it's an endgame and I know it's all okay and it should be easy to play this now, but they have to play 18 moves in 8 minutes. Just putting this out there. So it's not easy for both players. They have to play very quickly. Going to Pragg's game, that's the crazy one. H takes g6. Finally. इतने जमाने से वेट कर रहे थे पॉन कब मरेगा. And he takes on g3. बाप रे. Niranjan bhai, how much guts do you require to allow a move like rook takes h7? That I know there's queen f4, you trade queens, but you really need guts, man, to allow rook h7, right? Yeah, you need that creative spirit and guts. Yes. Yeah. भाई को करना ख्याल. मैंने साहिल भाई को हराया था एक बार. ये कब हो गया भाई? I'm not like doubting it, but ऐसा हुआ कब? I'm curious. अपना रेटिंग तो बताया ही नहीं भाई. मेरा रेटिंग है 2200 भाई. Pragg's h1 rook didn't move either, but it will move now, and it will move a lot. And by the way, look at this move, g7. कह रहे ना तू मार, ना तू मार. And black कह रहे नहीं, मैंने नहीं मारना. It's like white दे रहा है, black ले नहीं रहा. मतलब अलग ही सिचुएशन है भाई. And chat, can you find the best move for Pragg here? Okay, it's an obvious move actually. Rook takes h7. Dude, what a position. Wow. Just wow. Kya position hai, man. We have to stick to this game. I think we'll have a result soon. Here. Man, crazy game by Pragg. What a comeback. And by the way, chat, just to draw one parallel, whenever Carlsen loses, he's known to win in the next game. Usne khud bola ek bar interview mein, I hate losing. When I lose any game, I try my extra best to basically win the next game. And this is what Pragg also did. Drawing another parallel there. Pragg, just crazy game. What a comeback. Lost yesterday in one move.
won the first game, and that means in 3 rounds, he'll have 2 wins and 1 loss. Amazing comeback there against Rapport. What a crushing game. He's not done yet, but so far it looks really nice. But time pressure bhi ek khel hai, chat. By the way, still 14 more moves to go, and Pragg has to play it in 7 minutes. कॉमेडी चेस खेलते हो? मैं नहीं खेलता यार. I think playing chess requires a lot of time, and I love making content. By content is, it's not only my bread and butter, it's also my passion now. Chess content, that is. So, playing chess requires different skill sets, which are difficult to have if you're an adult and are not Ambani's kid. So, I would say that content is something where I found my sweet spot. Come on. Rapport जी, दे दो गेम. इंतजार हो गई इम्तिहान की, गेम दे दो. By the way, another, queen f4 to trade queens. Now it doesn't work. So queen takes, rook takes, and now rook d8. And this is where, resigns. So that's why I think black is contemplating his choices. Doesn't have many choices, to be honest. I'm 30. Can I become grandmaster? Yes, bhai. Yes, absolutely. You are guaranteed to become a GM, bhai. Bas mere ghar ke aas-paas mat aana, silent Jason ji. Please don't, roam around my house somewhere. You absolutely can. There is no doubt about it. VD game nazar marte ek bar, just to have an update there. It kind of petered out into a slightly better position for Gukesh, but it's an endgame now, chat. And this will take a lot of time. Both players will play slowly. Although they can't afford to do so too much, but the game will be very slow. Filhal ke liye, we'll keep switching between both games. But Pragg's game is the more exciting one. E5 played, opening up the bishop. And black ke paas ek pass pawn bhi hai. So we have to be careful. Maybe rook dh1 now. भाई आकाश चोपड़ा ऑलरेडी सस्ता आकाश चोपड़ा है, तो भाई मैं कैसे सस्ता हो सकता उसका? But in future, Nodirbek will be the strongest chess player. It is a possibility, yaar. Adarsh bhai, I cannot discount it. He's one of the talented. Keymer or Nodirbek are 2 youngsters who are not Indian and still could be world champions soon. They are potential, but they're not playing candidates this year. So is saal wo hame competition mein nahi hai. We can do it. Absolutely enjoying your commentary and the game. Thanks a lot, Rushi. Ab bas Indian players jeet jaye to bas that will be even better, yeah. That will be the cherry on top. Ben Feingold became GM at the age of 66, but he must have been an IM for a long while. I am 2-year-old. Can I be a grandmother? Grandmaster likha hai bhai. Kya likha hai? Grandmaster. Haan bhai, you can be. Absolutely. So going to the game of Gukesh against Vidit again. Oh, bishop e3 played. Where is the bishop headed? Not sure exactly. I think king ko center mein lane ka time aa chuka hai. h3 and then king towards the center. That's very important. So going back to the game of Pragg, what's happening there? Has he played something? Not yet. Pragg also had chat. Vidit ka tension mujhe nahi hai because the game is simple. They can legit just play h3, king g1, king f2, and the evaluation will not change. So their time pressure is not a problem. But for Pragg, it is. The game is still sharp. He has 5 minutes to play 14 moves. Aliza, of course, as well. Yep, he's also there. But Aliza kind of diverted attention. No, now he's like a fashion designer. So if I have to, choose one youngster, it will not be Aliza as the best candidate. Come on. 4.5 minutes now. Bhai, Pragg, bhai, thoda sa fast, bhai. Arbiter भी कितना फोकस से देख रहे हैं. चाहे पता टूर्नामेंट हॉल में सारी क्लॉक्स एक साइड पे लगती है ताकि आर्बिटर्स मूविंग कैन सी ऑल द क्लॉक्स इन वन गो. दैट्स हाउ द क्लॉक्स आर सेट अप इन अ टूर्नामेंट हॉल. इट्स नॉट अबाउट व्हाइट एंड ब्लैक यूजुअली. वो ब्लैक एक तरफ ही सेट कर लेते हैं तो सारी ब्लैक अलाइन हो जाती है. आरसीबी लॉस्ट टुडे. भाई आईपीएल कब स्टार्ट हो गया यार अभी? Rook h6. I think Rook h6 maybe Queen f4 maybe. I don't like Rook h6. I think Rook dh1 maybe is the best move. Just doubling up rooks and then threatening these mating ideas. Rook dh1 is forcing. Black is only one move, Queen f4. I think Baki sab loses on the spot. So you can calculate deeply with less time. And he's played something. He plays Rook h8 check. I think the idea is the same. King g7. Now what?
Ninja bhai, can we move the oh wait, he took something. He took the knight on e8. हम इतना मेटिंग आइडिया सोच रहे हैं, उसने कहा भाई मैं घोड़ा ही खा लेता हूं. कैन वी मूव द कैमरा बिट अप ताकि ऊपर का वो हट जाए और नीचे और बोर्ड है क्या? हाँ बढ़िया, परफेक्ट 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 परफेक्ट. WPL अच्छा. बाय द वे कितनी व्यूअरशिप है WPL की यार? व्हाट इज द WPL व्यूअरशिप? आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दैट. कोई बताना यार मुझे कितने लोग देख रहे हैं. बाय द वे क्वीन F4 played only move, and now the question is, if you take, can I take with the pawn or not? That's the question. If I can take and have two connected pass pawns, is it some counterplay? Probably not. Probably not. But Pragg needs to make sure of it. It's very difficult. For example, Queen F4, EF4. Yeah, what do I play here? It's not so simple. Not so simple. I mean, I could play Rook D8 to win this bishop, but just G2. Okay, Rook G8 check, King F6. Okay, this has to be calculated, man. He needs to calculate. He can do it, of course, but he pawn hanging actually. So maybe it's not that difficult then. Let's see क्या होता है. 2.3 करोड़ व्यूअरशिप है, क्या बात भाई. चेस से 1000 गुना इजीली इंटरेस्टिंग. आई थिंक आज पहला दिन है क्या? स्टार्ट कब हुआ था? व्हेन डिड इट स्टार्ट? व्हेन डिड WPL स्टार्ट? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. Okay, 3 minutes for Pragg now, chat. By the way, one look at the Gukesh VD game, sorry. Rook A8 played, Knight F3 comes back, Rook A2 and Rook to C1. So very logical move so far. Nothing has changed. Going to the Pragg game, back again. He's still thinking 3 minutes now for Pragg. ये क्या है शुभदीप भाई? कंकरेंट नहीं है, ऑफ कोर्स. आई थिंक वो उस पे दिखाता है ना टोटल व्यूज. आई थिंक टोटल व्यूज दिखाता है उस पे, वो जो कौन सा है वो रिलायंस का वेबसाइट. Come on, come on, come on, come on. Come on, Pragg bhai, come on. Oh man, this is getting really, really intense. Less than 3 minutes now. He has to play 12 moves, chat. 2.3 total crore views. ठीक है, that's pretty good, but it will देखना है कि आगे बढ़ता है कि कम होता है. स्टार्ट कब हुआ था ये बता? 23rd Feb, तो अभी हुआ है ना. we'll have to see as the days progress कितना ऊपर जाता है नीचे जाता है. Rook G1, yeah, also works. Pretty logical move. Like, you're not taking on F4. That's a very human move, actually. I like that move now that I think about it. You're not taking on F4, no calculation required. Very logical, actually. Like that move. Geo Cinema, yes, thank you, bhai. Mukesh, अबे ये क्या है भाई? Come on, bhai. Oh, Rook H1 played. That's a blunder, apparently. No way. No way, that's a blunder. No way he blundered. No way, double question mark. Pragg blunders the game in one move. Now it's equal. And chat, look at the variation. Rapport knows it. Oh, Pragg is playing with his hair. He's not happy. He sees it, I think. Chat, Rook F2 check. And the problem is, if King C1, there is Rook takes C2, King takes Bishop F5 check, and he loses the Rook. Oh no, Pragg threw it. Pragg threw the game, and now only move for Pragg to have equality is King E3, giving up the bishop. Oh no. Oh no, he blunders. Pragg has blundered the game. Oh man, yeah, he can't believe it. He can't believe it. 2 games in a row. And ऊपर से अभी he doesn't have time to even be emotional. He has to play it fast. He has to make 10 moves in 2 minutes. No. This is not. He has to stay focused. Stay focused. King E3 only move. Only moves King E3. Rapport quickly jumped on that possibility. He knew it. Trap setup किया था. Pragg fell straight into the trap, man. That's why chess is harsh, man. That's why it is harsh. Pura game you can dominate and then blunder the game in one move.
Man, oh man, I can't believe it. Niranjan bhai, what is this? Unexpected. Man, chat, time pressure. As I said, time pressure बड़ी खतरनाक चीज है. कोट तुमने कहीं सुना होगा भाई. You really really have to be careful. You cannot, समय के साथ नहीं खेल सकते भाई. समय के साथ नहीं खेल सकते भाई. बहुत मुश्किल है. हाँ, टिकी कर. जब फर्स्ट राउंड में प्रग वन तब नहीं लगा कर्स, जब हारा तब कर्स लगा. वाह वाह भाई वाह. किंग E3, रुक टेक्स C2. And now, chat, the game is equal. Rook takes E5. He can pick up the pawn. And to be honest, black is now even doing fine, yeah? Passed pawn, bishop against knight, attacking these pawns. Vidit losing pawn, kya baat kar rahe ho? How? How? Knight E7 played and bishop F4. But what happens on rook A7? Oh, knight D4 now. Wait, how is he saving this pawn? He has to lose a pawn now. Wow, so VD losing a pawn. It's still probably equal, but yeah, that's good news for Gukesh. Going back to the game is sharpening up, chat. Oh, ek aur blunder. No! Pragg has thrown the game. Pragg has thrown the game. Rapport knows. Rapport knows. Rapport knows he's winning. He finds the winning move. Pragg is completely lost. Pragg has lost the game. It's over. Pragg has lost the game. He can't believe it. Oh no, look at him. He can't believe it. Pragg has blundered the game. Chat, the idea is rook takes 8, but G2, he controls G8. There is no check. Pragg has blundered the game in one move. He can't believe it. Rapport sips on water. The last few drops saved him. Oh my God, he can't believe it. That is insane. That is insane. भाई ये क्या हो गया chat? Can't believe this. This is crazy. Abey yaar, that was so close, man. Time pressure is extremely, extremely stressful. Yeah, he knows he's lost. He'll just resign now, I think. You have 24 seconds. He has to play 8 moves in 20 seconds. I mean, with the increment, but yeah, it's just lost. Man, it must be really hard to handle this. 2 games in a row he has blundered, and this would be really hard to handle. Literally, एक move लगती है. Yep, he takes the rook. He takes the rook on 8, but now G2, and there is no defense. You can't stop the queen. Rapport ने कैसे immediately pounce कर दिया यार. He knew it. He knew the trap. He knew the trap. Set up किया था. It was a clear trap from Rapport. He knew it. Can't believe this, man. Can't believe this, honestly. Can't believe this. Nanjan bhai, can we have the board as well, Upar? Oh, man, this is hard to watch. Arey yaar. Hard to watch. Pragg loses the game. A winning game in just 3-4 moves. The game shifted and Pragg could not handle the time pressure. Hard luck to Pragg there, and Rapport wins. Not a good sign for Pragg. He looked like complete control. Till here, he's completely winning. एक ही मूव में गेम चली गई, ड्रॉ हो गई, एंड एक ही मूव में हार गए. सो क्लियरली टाइम प्रेशर इज समथिंग वेयर Pragg इज स्ट्रगलिंग. अबे बंद करो वे पनौती पनौती नाटक. जब जीत रहा तब कुछ नहीं था है. No, Rapport had set up some traps, man. Clearly some traps. By the way, Nodirbek defeats Navara. Pragg defeats Rapport. We go to Gukesh against VD now, where C5 was played, and Gukesh has munched on a pawn. And he's a pawn up now. Now, it's very similar to what Nodirbek had against VD yesterday. So still drawing chances, high drawing chances. But as of now, it feels like Gukesh is the only one who can push. ये क्या है भाई चैट? Come on यार. Be logical. जब जीतेंगे तब तो बोलते नहीं हो टिक्कू की वजह जीते, तो गाल दी. मैं काहे गाली कर रहा हूं. Pragg couldn't handle टिक्कू commentary. Unlucky Rapport. By Rapport, Mamedyanov, and plus also Duda. इनके against Indian players हमेशा struggle करते हैं भाई. हमेशा struggle करते हैं भाई. That's just bad luck. Oh, Vidit ने जैकेट उतार लिया है भाई. Now what will he do? Let's have a look.
Okay, he's sitting up straight. Sorry, Rapport defeats Pragg bhai. जो चाहता हूँ वो निकल गया. Rapport's rook didn't move. अरे हाँ, Rapport का rook move किया ही नहीं, कैप्चर भी हो गया, तब भी ही वन. भाई क्या ही बोले अब. Anyways, chat. F5 played by Vidit. By the way, they still have to play 11 moves. What? Wait, do they have to play 11 moves in 1 minute? Niranjan bhai, am I seeing this correctly? They have to play 11 moves in 1 minute, plus increment, of course. Oh, but it seems like it. Bapre. So even this is not an easy match for both players, even though, you know, it's more simplified, but this is going to be crazy. कल easy round प्रकाश टू, कल तो जीतना ही पड़ेगा भाई. Plays knight to d2. I think he wants to take with the knight on e4, attack the c5 pawn a little bit, put pressure. The king can now come to e3, but it's kind of still in the draw zone, I feel. Black's rook is really active, the white rook is passive, and that's kind of a problem. And you can't really attack this knight ever. The bishop is useless against this knight. Yep, takes on e4. I think knight takes will happen, and black will probably even try c4 here. All our candidates struggle in time pressure. I think everybody struggles in time pressure. So clearly, something to focus on. I think we have learned something about Pragg here. Ki time pressure mein he is prone to blundering, like clearly. Matlab, this is so. Okay, these are very difficult moves to spot, but also Pragg ke level pe this should be like figure out. Like it's not something we expect Pragg to blunder. So time pressure mein आना ही नहीं है. That is the first logic. And even if you do, then कुछ ना कुछ वो calm maintain करके रखना है. That's probably something Pragg has to work on. c4 played. Yep, exchanging more and more pawns. Chat. जितने pawn exchange होंगे उतना draw की तरफ game बढ़ेगी. By the way, update on the Vaishali game. Vaishali is completely winning right now. So f6 is about to fall. e5 is incoming. You can't take. I mean, you can take, but yeah. This looks very, very scary actually. Bishop bhi hai yahan pe, king is cut off. h6 agar maar diya to game is over as well. So Vaishali will win this, but can't say the same about Pragg, unfortunately. That's the thing. Nodirbek wins or draws negative matches and our players losing winning matches. Yeah, I think kahin na kahin pe na, like Pragg ka, he is the guy who is not scared at all. So he always goes for the critical line. And यहाँ पे वो कहीं ना कहीं time pressure में he didn't have time to like figure out something about the critical line, whatever. And वो जो move उसने miss करी bishop e6, at his level it should be not that difficult to see, man. Bishop e6 controlling g8 and the pawn queens. So I think time pressure में he kind of couldn't calculate it, and that's why I think priority number 1 to not fall under time pressure, priority number 2 to kind of practice this playing under time pressure ताकि mental state थोड़ा relaxed रहे. 5 mentioned that Nepo had terrible Tata Steel and still won the candidates. I agree. There's no guarantee that you have a good Tata Steel, you win the candidates, but that's an exception. Usually, if you play well in one tournament, you are likely to play well in the other. I think वो Nepo कर रहा है, that is just the exception, I think. Because बहुत सारे Tata Steel में बेकार tournament भी खेले होंगे, but then they must not have played well in the candidates also. He uses more time to blunder than creates time pressure himself to blunder again. The thing is, oh, okay, but this is an immediate draw now. Close to an immediate draw. So knight has to move, knight d2, I pick up on c2, you pick up on c4, and then bishop e4. This should be immediate. Rook knight e3, rook e2. Chat, this should be draw. I think they should agree to a draw soon. I really can't imagine with the rook being so active, Gukesh has any chances to win this. Knight c3 खेलोगे, then there is rook takes c2. So that also wins the pawn back. Oh, he plays knight c2, but rook takes c2 now. Yeah, Gukesh is actually offering the pawn back. This is a reality check. This is great, Sarthak bhai. I agree, because the thing is, that's why this tournament was important.
कि आप कैंडिडेट से एक महीने पहले कहां पे सफर कर रहे हो, बिकॉज एक जगह जहां पे सो फार आई हैव नॉट सीन एनी इंडियन सफर इज द ओपनिंग्स. ठीक है, वी हैव सीन सम ग्रेट ओपनिंग प्रेप. नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन एनीबडी सफर इन टर्म्स ऑफ I would say the end games. सब बढ़िया खेल रहे हैं. They're playing fabulous end games. ठीक है. Next, what I've seen is Pragg make a few blunders, especially 2 out of 3 games में. I have seen Pragg fall under time pressure. That's a common pattern repeated in 2 games. So clearly that's something to work on. नहीं भाई, both cannot get 0. That is impossible. I think they will agree to a draw, I think, soon. Because अब तो बराबर पौन है, materials equal है. Yeah? कल की पेयरिंग क्या है बाय द वे? कल की पेयरिंग देखते हैं. कल की पेयरिंग है राउंड 4. वी हैव नोदिरबेक अगेंस्ट गुकेश. अरे बाप रे, that takes me back. That's a crazy match. And Vidit against Bartel. So Vidit से कल win expected होगी because Bartel is not as strong as the others. And Nguyen Thai Dai Van against Pragg. So that also Pragg should be the favorite because कल I am really hoping we have, well, ideally 3 wins, but at least 2 wins to आनी ही चाहिए कल, because we're clearly the favorites in 2 boards by 100 rating points almost. So कल का दिन अच्छा रहेगा most likely. By the way, update on Vaishali. Vaishali is still, she's almost winning. I think E5 just wins at the spot almost. Yep. By the way, King F2 played. Okay. I think most top level candidates try new things in the months before candidates and they don't. I agree. I think that's also a point. Pragg is best. He will come back. I know he'll come back by, of course. Did Pragg blunder, man? Don't ask me, man. Yeah, it was horrific. It broke my heart to watch it, man. It was really hard to watch. Especially 2 games in a row, man. It was really hard. And both games he was winning at one point. Both, he could have 3-on-3 he could have had. If Pragg had managed his time well in both the games, he would have been 3-on-3 right now. So that tells you where to put time and effort into, like which thing to put effort and time into. And especially because he was in prep and still he was low on the clock, like in many games. So that's something even worrying. So they should focus on that for sure. Yeah, Nikhil, ye hota hai. Sometimes you have a huge streak and once you lose once, then kind of, a reset happens a little bit. You start losing. Yeah, he blundered the game in one move. With it losing on time, no, he'll be fine. Only 5-6 more moves to go and 30-second increment hai, kafi hai. So that means Arjun maintains the India #1 spot for a day. So today is going to be Arjun's day, by the way. Congrats to Arjun. By the way, Nodirbek moves to world #8 with a rating of 2757. Wow. So Arjun is India #1 right now with a rating of 2751.4. So congrats to Arjun. He has his full day today, at least till tomorrow, and he can even extend his lead if he wins tomorrow. So congrats to Arjun, man, for getting the first chance at India #1. What needs to be done to make chess popular? I think more people need to be, well, made curious about it. That's for sure. And वो ऐसे curious नहीं होंगे. Knight G5, Bishop E4, Knight G3, Knight D2, Bishop E3. 20 move की calculations तो होंगे नहीं. That's exactly what people feel कि chess is too nerdy. It has to be cool. जैसा मैंने बनाया था cool. So chess became cool for a moment. And blunders were the focus rather than the actual deep variations. Vaj is not. He's playing right now the Shenzhen Masters. Yeah, he's actually playing right now. So that's happening in China. Anish is also playing that. And kal I think, I don't know who is playing tomorrow though. वो देखेंगे, कल update दूंगा मैं. Okay, I think this should be, King E6, Knight D5, and that's a draw, immediately draw. Chess is already popular. It might be based on where it was, but there's a lot of scope, man. Look at where cricket is. At least cricket के 1/10th, 1/20th, 1/50th तक गोल हो यार. Can you show Pragg blunder? दिल पे हाथ रख के एक बार दिखा देता हूं. अरे यार, it's so hard to watch, man. Basically क्या हुआ? He was completely winning here. Okay. Here he could have played Queen F4. He could have played Rook G1. He played Rook H1, first blunder. Now takes check. And the problem is, if you play King C1 here,
Then there is rook takes c2, king takes c2, and bishop f5 check, and the rook is lost and black wins. So he had to play king e3 and lose the bishop for free, and now he went from completely winning to drawing. And here he played another blunder, that is rook h2 h8. And here Rapport found a brilliant move, that is bishop to e6, controlling the g8 square, sacrificing the rook, but now pushing the pawn, and no piece can stop it. This can't be stopped. This can't be stopped. And if knight e2, simply rook takes e2 and queens. And Pragg resigned. So yeah, Pragg was went to winning to losing in just 3 moves. Hard luck. Let's go to the game of Gukesh against Pragg now. With now, let's see क्या d5 खेल दिया उन्होंने, king d4 का plan है, I think. They have put a baby photo of Nodirbek. Yeah, कई बार होगा. Oh wait, he played. What happened here? He played bishop e4, but that's an immediate draw now. Knight takes, d5. Yeah, it's a draw, chat. They will shake hands soon. Yeah, they have agreed to a draw. So Vidit and Gukesh draw after a really fought game. It was very complicated. Gukesh was close to winning at one point. Then Vidit found this brilliant a5, a4, idea, creating counterplay, confusing Gukesh enough that he did not go for the most critical line. So crazy game there by both Gukesh and Vidit. So congrats to them. And tomorrow we will have some crazy games again. So we'll be looking towards tomorrow for a comeback from all 3 players. And tomorrow it is going to be Nodirbek versus Gukesh, the revenge match of the last Olympiad. So that will be a hard match for Gukesh to fight. देखते हैं क्या होता है कल. मूड खराब हो गया, एग्री भाई, बट डोंट वरी यार. आई थिंक द टूर्नामेंट इज ओनली स्टार्टिंग. अभी सिर्फ क्या राउंड 3 था, 2 था, 3 था भाई. इट्स ओनली स्टार्टिंग. अभी 6 राउंड पेंडिंग है चैट. रंजन भाई, एनी फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर एंड? थोड़ा आज एक्साइटिंग था. Ranjan bhai, filled with a lot of excitement, but yeah, the results were not the ones that Indian supporters are rooting for. थोड़ा बुरा लगा कि एक मूव में सब चेंज हो गया, लेकिन ओके. अभी I hope that all these Indians get back and play for the title of this event again. That is what I am looking forward to next. And thank you, chat. You came in huge numbers today. Yeah. It was great to see इतने लोग और topics भी बहुत interesting थे आज. So yes, it was nice stream and looking forward to another stream tomorrow. चलो कल मिलते हैं. Yeah, and you know what, Ranjan bhai, I think it's kind of Arjun's day today, and luck was on his side, so he will celebrate India number 1 for today. Yes. Luck works like that sometimes. बहुत बार Arjun kind of got stuck at second place, and today he gets to enjoy his day. So we have a new Indian number 1. Let Arjun celebrate for today, and we'll be back tomorrow, chat. Thank you for joining in. And kal bahut crazy game hogi. Tomorrow I think both Vidit and Pragg have 100 rated below opponents, so we are expecting a win from both of them. And Pragg and of course Gukesh ka match hai against Nodirbek. That will be a cracker of a match. So kal तीनों match बहुत positive होने की signs है, let's say. So मिलते हैं कल chat 7:30 PM. क्या करेंगे भाई? संभावना है. हाँ, बिल्कुल. मिलते हैं कल chat. See you tomorrow. Take care. Keep smiling. Thank you for joining यार. Loved interacting today. Bye chat. See you. Bye. Good night.